Hello guys, welcome back to another live stream and today we are going to play Genshin Impact and आज इंटरनेट थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे लगता है आज प्रॉब्लम नहीं जाएगी इंटरनेट पे एंड आज हम इंजॉय करेंगे गेम को एंड मैंने अभी कैंडिस बिल्ड करी कल ऑफलाइन बैठ के थोड़ा सा एंड आज भी थोड़ा सा उसको लेवल अप कर दूंगा 70 तक पहुंच जाएगी देन वी आर गोइंग टू हैव सम फन विद कैंडिस एज वेल मे बी आज या कल हम करेंगे ये प्लान क्या आप लोग भी अपने कैंडिस बिल्ड कर लो फिर हम लोग मज़े करेंगे कैंडिस के साथ ही सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन जितने बंदे अभी तक स्ट्रीम पे आए जितने बंदे ने स्ट्रीम को लाइक किया है जितने बंदे स्ट्रीम पे न्यू है गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम लेट्स जंप इनटू द गेम एंड सबसे पहले मैं आप लोगों की चैट पढ़ लेता हूँ देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द गेम्स सो हेलो से गॉड वेलकम टू द स्ट्रीम मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही थी तेरे को मेरा माइक तो बंद था से गॉड क्या बोले जा रहा है धन्यवाद किसको बोल रहा है और किस चीज़ के लिए धन्यवाद बोल रहा है लेट्स सी तो मेल आया है कुछ तो ओके डेली लॉगिन का आया है ये क्या है जंपी डम्पी पार्टी पूपर ये क्या है नया गैजेट ओके 400+20 यहाँ पे प्रीमोस आए हैं एंड व्हाट एल्स वी हैव हियर वी हैव सम अपडेट फिक्सेस हियर आई गेस ओके वी आर गुड आई गेस चलते हैं पहले डेली का मिशन कर लेंगे जब हंसे था सुनाई दिया अच्छा मेरा तो माइक बंद था तेरे को कहाँ सुनाई दे गया है मेरा माइक तो बंद था चलेंगे पहले डेली का मिशन कर लेंगे देन उसके बाद थोड़ा सा कैंडिस को मैं लेवल अप कर रहा था कल लेकिन रेजन ख़त्म हो गया था फिर मैं बोला फ्रेजाइल रेजन लगाने का फ़ायदा नहीं है 60-70 तक कर लेंगे कैंडिस को एंड देन वी आर गोइंग टू ट्राई हर आउट अभी 19,000 HP पे बिल्ड किया है मैंने एंड वी आई हैव गिवन दिस डेथ मैच बिकॉज क्रिट रेट कहीं से मिल नहीं रहा था आर्टिफैक्ट से सो आई हैव टू गिव दिस डेथ मैच टू हर उसके अलावा मैंने अभी हार्ट ऑफ डेप्थ लगाया 4 पीस हार्ट ऑफ डेप्थ जो कि आई थिंक बेस्ट इन स्लॉट है अगर DPS तुम कैंडिस बनाते हो सपोर्ट कैंडिस बनाते हो सो सपोर्ट कैंडिस के लिए 2 पीस आई थिंक टेनेसिटी लगता है और 2 पीस नोबलिस लगता है इसको सो वो उसके लिए गया नहीं हूँ क्योंकि डैमेज उतना खास नहीं है उस पर कल मैं थोड़ा टेस्टिंग भी करा इससे 60 लेवल पे एटलीस्ट 11,000 13,000 मार रही थी बैप पे अब देखते हैं जब थोड़ा सा 70 पे चली जाएगी तो कितना मारेगी उसकी टेस्टिंग करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक हर लेवल अप अ बिट अगर आज बुक्स अवेलेबल होंगी तो बट मुझे डाउट है कि आज बुक्स अवेलेबल होंगी मुश्किल लग रहा है मुझे उसके अलावा आई थिंक और तो ऐसा कुछ है नहीं आई 54 to 144% है इसका रेशियो बाकी अभी और कुछ तो ऐसा है नहीं सो आई थिंक इसको 2 मटेरियल कम पड़ रहे थे यप 2 मटेरियल कम पड़ रहे थे उसके बॉस के तो वो ला के इसको दे देंगे और इससे 70 हो जाएगी है आज के आज ही लोग तो C0 पे अराउंड क्या कहते हैं 100 के 200 के भी मार रहे हैं बट वी हैव टू सी कि हम क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए भाई ये तो पूरा फैला हुआ है यहाँ पे अच्छा हुआ चलो टेलीपोर्टर के पास में है सारे क्वेस्ट पूरे कमीशन पूरे मैप में फैले हुए हैं मेरे सुमेरु में लेकिन आई थिंक टेलीपोर्टर पास में है तो दिक्कत की बात नहीं है एंड आज फिर हम जब ये कैंडस का हो जाएगा बिल्ड तो आर्कॉन क्वेस्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई थिंक आर्कॉन क्वेस्ट लंबी है तो हमको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी देन उसके बाद हम कल प्लानिंग करेंगे कि कल वो करें अगर आप लोग ने भी कैंडस बिल्ड कर ली होगी तो देन वी आर गोइंग टू डू सम लाइक बॉस रन्स विथ कैंडस एज वेल बट पता नहीं तुम लोगों ने बिल्ड किया कि नहीं किया अभी तक सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट वैसे सिक गॉड तुमने खुशनाली का गेम प्ले देखा
देखे या नहीं देखे उसका खुशनाली का गेम प्ले? भाई क्या हो रहा है? भाई कहाँ कहाँ स्पॉन कर रहा है ये? मैप के कोने कोने में भी है। वाह, ग्लिच यहाँ पे अटक गई थी ये। हाँ देखा, बट 3.1 3.2 स्किप कर रहा मैं। ठीक है, तो तुम राइडन C0 जाओगे या C2 जाने वाले हो राइडन? अभी मेरे को अपने अपने बेसिस पे डाउट हो रहा है अभी तो। मुझे भी अभी डाउट लग रहा है क्योंकि खुशनाली अच्छी है। खुशनाली का जितना गेम प्ले देखा उस हिसाब से खुशनाली मुझे अच्छी लगी है। तो खुशनाली का भी सोचना पड़ेगा मुझे। प्लस प्लस यहाँ पे अभी मेरे को ये भी डाउट है कि राइडन राइडन को C2 करने के लिए विशेष हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे कलेक्ट होते हैं। आई थिंक नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वेंटी निकाल लूँ अभी तो। हाँ वर्स्ट यूज है, और प्लस मतलब ऑन फील्ड जो टाइम है वो भी अच्छा खासा है खुशनाली का। तो मुझे अच्छी लगी खुशनाली देख के। तो वही सोच रहा हूँ मैं खुशनाली के लिए जाता हूँ, और क्या कहते हैं इसके लिए जाता हूँ, वेंटी के लिए चले जाता हूँ। क्योंकि मेरे को मुश्किल लग रहा है कि राइडन की बेसिस कंप्लीट हो पाएगी। C2 निकालना मजाक नहीं है, क्योंकि C2 के लिए तुमको जीतना पड़ेगा 50-50, और मेरी कभी अर्ली नहीं निकलती है। अर्ली भी चाहिए रहेगा उसके लिए। देखा तूने 5000 ऐसे ही मारी उसने। वेल कर लो, पागल है क्या? वेल करने के लिए पैसे होने चाहिए ना। पैसे तो है ही नहीं अपने पास, अपन गरीब है। वेल करने के लिए तो वेल करना मजाक थोड़ी ना है C2 राइडन के लिए। अर्ली मेरे कभी नहीं निकलते हैं, तुम अभी भी तो देखो 50 पुल हो चुके हैं मेरे। अभी तक अर्ली अर्ली 5 स्टार निकला ही नहीं बैनर से। तो मेरा कभी अर्ली नहीं निकलता, इसी वजह से मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। तो अब सोच रहा हूँ चेंज करूँ थोड़ा सा प्लान को। स्ट्रीमर हो अच्छा, तो स्ट्रीमर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेल कर लेंगे। वेल करने के लिए पैसे लगते हैं, स्ट्रीमर होना जरूरी थोड़ी ना है। वेल तो नॉर्मल इंसान भी कर लेता है, पैसे होने मांगता है बस उसके लिए। पैसा है तो तुम कर लोगे वेल। ले लो यार, वंस इन अ लाइफ टाइम है। नहीं, नहीं लेना। लालच करना बुरी हालत है, बुरी आदत है। जितना मिल रहा है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा खाओगे तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में रोते हुए बैठे रहोगे फिर। जितना जितना वो रहता है ना, क्या कहते हैं, स्पेस रहता है पैर पसारने के लिए, उतना ही पसारना चाहिए। उससे ज़्यादा पसारोगे तो पैर बाहर निकलेंगे, और फिर वो पैर पैर में निशान पड़ेंगे और दुखेगा भी। तो इसलिए नहीं करते हैं ऐसी हरकतें। आई डिडंट नो दैट कि इसका सेकंड फ्लोर भी है। भाई बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? बट मुझे पक्का है कि मैं वेंटी के बैनर पे 50-50 हार जाऊंगा। ये क्या है? ये क्या है? एक सेकंड रुको। हैं? अबे तो बर्थडे पार्टी का है वो है, बर्थडे पार्टी वाला वो है। ये देखो ऐसे बर्थडे पार्टी में नहीं छोड़ते ऐसे। हो जाएगा गिव अवे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो बे सिक गॉड? मेरे से ज्यादा चिंता तुमको है।
उसके बेसिस पे ही गिव अवे करूंगा, रैंडमली कि सबको थोड़ी ना दूंगा। नहीं तो वो बंदा जो सब्सक्राइब नहीं है वो भी आके लेके जाएगा गिव अवे, तो मैं जो सब्सक्राइब नहीं है उसको उसको क्यों दूं मैं गिव अवे? तो मैं पॉइंट्स के बेसिस पे ही करूंगा गिव अवे का। नहीं तो कोई भी रैंडमली आके ऐसे मुंह उठा के ले चले जाएगा। मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे। हाँ इतना काफी है, 200 ही चाहिए रहता है। अरे नहीं, मैं भूल गया था, मैं भूल ही गया था बेंचोत की यहाँ पे आर्कॉन को ऐसे स्टार्ट हो जाएगा मैं अगर इससे इंटरेक्ट करूंगा तो। मुझे तो एक कमीशन कलेक्ट करना था, फक हो गया। या मैं 60 का मेंबरशिप लेना पड़ेगा क्या? 6 कोई मेंबरशिप नहीं लेनी है। तुम स्ट्रीम पे हो, तुमने स्ट्रीम पर देखते देखते ही तो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं सिक गॉड। 300 तो काफी है। 200 ही चाहिए वैसे। Say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. Mm-hmm. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask, just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, Hi Chandra Molly, welcome to the stream. You in action. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. So it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssosque. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways. And I even had a really, really long dream. चेक ऑल कैरेक्टर प्लीज। नो चंद्रा मौली, रैंडमली कोई भी स्ट्रीम पे आके ऐसे कैरेक्टर चेक कराता है तो मैं उसके कैरेक्टर कभी चेक नहीं करता हूँ चंद्रा। आई एम रियली सॉरी, आई कांट चेक योर अकाउंट राइट नाउ। Akasa can't take away the dreams of God. It was another dream about the Sub-Zerus festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. Hello Rahul, welcome to the stream. Hello Shujha भाई, कैसा है? बढ़िया हाल चाल है राहुल? अभी स्ट्रीम मस्त चल रही है आज तो। 3-4 दिन परेशान करने के बाद आज सही चल रही है स्ट्रीम। कैसे हो राहुल भाई? तबे क्या चल रहा है और सुना? You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zerus festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? मैं फंक्शन में गया, अभी आया, जस्ट स्ट्रीम ऑन कर दी। कोई नहीं, अभी स्ट्रीम एंजॉय करो राहुल रात भर। कल तो छुट्टी है होगी तुम्हारी, फ्री होगा तुम प्रॉब्ली, सैटरडे है तो। कल इंडिया में 5G लॉन्च है शायद, ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर सिक गॉड? ऐसा कुछ तो न्यूज़ आया नहीं है मुझे। अगर 5G लॉन्च हो रहा होता तो बहुत बड़ी बात होती ना, लेकिन ऐसा तो कुछ न्यूज़ में आया नहीं है 5G लॉन्च का। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है 5G लॉन्च का। Pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance? मैं सेकंड ईयर हो गया, एग्जाम खत्म। How's she doing? सही है, तो छुट्टी लग गई तुम्हारी सिक गॉड? अभी छुट्टी है कि लाइक कंटिन्यू रहेगा, थर्ड ईयर चालू हो जाएगा अभी? कैसा सीन रहेगा?
Have you had a chance to visit Dunyajad? How is he doing? And Hominias haven't allowed any visitor after festival, so we haven't able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. सेम कंपनी बड़ा मैटर बनाते हैं, नेटवर्क सर्विसेज नहीं। हाँ, सेम कंपनी चाहे नेटवर्क सर्विसेज हो, लेकिन लाइक न्यूज़ में तो आता ना 5G लॉन्च बहुत बड़ी बात है इंडिया में। अभी तो 4G पे है, बाहर 5G 6G चलता है, हमारे यहाँ फिर भी 4G चलता है। सो 5G इज़ अ बिग थिंग यू नो इन इंडिया। सो न्यूज़ में आता, न्यूज़ तो कुछ ऐसी नहीं आई है, मुझे नहीं दिखी सुबह से। 10 दिन का दशहरा सही है, एंजॉय करो सिक गॉड घर पे। हम तो जाए कर ही नहीं पाएंगे। भाई कल थर्सडे को हमारे कॉलेज में रश्मिका मधाना आ रही थी, जानते हो उसको? हाँ सुना है नाम मैंने, रश्मिका मधाना को। तो इतने खुश क्यों हो राहुल? बड़े खुश हो तुम? अच्छा आई थी बोले हो, आई थी, मैं सोचा आ रही है बोल रहे हो तुम। ओके, तो इतने खुश क्यों हो राहुल तुम? सुने केओप मिला मैं गारंटी नहीं। सुनने केओप क्या होता है? केओप क्या होता है? के-पॉप सुना था, केओप क्या होता है? अबे भाई इंडियाज क्रश एक्ट्रेस है, प्यार सबको है, पुष्पा वाली हीरोइन है, बढ़िया दिखती है। हाँ तो वो मुझे पता है, तो तू इतना खुश क्यों है राहुल? क्या हो गया ऐसा तूने देखा तो? सुनने को मिला लेकिन गारंटी नहीं है। नहीं दशहरा है, जीटी वगैरह सब लगती है इस कॉलेज में, तो ऑब्वियसली बात है तुम जाओगे घर। Her condition is stabilized. However, since LSR is a man, but for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. मैं देख कर आया, उसको मजा आया, बस वीडियो भी बनाया था मैं। तो क्राउड तो बहुत रही होगी राहुल, लाइक कैंपस में क्राउड, बाहर के बंदे भी आए होंगे देखने के लिए, क्राउड तो बहुत रही होगी। क्यों? थरक इंसान को कहाँ जाती है भैया जी? हाँ ये बात तो सही है। गॉड but for the moment our focus should still be figuring out what says are up to, what they are planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss इसमें it ठरक की somewhere क्या else. बात है? There are देखने too तो many जा सकते हैं adventurers भाई। around here. भीड़ कितनी थी ये बता राहुल? Oh, good point. Sorry adventurers, we're gonna be borrowing Catherine for a little while. भाई ये तो यहाँ तो कैथरीन गायब हो गई, अब मैं कमीशन कहाँ से कलेक्ट करेगा? बहुत था रश। तो तूने वीडियो कैसे बना ली बे, जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो वहां पे? तू वीआईपी पास में गया था क्या? आगे के साइड था? इतनी भीड़ में भाई, मैं इतनी भीड़ में मतलब वो बनाना क्या कहते हैं, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। मेरे को अभी भी याद है, हाँ मैं हार्डी सिंधु के कॉन्सर्ट में गया था जब मैं इंदौर में था, तो भाई कितनी भीड़ थी भाई। यूं ऐसे लहर जा रही थी, आगे की तरफ लहर जाती, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते, फिर लहर पीछे की तरफ आती, पीछे की तरफ गिरना चालू होते सारे लोग। भाई गजब भीड़ थी उस टाइम तो, हार्डी सिंधु के टाइम। भाई सही है, खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आती है भाई। एक बंदे लोग तो अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स को मतलब कंधे और पीठ में उठा के ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर उछालते हुए भी रहते हैं कई बार तो कॉन्सर्ट में। तुझे भाई प्यार के बारे में एक लाइन बोलो। प्यार एक कुत्ती चीज है। खतरों के खिलाड़ी 8 सेकंड की वीडियो बनाया बस। अच्छा 8 सेकंड की वीडियो बनाया,
8 सेकंड में वीडियो, मतलब 8 सेकंड में कैप्चर हो गई। खतरों के खिलाड़ी मतलब क्या क्या कहना चाहता है? तो लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के गया था क्या? उसको क्या कहते हैं, उसकी वीडियो बनाने के लिए? लाइक 3-4 बंदों को के ऊपर से छलांग मार दी तूने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। आय हाय, कुत्तों के प्यार के बारे में नहीं बोलना था। नहीं, कुत्तों के प्यार के बारे में किसने बोला? कुत्ती चीज मतलब होती है लाइक बहुत धोखेबाज चीज है प्यार, ऐसा समझ सकते हो कुत्ती चीज मतलब। नहीं हो तो अच्छा है। वो नाच रही थी बस वीडियो में, और कुछ नहीं आया वीडियो में। तुम्हारा कॉलेज कहाँ है बाय द वे राहुल? तुम्हारा कॉलेज किस सिटी में है? इट शुड बी ऑन साउथ साइड राइट? तभी वो क्या कहते हैं, तभी वो क्या उसका नाम क्या है, तभी वो आई होगी तुम्हारे कॉलेज में। कि ईस्ट साइड है तुम्हारा कॉलेज? ईस्ट इंडिया साइड है? किस साइड में है तुम्हारा कॉलेज? जयपुर राजस्थान? उतना दूर गई थी वो? क्या बात कर रहे हो? सही है भाई। Flee! Everybody stand back! Torn to oblivion! भाई बंदे, भाई कितना रेजिस्टेंस है इस लोड़े का, डैमेज ही नहीं हो रहा है। Stabilize. Order guide you. Yield! We shall prevail! Gather. Inazuma shines eternal! भाई ये एनिमी कितना टैंकी है मादरचोद, भाई इसको डैमेज ही नहीं हो रहा है। राइडन 10-10 हजार मार रही है पर, पता है अल्ट के बाद, फिर भी इस लोड़े को डैमेज नहीं हो रहा है। भाई परेशान कर देगा अब इसमें अगले वाले। अगले वाले अब इस बहुत टफ होने वाला है, इस बार से भी टफ रहेगा। Torn to oblivion! डैम बहुत दूर गई बेबी, एक बार आया का ट्राई करके खुद का औकात देखना है। मुझे अपने आया का देखना है, करके देख लो भाई। मेरे राइडन भाई 100 के पता है 2 बार मारी। कल मैं ऑफ स्ट्रीम भी कर रहा था, तो मेरी राइडन ने 2 बार 100 के मारा, ठीक है? फिर भी नहीं मारा, भाई, फिर भी नहीं मारा। वूपर फ्लावर्स भी भाई, मतलब अब इसमें और टैंकी हो जाते हैं जब यहाँ, मतलब वूपर फ्लावर ऑफ वर्ल्ड में जो रहते हैं वो अब इसमें जाके और टैंकी हो जाते हैं, उनकी एचपी बढ़ जाती है। भाई ये तो भाई ऑफ वर्ल्ड में ही इतना ज्यादा टैंकी है, अब इसमें भाई रुला देगा लोगों को। दे हैव टू नर्फ दिस गाय। आज मैं देखकर एक प्लेयर ने 15 सेकंड में खत्म कर दिया इसको ऐलान से भाई। अबे वो C6 से ऐलान रही होगी। C6 भाई वेल्स और C6 वालों की हम बात नहीं करते हैं, हम एक बॉर्डर लाइन होती है C0 कैरेक्टर्स की, हम वहां पे रह के बात करते हैं, C0 या C1 कैरेक्टर्स की रह के। और वो बॉर्डर लाइन पे भी एनिमी क्या कहते हैं, ये बहुत टैंकी है उस हिसाब से। लाइक मुझे लगता है इसकी एचपी होनी चाहिए फिर भी, पता है कितनी, 500 के या 600 के से ऊपर रहनी चाहिए इसकी एचपी, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक उसकी क्या नाम था उसका,
नाम भूल गया मैं। क्या नाम है बे वो अरे नाम भूल गया यार बॉस का मैं, एक सेकंड रुको, नाम भूल गया बॉस का। हाँ ये वाला बॉस, ये वाले बॉस की एचपी अराउंड 2 मिलियन के आसपास थी, ठीक है 2 मिलियन के आसपास थी ये वाले प्रीमोजियो बिसाब की, जो अब इसमें अभी है 2 मिलियन के आसपास इसकी एचपी है, ठीक है। ये बंदा इससे भी टैंकी होने वाला है, ठीक है। हेलो वत्स, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल है? इसको लोग 1 मिलियन मार के वन शॉट करेंगे। अरे तो वो C6 वाले बंदे हैं, उनको 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 कंसिडर ही क्यों करना है? वो इंसान थोड़ी है, वो इंसान है ही नहीं। टैंकी है, चलो टैंकर फेंक के मारेंगे। हाँ जोंगली फेंक के ही मारो, जोंगली फेंक के मारोगे तो भी नहीं मरेगा वो। ही इज दैट मच टैंकी राइट नाउ। नाम भूल गया यार, ये कौन है? मैं नाम भूल गया वापस से। एक सेकंड हुए, सोचने दो मुझे, नाम भूल गया मैं इसका बंदे का। दिमाग में क्यों नहीं आ रहा नाम, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? हेलो बोलना है लेकिन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इसका। टू समवन यूला, नहीं यूला आने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीडा का बैनर कंफर्म है, नहीडा के साथ योइमिया आ रही है रीरन में, ठीक है। यूला और हुताओ जो आने वाली थी, उनके बैनर्स को पेंडिंग में डाल दिया गया है। जो मुझे पता चला है कि उनके बैनर्स कैंसिल हो चुके हैं और वो कभी बाद में आएंगे, ठीक है। एंड चांसेस ये भी हैं कि योइमिया की जगह याइमी को या फिर आयातो आ सकता है अभी नहीडा के साथ, जो भी आएगा। लेकिन मोस्टली स्किप करेंगे लोग अनटिल अनलेस उसके बाद उनके पास विशेष ना हो तो। कैंडिस को मैक्स कर लिए भाई? नहीं कैंडिस को मैक्स नहीं, 870 पे किया हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी है वो, ऐसा नहीं है, मजा आ रहा है मुझे तो। लाइक जब तुम बैप टीम के साथ चला रहे हो ना, तो 12-13 हजार तो मार रही है ये कैंडिस फिर भी, और खुद से लाइक 5000 से 6000 मार रही है स्किल पे, अगर नॉर्मली खुद से करते हैं तो। सो शी इज डूइंग ग्रेट बाय हरसेल्फ एक्चुअली। लोगों ने तो भाई 300 के 400 के भी मारा है इससे क्या कहते हैं ये कैंडिस से, तो अभी C0 कैंडिस से लाइक उनका फिर भी मेरे को क्रिट रेट क्रिट डैमेज अभी बढ़ाना है, एंड आई हैव टू स्विच माय करंट वेपन टू लाइक ब्लैक टैसल। लेकिन अभी आर्टिफैक्ट साइड परफेक्ट है मेरा, उसी पे कर रहा हूँ मैं भाई। 3.4 एल है होता, पता नहीं कंफर्म, मुझे 3.4 का आइडिया नहीं है, 3.3 का ताकि आइडिया है मुझे से गॉड। ब्रो सेकंड फेज में चाइल्ड ही आए, मैं तो पक्का स्किप करूंगा। मैं वैसे भी 3.1 3.2 स्किप कर रहा राइडन के लिए, जब तक राइडन आएगी सेव करेगा। मैं भी राइडन का वेट कर रहा हूँ, 4-5 महीने का C1 C2 ले लेंगे। Osmanthus wine tastes the same as I किसका remember. C1 C2 ले लोगे? लाइक राइडन सोगन का? But where are those who किसका share C1 C2 लेना the तुमको memory? सिक गॉड? देख लेना बीच में अगर कोई कैरेक्टर मिलता है तो ले लेना तुम लोग, मैं बोलूँगा। ऐसा वेट करोगे तो पूरा ही वेट करते रह जाओगे, रेस्ट में स्पायरल अबिस कभी कर ही नहीं पाओगे। स्पायरल अबिस के हिसाब से देख लेना। ये क्या है बे यहाँ पे? वेट, व्हाट द फक इज दैट? ये क्या है सामने? एक सेकंड, कैमरा कहाँ गया मेरा? हाँ भाई कैमरा इधर आ। ये क्या है सामने? ये क्या घूम रहा है इधर पे सामने? वेट लेट मी चेक क्विकली, ये क्या है? What the fuck are you? ओ भाई जियो फंगी भी हैं। Solidified. Too easy. देखा 9000 मारी उसने, 9000 मारी है। इसकी अटैक का स्पीड बहुत कम है एक्चुअली।
और सारे कैरेक्टर तुम्हारे इन्फ्यूज हो जाते हैं। Gather. ये क्रिट नहीं हुआ। इसकी नॉर्मल अटैक स्पीड बहुत स्लो है, पता है? बहुत ज्यादा बहुत स्लो है। Grant us your blessing. Illusion shattered. Yield. Blade. हाँ जी बाबा, बूबा आर्कॉन का ठीक है ना, जितना भी बिल्ड नहीं है बिल्ड कर लेंगे। नहीं मैं क्या, ठीक है ना, जितना है बिल्ड नहीं है बिल्ड कर लेंगे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बिल्ड तो हो जाएगा, टाइम लगेगा, बस पेशेंस चाहिए होगा। मैं यहाँ पे एक्चुअली किसी को ढूंढ रहा हूँ, एक लड़की यहाँ पे घूमती है समवेयर अराउंड हियर। उसके पास एक पासवर्ड की है, वो सुनना है मुझे, लेकिन वो है कहाँ, लड़की चली कहाँ गई? वो यहीं कहीं घूमती है, आई थिंक सो। याद नहीं आ रहा कहाँ साइड मिलती है वो एग्जैक्टली लड़की, यहीं कहीं घूमती है वो। Do your worst. Shine down. देखा उन्होंने, उसने वेपराइज मारा तो डैमेज लगा उसको। You're exposed. 16,000 का पड़ा, देखा तुमने? 16,000 पड़ा है उनको। Yield. बहन चोद एम्बलम में खर्चा मिल रहा है क्या? कचरा मिल रहा है, विलिजर्ड स्ट्रॉन्ग बॉक्स में कचरा मिल रहा है, 2 महीने से अपग्रेड नहीं मिला। कोई बात नहीं, मिल जाएगा भाई, गेम है वो, इतना तो टाइम लगता ही है अपग्रेड में। मैंने सिंगशो का जब अपग्रेड करा था ना, मुझे ऑलमोस्ट लाइक 3 वीक्स या 4 वीक्स एटलीस्ट लगे थे मुझे सिंगशो के अपग्रेड के लिए। सिंगशो का जब मैं आर्टिफैक्ट सेट चेंज कर रहा था, नोबली से स्विच कर रहा था, तो सो नॉट बैड एक्चुअली कि अभी 1 ही महीना लगा तुमको। 1 महीना कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कभी कभी लग जाता है भाई। मैं इतने दिनों से इसको कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, इतने टाइम से इस पे डेंड्रो वाले आर्टिफैक्ट सेट में फार्मिंग कर रहा हूँ, एक भी ढंग का आर्टिफैक्ट नहीं मिला। गिव अप थोड़ी ना कर देंगे, वो तो करना ही पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कहाँ गई ये लड़की? यहाँ पे एक लड़की घूमती है, पता नहीं कहाँ चली गई। वीक्स बोल रहा, महीना लगेंगे, लगा दिए वो भी 2। I mean, तुमने वो रोल किए थे बाकी आर्टिफैक्ट जो मिले थे थोड़े बहुत भी, जो कि रोलेबल थे, उनको रोल किए थे कि नहीं किए थे? ऐसा तो हो नहीं सकता। एम्बलम डोमेन में यूजुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आर्टिफैक्ट सेट फार्म करने में, वीवी में लगता है और इस पे लगता है, डेंड्रो वाले पे लग रहा है अभी सबसे ज़्यादा टाइम। लड़की, वाह सिक गॉड, वाह भाई। बाकी भाई मैं पढ़ नहीं सकता, वो गलत बात। सिक गॉड रोल किया, एचपी डिफेंस फ्लैट अटैक में रोल हुआ। मुझे भी बेंटी के लिए ईएम का नहीं मिल रहा, जाने कितने रीजन स्पेंड करे। तुमने बेंटी निकाल लिया वत्स? तुमने बेंटी निकाल भी लिया है वत्स? आई डिडंट नो दैट कि तुमने बेंटी निकाल लिया एक्चुअली। सही है। अभी निकाला या पहले से है तुम्हारे पास बेंटी? कब निकाला था तुमने बेंटी खुद का? मेरा सिस्टम लॉगिन नहीं हो रहा था काफी देर तक, मैंने फट गई थोड़ी सी। तेरा मतलब क्या कहते हैं, लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा था ऐसा?
3 हो जाता सस्ती, तुम आते नहीं तो। हाँ तो 2 दिन पहले बोले 20 पुल्स पे, पिटी गेन हो गई थी पता नहीं था। अबे तो मैं तुमको बोलूंगा, तुम पता है वत्स, किसी और के लिए आर्टिफैक्ट फार्म करो, और लाइक वीवी डोमेन पे जाके फार्म मत करो आर्टिफैक्ट। वेस्ट है, मैं तो यही करने वाला हूँ अगर मेरा निकलता भी है तो। अगर जैसे काजुआ या फिर बेंटी निकालता हूँ मैं, तो मैं कभी वीवी डोमेन पे जाके फार्म नहीं करूँगा, बिकॉज उसका जो सेकंड आर्टिफैक्ट पीस है वो किसी के काम नहीं आता है, ठीक है, किसी का काम नहीं आता है वो। और इससे बेटर यही है कि किसी और के लिए फार्म करो, जो भी गंदे आर्टिफैक्ट हैं उसको आर्टिफैक्ट सेट में डाल के निकाल लो। टाइम जरूर लगेगा आर्टिफैक्ट सेट से, लेकिन ये है कि तुम्हारा इधर नहीं तो उधर तो हो जाएगा तुम्हारा काम सेट। वीवी डोमेन में करोगे तो तुमको इधर सब रॉन्ग सेट के देगा आर्टिफैक्ट, तो ज़्यादा दिक्कत होगी भाई। 3.3 में राइडन पक्का है, या और अगर हाँ तो उसका साथ वाला रीरन कौन सा होगा, एनी आइडिया? बोला तो 3.3 में राइडन और वो है क्या कहते हैं, स्कारामुश आ रहा है, सुनने में आया है मुझे। 1-2 CR लाइन पीस मिला है, 3 सबस्टैट था, एक 20 लेवल का सेक्रीफाइस किया, वो नया फ्लैट स्टैक अटैक आके सब उसी में रोल हो गया। दिमाग का भोसड़ा कोई बात नहीं, होता है, मेरे भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, बट कोई नहीं, बाद में काम आ जाएगा अपग्रेड के। नहीं कोई नहीं से गॉड, सॉरी क्यों बोल रहा हो, इट्स ओके। लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा था, बट वर्क रिलेटेड लॉगिन नहीं हो रहा था। अच्छा, ग्लाइडेड ड्रीम्स कैसा है? ग्लाइडेड ड्रीम्स इज गुड एक्चुअली, आई थिंक ग्लाइडेड ड्रीम्स इस्तेमाल किया जा सकता है, बट मुझे देखना पड़ेगा उसका सबस्टैट क्या है, मुझे भूल गया एक्चुअली ग्लाइडेड ड्रीम्स के। लेट मी चेक, आई थिंक ग्लाइडेड ड्रीम्स पढ़ा होगा। हाँ ग्लाइडेड ड्रीम्स पढ़ा है। एलिमेंटल मास्टरी है इस पे, क्योंकि दिस इज एक्चुअली गुड एक्चुअली, यहाँ पे ये अच्छा है पीस। Character equipping will obtain buff based on the elemental type of other character member. Attack is increased by 14% for each party member whose elemental time is same as the equipped character, and elemental mastery is increased by 50. प्रॉब्लम इसके साथ पता है क्या है, इसमें इक्विप्ड कैरेक्टर को बफ मिल रहे हैं rather than पार्टी मेंबर्स को, एंड पार्टी मेंबर्स में भी उन्हीं को बफ मिलेंगे जिसके एलिमेंट टाइप सेम होंगे। लाइक तू वेंटी लिया है तो वेंटी का एनिमो आएगा, ठीक है, तो अगर वेंटी के साथ तूने काजुआ लाया तो काजुआ को बफ मिलेगा वेंटी के साथ अटैक का, लेकिन बाकी किसी और कैरेक्टर को बफ नहीं मिलेगा ग्लाइडेड ड्रीम्स में। एलिमेंटल मास्टरी के हिसाब से लगाने के हिसाब से ठीक है ग्लाइडेड ड्रीम्स, बट आई डोंट थिंक सो बेस्ट इन स्लॉट रहेगा उसके लिए, काजुआ या फिर वेंटी के लिए ग्लाइडेड ड्रीम्स। बात यही है। Peace and good health should be enjoyed by all. भाई आपके पास काजुआ नहीं है If क्या I अभी? can नहीं provide everyone with a राहुल, life such as मैं this, इसलिए सोच रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन I में am हूँ। लाइक content. मुझे लग रहा है कि 3.2 तक मेरा ये नहीं हो पाएगा, बिजनेस कंप्लीट नहीं होगा, C2 राइडिंग के लिए बिजनेस नहीं हो पाएंगी, बिकॉज करंटली 50-50 है मेरी, ठीक है। लास्ट टाइम मैं जीता था, और क्या कहते हैं अभी करंटली 50-50 है। विसेस ऑलरेडी मेरी क्या कहते हैं कितने पे आ रखी है, 36 बची हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ से शॉप से भी इसको लेता हूँ, यहाँ से विसेस लेता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ सपोज यहाँ से, ठीक है, इस पे 13 कर लूँगा, तो भी एनफ नहीं है। लाइक 50-50 निकालने के बाद, 50-50 हारने के बाद भी 50-50 जीतना पड़ेगा, एंड C2 करने के लिए फिर 50-50 हार के साथ 50-50 जीतना पड़ेगा। और अर्ली मेरे को आज तक कभी मिला नहीं है कैरेक्टर इस पे, कैरेक्टर बैनर पे, सो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं अभी कन्फ्यूजन में करूँ क्या, मतलब वेंटी निकाल लूँ, क्योंकि वेंटी निकाल लूँगा तो मेरे को कहाँ फ़ायदा ही होगा एक प्रकार से। और उसके अलावा क्या कहते हैं, खुशनाली आ रही है, खुशनाली का गेम प्ले मैंने देखा, खुशनाली इज एक्चुअली रियली रियली गुड, एंड उसका लाइक अल्ट की ड्यूरेशन एंड रेडियस बहुत बड़ी है। लाइक आई थिंक गान्यू से भी बड़ी है उसकी ड्यूरेशन, उसकी रेडियस, उसके अल्ट की। सो सी इज़ एक्चुअली गुड, एंड उसकी स्किल की ड्यूरेशन भी अच्छी खासी है। तो नाइडा एक्चुअली इज़ अ गुड एट फॉर अ टीम।
एक सेकंड, गिल्डेड ड्रीम्स होता है तो क्या लगाऊं? A ऑब्वियसली तुम shield is वीवी not सेट enough to लगाओगे, protect the most उस पे important things. बफ नहीं मिलेगा उसको. That's why I must also wield a spear. दैट पीस इज नॉट मेड फॉर लाइक वेंटी, बट 2 पीस लगा सकते हो तुम अगर तुमको लगाना एलिमेंटल मास्टरी देनी है तो. फॉर द टाइम बीइंग अगर तुमको कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 पीस वीवी 2 पीस ये लगा सकते हो तुम. गिल्डेड ड्रीम्स लगा सकते हो. हाँ, खुशनाली का अल्ट गजब है भाई, पूरा महल बना देती है. मैंने देखा, पूरा महल बना देती है खुशनाली. मुझे अच्छा लगा खुशनाली का अल्ट एक्चुअली. एंड ड्यूरेशन भी अच्छी खासी है, मजाक नहीं है. ड्यूरेशन काफी अच्छी है उसकी. हाँ, वॉन्डर भी दे सकते हो, 2 पीस वॉन्डर, 2 पीस गिल्डेड ड्रीम दे सकते हो. 100 ईएम उससे आ जाएंगे और उन पे ईएम पीसेस निकाल लो तो तुमको और ईएम मिल जाएगा. तो ईएम ही बिल्ड करना है वैसे, तुमको क्रिट रेट के डैमेज करना नहीं है क्योंकि क्या कहते हैं, स्वर्ल क्रिट नहीं करता है. तो स्वर्ल का स्वर्ल क्रिट नहीं करेगा तो उतने ही डैमेज होगा हर बार. सो यू कैन पुट लाइक 2 पीस वॉन्डर, 2 पीस गिल्डेड ड्रीम्स, or you can go 2 piece wander, 2 piece VV plus 2 piece gilded dreams or wander set because उससे एनिमो डैमेज बोनस मिलेगा तुमको. बस यही बात है. बाकी चॉइस तुम्हारी है, तुमको जो लगाना हो लगा सकते हो. अभी तो बेटर रहेगा अगर तुमको पीस नहीं कंप्लीट हो रहा था. भाई बीवी पीस 4 पीस के लिए है, बाकी सब कचरा है फॉर एनिमो. या आई नो बट लाइक, लेकिन बेंटी और काजुआ जो हैं, या सुक्रोस ले लो, सुक्रोस ये लोग क्या कहते हैं ईएम पे वो होते हैं, क्या कहते हैं ईएम पे बफ इनको ज़्यादा मिलता है. तो फॉर ईएम पर्पसेस यू कैन पुट, लेकिन उसके अलावा तो क्या कहते हैं एक्चुअली तो क्या कहते हैं वीवी सेट ही रहेगा. जब मिलेगा तब की बात है, जब नहीं मिल रहा है तो अभी वो लगा के काम चला सकते हो. पर सूजा भाई ईएम का कुछ भी नहीं है निकल रहा, इवन सबस्टैट पे भी नहीं आ रहा है. अब वो उसका हम क्या कर सकते हैं, वो तो तुमको देखना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा. मुश्किल है बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है. आई नो मुश्किल है थोड़ा सा. मैं 4-5 महीने फार्म किया हूँ बीबी सेट, तब जाके काजुआ 100,000 क्रॉस किया है ईएम में. वही ना बोल रहा हूँ, इट्स एक्चुअली रियली डिफिकल्ट इन बीबी सेट, स्पेशली क्योंकि ऑफ पीस वाला जो है ना वो किसी का काम नहीं आता है. तो मतलब यूजलेस है टाइप से वीवी डोमेन. वीवी सेट के लिए बस तुमको फार्म करना पड़ता है वहाँ पे, बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे. बाय द वे गाइस, जिनको कैंडिस मिली है वो लोग बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं बिल्ड कर रहे हैं. लाइक कैंडिस को थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट देखे, चाहे खेल के देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तुम लोग, क्या सीन है तुम लोगों का. इसका संडे को डोमेन आएगा, कल था डोमेन एक. हाँ ये भी नहीं है मेरे पास, अरमाइट्स के बैंड्स भी नहीं है. पुल ही नहीं किया. मेरे को तो मिली नहीं बेंचो, तब 45 पड़ी हो गई और मैं और पुल नहीं कर रहा. तूने किया मतलब सर से पुल उस पे, तूने पुल क्यों किया? तेरे को गलती से निकल जाता बेंटी तो. हाउ इज कुकी सुनो, शुड आई बिल्ड हर? लाइक हीलिंग के लिए बिल्ड कर सकते हो तुम उसको, अगर तुमको हीलिंग की कमी पड़ रही तुम्हारी टीम में तो. एज अ हीलर सी इज गुड एक्चुअली, आई डोंट. और उसके अलावा इलेक्ट्रो एप्लीकेशन के लिए ठीक है कुकी, बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुकी उतनी काम की है.
लेट्स सी 10 मोर पुल करते हैं, क्या पता कैंडिस निकल जाए 20 के बैनर पे। बोलो ना मेरे को अर्ली कभी 5 स्टार नहीं निकलता है, कभी अर्ली 5 स्टार नहीं निकलता है। बारबरा डियोना है हील के लिए, हाँ तो फिर ठीक है, बारबरा भी क्यों चाहिए तुमको, डियोना ही काफ़ी है तुम्हारी हील के लिए। बट बात यही है कि तुम अल्ट करोगे डियोना का तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से कर रहे हो। डियोना की शील्ड जल्दी टूटती है, टैंक नहीं कर पाती ज़्यादा डियोना, थोड़ा ही सा प्रोटेक्शन दे पाती है टीम को। ऑफ पीस दिया है, आई ऑफ परसेप्शन। ये मेरा पता है कि आई थिंक 5वां या 6वां आई ऑफ परसेप्शन है मेरे हिसाब से। लेट मी चेक, आई थिंक 5वां या 6वां आई ऑफ परसेप्शन आया है ये मेरे को मिला है। सी R3 हो रखा है ये, और रिफाइनमेंट के लिए जाता हूँ तो 2 अभी और पड़े हैं मेरे पास आई ऑफ परसेप्शन। साइनो के बैनर पे किया था, अगर 45 में निकल जाता तो बुरा नहीं है, बट नहीं निकला क्योंकि ज़्यादा हील नहीं करती है, ठीक से खेलना पड़ेगा उसके साथ। हाँ वही है, लो लेवल पे कुकी ज़्यादा हील नहीं करेगी, बट ढंग से बिल्ड करोगे तो देन कुकी कैन एक्चुअली लाइक डू सम बूम बूम्स यू नो। सायु दे दिया मैं चौदह, नहीं कर रहा मैं इससे ज़्यादा पुल। मेरे को कैंडिस को C1 करना है, कैंडिस के C1 पे एक्चुअली इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है अल्ट की, 3 सेकंड की ड्यूरेशन इंक्रीज होती है। C2 पे सेक्रेट राइट ऑफ हेरोइन सेक्टम हिट्स अपन अपोनेंट, कैंडिस मैक्स HP इज इंक्रीज बाय 20% होती है। एंड शॉर्टन द होल्ड CD ऑफ सेक्रेट राइट ऑफ हीरोइन सेक्टम, ओके इंक्रीज द सेक्रेट राइट ऑफ हीरोइन सेक्टम। और ये क्या है C6 पे, व्हेन कैरेक्टर अफेक्टेड बाय प्रेयर ऑफ क्रिम्सन क्राउन कॉज द सेक्रेट राइट ऑफ बिंगटेल टाइड डील्स एलिमेंटल डैमेज टू अपोनेंट्स यूजिंग नॉर्मल अटैक्स, an attack wave will be unleashed that deals AoE hydro damage, okay, equal to 15% of Candice's max HP. This effect can be triggered once every 2.3 seconds and is considered elemental burst damage. Okay, ये तो सही है, C6 अच्छा है, इसका C1 और C2 अच्छा है वैसे, ये भी अच्छा है, क्या कहते हैं C3 अच्छा है, ये कि तुम कैंडिस के साथ जैसे टैप करके जो करते हो ना, उसमें तुम टैप होल्ड करोगे तो तुम्हारा तुरंत चार्ज हो जाएगा, अल्ट्रा तुरंत तुम छोड़ पाओगे। शी इज एक्चुअली फन, यू नो, शी इज फन टू प्ले। क्या कर रहा था मैं, हाँ मेरे को रेजन कन्वर्ट करने थे, वी विल सी संडे के दिन देखेंगे आई थिंक फार्म का तो, और माइट्स का भी, और माइट्स को भी मारना पड़ेगा। Let's continue our chat. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? इसने फिर मेरे को उसमें डाल दिया, इसने फिर से वापस से मेरे को पता है स्टोरी क्वेस्ट में डाल दिया। मैं अच्छा खासा रेजन कन्वर्ट करने जा रहा था आई थिंक। आई थिंक स्ट्रीम तो सही चल रही है, क्या दिक्कत है अभी, आई थिंक स्ट्रीम चल रही है, हाँ स्ट्रीम तो चल रही है यहाँ पे, वो थोड़ी देर के लिए बीच में लैग आया था जरूर, बट आई थिंक यहाँ तो चल रही है मेरे साइड से। हाँ In any case, I नेट probably संभालो, can't नेट take को over your mind पकड़ के for रखना पड़ेगा। हेलो एस्ट्रॉक्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। यो एस्ट्रॉक्स, क्या हाल चाल है एस्ट्रॉक्स तुम्हारे? इन एनी केस आई विल प्रोबब्ली can't take over their mind directly. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point.
spoken like the god of Sumeru. अच्छा, तुम लोगों ने कभी ये नोटिस किया है, लाइक क्या कहते हैं, ये कैथरीन के पीछे वापस वापस से लैग होने लगी। अभी अभी सही चल रही है स्ट्रीम? मेरे मोबाइल में तो सही चल रही है स्ट्रीम, क्या दिक्कत है? मेरे मोबाइल में तो स्ट्रीम सही चल रही है। आई नो स्पीड स्पीड सही से नहीं आ रही है, बीच बीच में थोड़ा सा लैग आ रहा है, बट आई थिंक कैथरीन बायोनिक रोबोट है ना, बायोनिक रोबोट है। मुझे डाउट है कि ये मतलब रोबोट है कैथरीन, बट कंफर्म नहीं है। Like if she is a robot, how is Nahida is able to take over her mind actually? तो वो एक क्वेश्चन उठता है, बिकॉज अगर वो रोबोट है तो कैथरीन के मतलब दिमाग पे एंट्री होनी नहीं चाहिए, इसकी नाहिडा की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कंफर्म है तो नाहिडा ने बोला था, नाहिडा ने ये थोड़ी ना बोला कि वो रोबोट है। सी इज जस्ट फ्रॉम क्या कहते हैं, उसने बस इतना बोला कि सी इज जस्ट फ्रॉम सेजनाया। उसने ऐसा कब बोला कि रोबोट है वो? We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. नाहिडा का कैथरीन का, लेकिन ये कट सीन में वो कट सीन दिक्कत करेगा। Nahida, according to a Okay. Well, then I should find someone. You're saying we should. Oh, before actually, Sitar. We ran into her. Paimon still remember. She was born in the. Oh. नहीं, जग रहा हूँ। अभी भी गंदा इंटरनेट चल रहा है। ईमेल आईडी लीक से क्या है? तू पासवर्ड तो डाल ही नहीं पाएगा ससे। पासवर्ड तो पता होना चाहिए ना। ईमेल आईडी लीक से क्या होगा? पासवर्ड पता ही नहीं है, लीक का फायदा क्या है? पासवर्ड तो पता होना चाहिए ना उसके लिए। लीक तो तब होगा। मेरे को कभी एलगी नहीं मिलता है। पहले एलगी पे ट्राई किया, होमा मिला, फिर दूसरी बार में ट्राई किया एलगी पे, स्टाफ ऑफ स्कारलेट सैंड मिला। तो मैं क्या करूँ उसका विशाल? अब वो आपकी किस्मत है, मेरी किस्मत मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? वो आपकी किस्मत है। ये कट Let's सी continue our chat here. मैं स्कैम ईमेल्स भेजेगा, स्कैम ईमेल्स पे मास स्पैम कर ले ससे। Okay, so do you have any ideas on how we can कर ले। investigate the sages, Nahida? मैं तो अपने मेल आईडी खोलता ही नहीं हूँ कभी। Actually, I've already done देखना a little पड़ता है ना bit उसके of लिए work मेल on आईडी that. खोल के। मेल तो But देखते ही नहीं हूँ मैं now, कभी। I want to hear your. We're in the dark as of now. Since we एलगी still मेरे don't पास know भी नहीं है anything about their विशाल। goals, any rash move could tip them off and lead to. After all, वेपन every बैनर person बेकार in था ये Sumeru वाला, City पुल is करने one का of फायदा their नहीं था। hostages. अब वो रिस्क तुमने लिया तो वो तो अब उसका क्या कर सकते हैं? रिस्क था वो तो। वेपन बैनर वैसे भी कोई कभी पुल नहीं करते हैं। I've already. It seems that. Have you already caught? I'm guessing. In any case. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught?
इस बार का वेपन है ना बहुत खराब था, बेकार वाला। पिछले वाला अच्छा था ना ससी, इस बार वाला बेकार है। अगला वाला No, देखेंगे it's कैसा रहेगा। not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. अच्छा ये बताओ ससी, तुम वो उसके लिए जाओगे क्या, मतलब नहीडा के वेपन के लिए जाओगे क्या? लाइक अगर तुम्हारे पास विशेष बच जाती हैं तो निकल Doing जाती है that नहीडा would be जल्दी तो। ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. क्या? बहुमाना दर्शन ऑफ अकेडमी, रिजेक्टिंग इम्प्रैक्टिकल मोशंस at the beginning of planning session will give more weight to actual proposal. Okay. But aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Yes, क्योंकि कोई और चाहिए नहीं। यलान उताओ के कोई न्यूज़ नहीं है, बाकी कोई यूनिट चाहिए नहीं मेरे को। बात तो सही है। हाँ तो तू मतलब वेपन पुल करेगा, मतलब कुल मिला के सही है। Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sitaria? सितारिया कौन है? Sitaria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? हाँ okay. We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. इतनी विश नहीं है कि वेपन मिल जाए, फर्स्ट ट्राई में ही मिलना चाहिए, इतनी विश हो पाएंगी। और लाइक कॉन्स्टलेशन के लिए जाएगा तू नहीडा के, अगर कॉन्स्टलेशन अच्छे रहे तो कॉन्स्टलेशन के लिए जाएगा तू? She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Sitaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. ना इतनी विश नहीं होंगे मेरे पास। अबे तो तू वेपन कैसे पुल कर लेगा फिर इतनी विश? तो मतलब एक रोटेशन अगर वेपन का कर रहा है तो इससे बेटर ये नहीं है कि लाइक कैरेक्टर का पुल कर ले। 50-50 हारेगा भी तो एटलीस्ट चांस तो रहेगा तेरे की अगली बार तेरा मतलब नहीडा का कॉन्स्टलेशन निकल जाएगा। मतलब ट्राई कर सकता है तू। तेरे पास तो वेपन ऑलरेडी 5 स्टार में पड़े हैं, 4 स्टार में भी कई सारे चॉइसेस हैं। एलिमेंटल मास्टरी के लिए तेरे पास वही है, क्या कहते हैं, विटसिथ है। Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. This is no longer just a metaphor. Those are the Sataria's true thought, right? From the sound of it, Sataria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues,
Many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had और already तेरे को लगता become है the कि हमको sage's बाद में accomplice. लाइक जैसे She can't स्टोरी, deny her part in their schemes anymore. तेरे को लगता है बाद में जैसे क्या कहते हैं स्टोरी क्वेस्ट में हमको राना मिली थी, राना को वो मिले थे विजन मिला है, तो हमको फ्यूचर में कभी राना एज अ मतलब कैरेक्टर मिलेगी गेम में, लगता है तेरे को? व्हाट्सएप ईएम नहीं सीडी देता है, ईएम का फोस्टर कैटलिस्ट सैक्रिफिशियल है। सैक्रिफिशियल है क्या? नहीं तो व्हाट्सएप देता है ना ईएम तो। वेट लेट मी चेक आफ्टर दिस। मुझे आई थिंक व्हाट्सएप याद है कि व्हाट्सएप ईएम देता है, सैक्रिफिशियल एनर्जी देता है ना। Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Zetaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat सीडी with a देता few है of the vendors व्हाट्सएप, there. हो सकता है फिर सैक्रिफिशियल देता हो। लेट मी चेक, कंफर्म कर लेते हैं ना। व्हाट्सएप क्रिट डैमेज देता है, तो ईएम कौन देता है? ईएम सैक्रिफिशियल देता है, एनर्जीज फेबोनियस देता है, प्रोटोटाइप एचपी देता है, एंड आई ऑफ परसेप्शन अटैक देता है। ओके बट पता नहीं सैक्रिफिशियल कैसी रहेगी नाइडा पे, बात यही है। और पता नहीं नहीडा क्या कहते हैं ईएम पे होगी कि नहीं होगी, उसका वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ईएम पे अपग्रेड रहेगा कि नहीं रहेगा। वी डोंट नो स्टिल येट कि अपग्रेड किस पे है नहीडा का। लेट मी मेक कंडेंस फर्स्ट, नहीं तो ये वापस से चिपका देंगे मुझे उसमें। कितने पड़े हैं यहाँ पे कंडेंस? 4 पड़े हैं, 5 फ्रेजाइल पड़े हैं। ओके एंड आई थिंक अभी मेरे को वहाँ से सेरेनिटी पॉट से एक खरीदना है जाके, भूल जाऊँगा नहीं तो। सैक्रिफिशियल में बो स्वॉर्ड क्लेमोर एनर्जी देते हैं, कैटलिस्ट ईएम देता है। सैक्रिफिशियल अच्छी हो सकती है नेडा पे, आई थिंक मोस्ट लाइकली ईएम पे ही रहेगा। होना तो चाहिए ईएम पे, यही है, लेकिन चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करंट मतलब इसको अगर देखें हम, करंट जो डोमेन है उनको देखें और करंट लाइक पीसेस को देखें, तो उस हिसाब से मुझे ईएम ही लग रहा है मोस्टली इसका, क्या कहते हैं नोएडा का। बट चेंज भी हो सकता है, क्या है वो कभी कभी क्या बीच बीच में डोमेन भी डाल देते हैं अपने से, जब उनका मन करता है कि कैरेक्टर रिलीज करते हैं तो डोमेन भी डाल देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन देते हैं हमको। If you ever... मैं सोच रहा फार्म कर रूं, बट पता नहीं कौन सी बुक्स लगेंगी। मे बी आई थिंक तुमको वेट करना चाहिए, बेस्ट रहेगा। ये क्या है यहाँ पे? realm waypoint a place to return to है व्हाट? अच्छा, तो मल्टीपल realm जब बनाते हैं तो हमको यहाँ पे वे पॉइंट मिलता है कि हम जिससे रिटर्न कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं। ओके that's actually nice। पता है इसके मेरे को कैंडिस की एक ही कमी क्या लगी,
लाइक जब सील्ड होल्ड करती है तो शी शुड बी एबल टू मूव विद द सील्ड होल्ड The one before. स्टैंस पे एक जगह खड़े रहना Ah. लाइक इट्स एक्चुअली बैड अगर एनिमी मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा तो उस हिसाब से इट्स एक्चुअली बैड कि अगर एनिमी मूव कर रहा है तो फिर वो बेकार है। लेट्स सी आर्कॉन क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या कहते हैं एनिमी खुद से तुमको अटैक नहीं करते हैं तुमको मूव करना पड़ता है उनकी तरफ। आजकल ऐसे एनिमीज रहते हैं सो थोड़ा सा कैंडिस वहाँ पे दिक्कत जाएगी कैंडिस को। आई थिंक मेरी वो विशेष हो चुकी होंगी कंप्लीट। लेट मी चेक स्टैंडर्ड बैनर की कितनी विशेष हो चुके हैं। 9 हुई हैं, एक कम पड़ रही है स्टैंडर्ड बैनर पे। इस पे है क्या? नहीं इस पे भी नहीं है विशेष। किससे लूँ मैं विशेष? एक कम पड़ रही है। आई थिंक कॉलेज से लेते हैं, कॉलेज को अपग्रेड करके लेते हैं। Does this mean I made... मैं करंट एक्सप्लोरेशन टीम में मेरा फेवरेट हो गई है। मेरी करंट एक्सप्लोरेशन टीम मेरी फेवरेट हो गई है। किसको इस्तेमाल करता है एक्सप्लोरेशन टीम में? किसको करता है तो यूज एक्सप्लोरेशन टीम में? पोस्टर दिया है, आई ऑफ परसेप्शन वापस से दे दिया, थमा दिया है इन्होंने। भाई कितनी आई ऑफ परसेप्शन देंगे? मैं तो यूज ही नहीं करता आई ऑफ परसेप्शन किसी के ऊपर। लेट्स सी आर्कॉन क्वेस्ट कहाँ पे है। आर्कॉन क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं अपन। ये क्या है साउंड्स? अच्छा हाँ ये तो अभी मुझे मॉन्स्टर का भी चालू करना है, वहां से विशेष लेनी पड़ेंगी। भूल ही गया था 16 डेज का है ये। अच्छा ये बताओ किसी ने इवेंट चालू कर दिया क्या? काजुआ बेनेट गान्यू डेंड्रो ट्रैवलर। अच्छा सही है। तुम डेंड्रो ट्रैवलर किस मतलब बेनेट के साथ इस्तेमाल करते हो? क्योंकि गान्यू गान्यू तो कुछ कर भी नहीं पाएगी डेंड्रो ट्रैवलर के साथ। तुम कितना बड़ा है ये मतलब मॉन्स्टर का कितना बड़ा है ये क्वेस्ट इवेंट वाला? क्योंकि मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, 16 दिन का है। मैं सोच रहा हूँ पहले ये ख़त्म कर लूँ, आर्कॉन क्वेस्ट ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ये चालू करता हूँ। बट आई हैव नो आइडिया कितना बड़ा है ये वाला अभी इवेंट जो आया ना विंड ब्लूम का। This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between डेंड्रो my ट्रैवलर ears. तो बस पजल के If लिए I be है, blessed वो अपनी today स्किल by से the बस gods, एनिमीज को I may be able गुड़गुड़ी to show कर you सकता the है way. गुदगुदी कर सकता है। ओके Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a fortune reading for her? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past,
You have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh boy. Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Divine my prospect in health. Divine my prospect in love. I would put love. Prospects? No problem at all. लव वाला करेंगे, देखते हैं. The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How क्या? could that be? बोल रहा so many people will fall for you. Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. फूड मांगता है तेरे को? I've never seen... फूड तो लिया ही नहीं, ले ही नहीं रहा है. मेरे पास 40 फूड पड़ा है. क्या कहते हैं, कैट्स फूड तो बहुत पड़ा है मेरे पास. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something नायडा you की love. वॉइस एक्चुअली में अच्छी है. I don't So know. is your father still डिपेंड working करता as है a ऐसा mason? से. अगर सपोज तू लॉन्ग रन में कैरेक्टर रख रहा है अपने पास, जैसे जोंगली है, जोंगली की आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन जैसे लॉन्ग रन पे जैसे तू अपनी टी पार्टी में रखता है, देन इट कुड बी अनोइंग अगर उसके वॉइस लाइंस होती हैं तो. लाइक जोंगली की बहुत बड़ी लंबी लंबी वॉइस लाइंस हैं और लाइक हैवी हैवी वॉइस लाइंस हैं, तो ज़्यादा टाइम तक सुनते सुनते ना बोरिंग हो जाता है. तो वैसा नहीं होना चाहिए बस. अभी तो हम कटसीन में सुन रहे हैं इसलिए ऐसा है. जब कैरेक्टर एक्चुअली आएगा उस टाइम जब वॉइस लाइंस रहेंगी और लाइक AFK में जो रहेगा एफर्ट्स रहेंगे, वो अनोइंग नहीं होना चाहिए बस. वो डिपेंड Oh करता है. no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. एक चिकन मुझे We'll समझ leave में you नहीं to it. आया, Take care नहीडा now. की वॉइस चेंज क्यों हो गई. ये क्या कहते हैं, कैथरीन की आवाज़ क्यों आने लगी एकदम से. No नहीडा तो अभी भी problem. कंट्रोल में है. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. हमको पूरे टाइम नहीडा की आवाज़ सुनाई दे रही है, बीच में चेंज हो गई आवाज़. नहीडा की सॉफ्ट वॉइस है, जोंगली की हैवी वॉइस है. This लेट्स should सी. be our final stop. Sataria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida,
You've really thought of everything. It's my duty to protect Samaria's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. Tavern hostess. If I recall, Kotion. you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Oh, that's right. I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. वो जब दूसरे लोगों से बात करती है तो कैथरीन की वॉइस में बात करती है, हमसे बात करती है नहीडा अपनी वॉइस में बात करती है, बाकी किसी को पता न लगे। अबे लेकिन लाइक गले से जो आवाज़ निकल रही है वो तो एक ही हो सकती है ना, मल्टीपल कैसे हो सकती है? नहीडा वॉइस एक्टर है क्या? मल्टीपल आवाज़ निकाल पा रही है? But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure. But you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. शीशान As पढ़ते हैं long as इसको, I can ओके? make it into the academia as an official student, I'll be happy. ओके, चीशान पढ़ते हैं। तो क्यों का ची साउंड होता है? So, was that everybody? वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। हाँ भाई, कुछ भी कर सकती है। Three familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibility. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. वही मैं बोल रहा हूँ, तू जाओ का नाम बिगाड़ के रखा है। जियाओ है ना? जाओ, जियाओ, ऐसा? Oh, Paimon gets it now. You want to take advantage of the guilt Sataria feels नहीं बे, about जाओ ही her पढ़ते homeland. हैं, हम तो जाओ ही बोलते हैं। नॉर्मल इंसान जाओ ही बोलता है, जियाओ कौन बोलता है? Although she knows she should return शाओ home होगा to या help the फिर people of the मोस्टली desert, शाओ all हो she's सकता done है। is conspire with the sages. If King Dasrath was to criticize Sataria's action, So, well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be weary of us, and we may not get anywhere. एक्स को सा किस जैसा पढ़ते हैं तो उसका नाम सियाओ होगा। श्याओ, श्याओ है, ओके, मेक सेंस। तो जाओ नहीं होता है ना, जियाओ होता है, इस श्याओ होता है, श्याओ। why is this so complicated? I mean, ऐसा क्यों है? But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure.
She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. पाइमोन तो पाइमोन ही पढ़ते हैं ना, वो चाइनीज नेम है, वो ऐसा ही लिखते हैं, वरना हम क्यों चीची को की पढ़ते? हम तो चीची को की पढ़ते हैं। हाँ ये भी सही है। Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? बट एक्चुअली चीची के केस में भी क्या कहते हैं, क्यू और आई है ना, तो वो साउंड ची का आता है, ना कि की का आता है चीची के केस में। That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does she have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. वेट करना है अभी कल तक का, मॉर्निंग 12 से 6 तक का। लेट्स सी, वेट कर लेंगे। मेरे को 1 सेकंड देना बस, पानी लेके आना है मुझे, पानी ख़त्म हो गया है। स्ट्रीम तो सही चल रही है ना, स्ट्रीम में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुएं से भर के लेके आ जा पानी, और क्या, कुएं से भर के लेके आ गया मैं, पास में ही कुआं है, कितना टाइम लगता है। गो टू द मार्केट एंड कैरी आउट नाहिडा's प्लान। ओके Here she comes. Satori is here. Okay. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon started. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. तू लाया है कभी कुएं से पानी 10 किलोमीटर दूर से? पानी कुएं से तो नहीं, उससे लाया हूँ, क्या कहते हैं, हैंड पंप से जरूर लाया हूँ। 10 किलोमीटर तो नहीं, 10 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook.
you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay, 10 किलोमीटर then. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा You होती just है. seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Harut and Marut. That's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. हम लोग कल आते थे साइकिल पे. झूठ क्यों बोल रहा है शशि? हम का साइकिल का कहाँ से ले आने लगा बे? 10 तो नहीं 5 होगा. हाँ 10 तो ज्यादा हो जाता है ना. मैं 2 किलोमीटर तक लाया हूँ. 5 किलोमीटर भी ज्यादा होता है. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project? फाइमोन को देखा तुमने? फाइमोन को देखो. फाइमोन को देखो. फाइमोन को देखो कैसे मुंह निकाली हुई पीछे. ओ भाई ये फनी है भाई. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. A god have spoken. The gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. Yo Hardik, welcome to the stream. क्या हाल चाल है हार्दिक? कैसे हो? Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all. Bus tired as hell. Was gonna go to sleep. It's okay, Hardik. You can sleep. You don't have to be on the stream. And at least I'm happy that you came to the stream and say hi here. I'm happy about that. It's okay, Hardik. You can sleep. We will see each other tomorrow anyways. मीठा पानी होता था उस कुएं में लेके आते थे रोज कुछ डब्बे भर के साइकिल से. शशि तू तो सिटी में रहता है. सिटी में कब से मतलब कुएं की जरूरत पड़ने लगी? गांव में लगती है कुएं की जरूरत तो. और कुएं में भी आजकल तो हैंडपंप आते हैं कुएं वहां पे गांव में. मैं बोला चेक इन करके जाऊं, लाइक करते जाऊं. कोई नहीं हार्दिक. इट्स ओके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द स्ट्रीम. Good night, Hardik. Good night, Hardik. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? अच्छा ये बताओ हार्दिक, तुमने उस दिन फिर वो किया था जो हमने बताया था उसमें क्या कहते हैं बायगॉन फैंटाज़म में किए थे उस दिन फिर तुमने? या आई कैन सी दैट हार्दिक. तो तभी तुमसे अभी तक जेंसन का तुमने आके जेंसन के बारे में कुछ बताया नहीं मुझे कि लाइक बोरिंग है या लंबा है रिपीटेटिव है करके. ऐसा कुछ भी नहीं बताया मुझे. कितनी रैंक आई फिर? टॉप 1 पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे मेरे घर पे नहीं, अंकल के घर पे जाता था तब. मेरे घर पर सरकारी पानी आता था. पहले पंप लगवा ली, फिर पंप लगवा ली. ओके.
तो तू अपने अंकल के घर जाता था, तो अंकल के घर पे तेरे को तू क्यों पानी लेके आता था शशि? लाइक तू तो एज अ गेस्ट जाता होगा ना? आ 800 स्कोर पहुंचा ना 13th पहुंचा। ओके सिर्फ 800 स्कोर कैसे हार्दिक? 800 कैसे स्कोर हो गया तुम्हारा भाई? मतलब 900 या 1200 तो मैंने ही किया था, तूने 800 बस कैसे किया? लाइक तू करता तो तेरा तो फिर भी क्या कहते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4000 या 5000 तो जाता ही जाता स्कोर तेरे केस में। हाउ कम तेरा 800 स्कोर था बस सिर्फ? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! गैस नहीं पढ़ने जाता था स्कूल का वेकेशन में। पढ़ने जाता था? वो टीचर है तो अंकल के घर पे गेस्ट कौन बनता है? 2 ही किए थे, फिजिकल वेपन बिल्ड नहीं था, लेवल 80 लेके गया था मैं। स्टिल बे 800 बहुत कम स्कोर है। लाइक मेरा खुद का 1200 समथिंग गया था हार्दिक। मेरा तो 3 ही वेपन बिल्ड है, मैं उन्हीं को लेके गया था हर जगह। Is she suspected with She just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. 2 ही किए। ये इसको लगता है डाउट हो गया हम पे। Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid showing I know up इस out of बार nowhere का and फाड़ berate her, देगा। that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harabatot theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. ये सिटी कौन बजा रहा है? Teams now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. Did you hear उसके कटसीन में सिटी की आवाज आई थी? What the fuck? किसने सिटी बजाई यहाँ पे? By the way, I know. By the way, start saving crystals. मेरे तो हो रहे हैं सेव, अभी भी हो रहे हैं। मैंने इवेंट पे नहीं लगाया। तुमने इवेंट पे लगाया क्या क्रिस्टल्स? तुमने पैसे लगाया क्या करंट वाले पे, जिसपे वो क्या कहते हैं स्किन वगैरह मिल रही है, क्या कहते हैं, और रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, उस पे तुमने लगाया क्या पैसे हार्दिक? It's okay. I just got caught up in something. कोई कैथरीन पे सीटी मार रहा है लोल। हाँ मुझे भी लग रहा है। नहीं क्या पता भाई, मैं ट्रैवलर को मार रहा हूँ सीटी। उसने बोला ना कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु फेल इन लव विथ यू, सो मेरे को लग रहा है ट्रैवलर को मार रहा होगा सीटी। आई गॉट स्किन फ्री के पुल्स पे हैं। क्या बात कर रहे हो हार्दिक? ओ भाई हार्दिक सही है, लकी बे, लकी हो तुम। मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला इस बार पुल्स पे, सब घटिया थे पुल्स मेरे तो अभी चल रहे हैं, सेविंग चल रही है। 7 to 8,000 डार्क क्रिस्टल सेव हो चुके हैं और काफ़ी सारे रेड पुल्स भी सेव हो चुके हैं। बट आई एम नॉट श्योर किस पे पुल करूँ अगला, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि अगला कैरेक्टर फिजिकल होगा या क्या होगा, पायरो होगा या लाइक बोल्ट होगा, और बेस्ट कौन सा है अगला वो भी डिपेंड करेगा। लोग लिन का बोल रहे हैं कि लिन बेस्ट है। You asked me to help you look for work. What kind of work were you looking for again?
Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? He's feeling a lot better. He is walking more now. Oh, that's good to hear. I have been thinking a lot about him. If I could I get have some more schedule. time off, I'd love to I pay have him a schedule. visit. What? Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. पूरा शेड्यूल है अपने पास. किस चीज का शेड्यूल है तुम्हारे पास? If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos. He has a quick temper, and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. पता है मेरा तो अभी कल का प्लान है कि कल वो ना पोर्टल्स हैं जो लाइक आर्टिफिशियल आइलैंड पे पोर्टल्स हैं ना 60s और 90 सेकंड्स वाले 40 सेकंड्स 45 सेकंड्स वाले उनको रन करूँगा कल मैं क्रूमेट्स के साथ एक दो लोगों के साथ मिलके. बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो रैंडम्स को बुला ही लेंगे हम पोर्टल रन के लिए. तो वो कल का प्लान है मेरा. और कल वो भी करना है मुझे क्या कहते हैं सीक्रेट क्वेस्ट जो नहीं है आर्टिफिशियल आइलैंड में वो भी करना है मुझे कल उसमें गेम में. Oh, so who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? बैनर शेड्यूल है अपने पास. अच्छा बैनर का शेड्यूल है तेरे पास? भेजना मेरे को हार्दिक डिस्कॉर्ड पे. आई थिंक 5 अक्टूबर को आ रहा है ना अगला बैनर. तो 5 अक्टूबर को अगला बैनर है. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert. Yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time. I think we should be back by now. I believe so. I think स्ट्रीम चलने लगी होगी. ऐसा लग हो रहा है बीएसएनएल का नेटवर्क और बारिश हो गई हो. उस दिन भाई तूने बोला मेरा भाई तूने उस दिन बोल दिया कि क्या कहते हैं उस दिन तू बोला कि मेरा क्या कहते हैं उस दिन बोला कि क्या कहते हैं जैसे जेंसन का लाइव स्ट्रीम नहीं रहता है लोडिंग पे जाता रहता है पूरा. उस दिन वैसा बना दिया भाई तूने उस दिन. तो मेरे को दिल से बुरा लगता है भाई. ऐसा मत बोला कर यार. मेरी गलती थोड़ी ना है वो इंटरनेट की गलती है. अब मैं तो अपनी साइड से सही चल रही ना मेरे साइड से इंटरनेट तो. अपने साइड से तो मैं सही चला रहा हूँ. अब वो इंटरनेट हाक रहा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ. बीच बीच में कभी हाक देता है. पता नहीं क्यों हाकना है मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है. स्ट्रीम तो वापस चलने लगी ना. अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक. हाँ तो बस ठीक है. क्या दिक्कत है. अभी वो भी नहीं है डिले भी नहीं है स्ट्रीम पे. वी आर गुड एक्चुअली. But once everything is over, I'll be sure to पड़ोसी pay का her a वाईफाई. visit to remind and explain everything. ना भाई मैं पड़ोसी का क्यों इस्तेमाल करूँगा. Anyway, let's keep going. पड़ोसी का इंटरनेट इस्तेमाल करके क्या मिलेगा. Come on! Sataria's already started talking with Shishan. So, Shishan,
Have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? I spending all my time studying in the basement. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Jishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! ऐसा तो नहीं है कहीं से यहाँ से जंप तो नहीं कर दी कि लेज से नीचे पता चला जंप मार दे नीचे और लुढ़क के मर जाए. Even now, Satari is still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get... Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matra right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. तेरे को लगता है स्कारलेट किंग वापस आया होगा इसमें इस कट सीन में? You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I भाई should इसको be क्या हो रहा ashamed है? for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, क्या हो रहा है why इसको? haven't you gone home? इसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं क्या ये सब? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of मैं ये it, कर चुका हूँ मैं guilt always स्पॉइलर comes नहीं back. देगा. अच्छा तो मैं भूल ही गया तू कर लिया कंप्लीट. भाई बहुत लंबा रहेगा लगता है ये क्वेस्ट. अभी तो मैं इस पे ही पहुंचा हूँ. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. इस क्वेस्ट के बाद राइट अवे साइनो का क्वेस्ट करना. उसमें कंटिन्यूएशन का स्कारलेट किंग की लोर. That means I should finish my Archon quest. After that I need to finish Sino's story quest ताकि स्कारलेट किंग की लोर रहेगी वहाँ पे. ऐसा
लेकिन I've बहुत लंबा है actually Archon never तो। believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the Sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. An outcast that are even sages are wary of. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? तूने खत्म कैसे कर दिया बे एक दिन में दोनों क्वेस्ट? कितना लंबा खेला है तूने? एक दिन में दोनों कैसे खत्म कर दिए तूने सोसी? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only एक दिन में नहीं suggesting this किया भाई. location because कितना it'll दिन draw लगे? more scrutiny 2 for दिन me में to किया leave the है? Academia again. 2 दिन भी It'll be टाइम safest for me to कम distract टाइम the है. guards long enough to hand 2 you the दिन में तूने अर्कॉन documents. क्वेस्ट खत्म कर दिया और साइनो का क्वेस्ट भी खत्म कर दिया. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. She's the one. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Actually 3 days नहीं बे 2 दिन में किया ना. 3 दिन कहाँ से हो जाएंगे? परसों ही तो आया है. परसों बोल रहा हूँ. हाँ परसों ही आया है अर्कॉन क्वेस्ट तो 2 ही दिन में किया ना. परसों तो तूने स्टार्ट भी नहीं किया था. तूने बोला था. रात में भेजना था क्या? 1 सेकंड को कितने बजे बोले यार? फॉलोइंग डे 19 to 24. ओके रात के 9 से या 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है टाइम सेट. हाँ तो 2 दिन भी तो बहुत कम टाइम है. तूने साइनो का स्टोरी क्वेस्ट तूने तेरा क्या कहते हैं आर्कॉन क्वेस्ट दोनों खत्म कर दिया 2 दिन में. Oh, you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance देखा that the डिस्कॉर्ड. हाँ Nina देखा Trinity मैंने. is just a हार देख. trap. मैं अभी और देखूंगा क्या करना है मुझे. मैंने तो विषय सेव कर लिए हैं. जैसे ही लगेगा तो उस दिन मैं पुल करूंगा फिर उसको.
इतने पेशेंस के साथ मैंने क्या कहते हैं 3 दिन से कलेक्ट कर रहा हूँ विशेस और लाइक इवेंट्स का फार्मिंग की है, तो अब वो ऐसी जगह डालना है जहाँ पे फ्रूटफुल हो। एंड मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि अभी क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, भूल गया नाम याद क्यों नहीं आता बे, क्या हो रहा है मेरे दिमाग को। ये कब बैनर पे ऐड होगी, स्टैंडर्ड बैनर पे, मेरे को अब यही सोच रहा हूँ मैं। उसका मेरे को पुल निकालना है, मेरे पास पता है मैं अभी 3 कॉपीज निकाल सकता हूँ किसी भी एक कैरेक्टर की, किसी भी कैरेक्टर की 3 कॉपीज निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि लाइक वो आ जाए तो फिर मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँ कि कितनी कॉपीज किसकी निकालनी है। लेन इज इम्पोर्टेंट एंड साकी टू सेव फॉर देम। या आई नो, बट देखेंगे टीम को जो जचेगा उस हिसाब से लेंगे। If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. Since you have Frigg, you will need these two. Frigg तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं रखी हुई है वैसे की वैसे ही, निकालता ही नहीं हूँ। The academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think मैं यूजुअली पता है डोमेन में भी जाता हूँ ना, वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है बोल्ट का फिर भी लेके जाता हूँ वोल्ट टीम। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फ्रिगेट के बारे में सोचता भी नहीं हूँ मैं इतना। If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली, पक्का बता रहा हूँ मैं। As long as you're here with us, Paimon feels a little safer. पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे, मुझे डाउट लग रहा है, बिकॉज कोई भी नहीं है आसपास, मतलब लोग बहुत कम है। वहाँ पे लोग हैं बट यहाँ पे कहीं पे भी लोग नहीं है इस रास्ते पे। समथिंग इज रॉन्ग हियर। There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. इवन विक्टर खड़े खड़े सो रहा है, विक्टर खड़े खड़े सो रहा है, बताओ। कैन आई गो फ्रॉम हियर? नहीं जा सकते। जाओ बेटा, टेलीपोर्ट ही करेंगे हम, आलसी इंसान है, हम नहीं जाएंगे घूम फिर के। वाह भाई, जाने नहीं दे रहा भाई, ये सही गेम है भाई। बोल रहा प्रायोरिटी क्वेस्ट खत्म करो, नहीं जा पाओगे नहीं तो आगे तुम। भाई ये भूल भुलैया क्यों है सुमेरु सिटी इतनी ज्यादा? आया कट सीन आया। What are all these people doing here at this hour of the night? Something is wrong here. Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. Ditore. The outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. The second of the 11 Padui. Harbinger. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them?
I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. ये क्या असली सबको सुला दी क्या? भाई सोच ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर बनाए कि बेंचो स्पाइरल अबिस में जाओ तुम स्किल इस्तेमाल करो तो सारे एनिमी सो जाएं थोड़ी देर के लिए. कितना सही रहेगा. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. ओ भाई Dittori. The second of 11 Fatui Harbinger. इन्होंने डायरेक्ट स्किप कर दिया है क्या? Paimon needs to catch her breath first. इन्होंने डायरेक्टली स्किप कर दिया है. लाइक वी वर एट 9th and 11th Fatui Harbinger जो कि सेनियोरा एंड चाइल्ड थे. इन्होंने डायरेक्टली स्किप करके क्या कहते हैं सेकंड Fatui Harbinger पे ले आए हैं. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. We underestimated the scale of the problem. We underestimated the number of parties involved. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? Let's find someone else who might be involved. You mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Wait, what? I didn't know that ये लोग टाइनारी को इन्वॉल्व करेंगे इसमें. I thought साइनो या फिर अलहाइतम वगैरह इन्वॉल्व होंगे स्टोरी में, बट इन्होंने डायरेक्टली टाइनारी को वो कर दिया है, इन्वॉल्व कर लिया है. सही है ये अभी. That was unexpected. गंधारवा वेल जाना है अभी. गंधारवा वेल कहाँ साइड था? ऊपर साइड था आई थिंक. नहीं, नीचे साइड था.
भाई कहाँ चला गया क्वेस्ट ही गायब हो गया. Character is currently involved in another story quest. That actually hurts. Now I have to complete this one. Now I have to complete this story quest first in order to complete Archon quest. ये गलत बात है. Can I not just close the story quest for Tainari for the time being? I mean, गलती कर दी मैंने वो लेके उसको एक्सेप्ट करके पाया अभी से. This is where you've been, Tainari? That's... Shh. Keep your voice down. Tainari, everything's spinning. Yara. Am I going to die? Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because Tainari, I heard that people turn into birds after they die. Is that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tainari, is he? Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. Really? Then, can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Tainari is यहाँ सुमीर को डॉक्टर है. वाह, बहुत सही. Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? ये क्वेस्ट खत्म होने को ही है. कौन सा क्वेस्ट? भाई टाइनारी का अभी तक मैंने कैरेक्टर स्टोरी क्वेस्ट स्टार्ट नहीं किया है. कहाँ से खत्म हो जाएगा ससी? इसका खत्म नहीं करूँगा टाइनारी का स्टोरी कैरेक्टर स्टोरी क्वेस्ट तो मैं उसमें प्रोसीड नहीं कर सकता हूँ. आर्कॉन क्वेस्ट में नहीं कर सकता प्रोसीड. ये अभी चालू हुआ है. I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. टाइनारी का क्वेस्ट थोड़ा सा ही बचा है ये बोल रहा हूँ. नहीं बे, अभी तो मैंने छुआ है, स्टार्ट किया टाइनारी का कैरेक्टर स्टोरी क्वेस्ट. कहाँ से टाइनारी का स्टोरी क्वेस्ट क्या कहते हैं खत्म हो जाएगा एकदम से स्टार्ट होते ही सही. ये बोल रहा हूँ मैं. I started feeling dizzy. Could it be? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for... Mr. Forest Watcher, how is my son? I gave him some anti-pyretics. Let him rest here for a while. ओ अच्छा, इसका प्रीक्वल कारकॉन क्वेस्ट था. ओ अच्छा, मतलब इसका प्रीक्वल आर्कॉन क्वेस्ट था. हाँ, तो आर्कॉन क्वेस्ट नहीं प्रोसीड कर सकता जब तक टाइनारी का स्टोरी क्वेस्ट खत्म नहीं करूंगा. सो अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया टाइनारी का स्टोरी क्वेस्ट, then you cannot proceed to the Archon quest until unless you finish that one, since your character is involved here. And अगर तुम इसको खत्म करोगे तब आर्कॉन क्वेस्ट में जा पाओगे. सेम साइनो का सीन है. अगर साइनो का मैंने एक्सेप्ट कर लिया होगा उसका स्टोरी क्वेस्ट, देन अगर साइनो आर्कॉन क्वेस्ट में कहीं भी इन्वॉल्व होगा, देन आई कैन नॉट प्रोसीड टू दी स्टोरी क्वेस्ट फर्दर, आर्कॉन क्वेस्ट फर्दर. तो काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स हैं इसमें आर्कॉन क्वेस्ट में, जो कि नहीं होना चाहिए एक्चुअली. आर्कॉन क्वेस्ट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidya forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. All right.
contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. बोला ना ये खत्म करना पड़ेगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है इसका क्वेस्ट. I have to go to the city again. सिटी से आए थे, सिटी में वापस जा रहे हैं विदाउट आर्कन क्वेस्ट के. Excuse me, I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? मेरा नया स्टोरी क्वेस्ट बचा है बहुत लंबा. करो करो शशि, मेरे से पहले खत्म कर लोगे, चिंता मत करो तुम. मैं आर्कॉन क्वेस्ट और क्या कहते हैं स्टोरी क्वेस्ट भी नहीं खत्म कर पाऊंगा. मेरे से पहले तुम अरानारा क्वेस्ट खत्म कर दोगे, इतना मुझे पता है. I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up. All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Oh yes, अच्छा story है, I remember. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical... How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, there weren't any people. No people? Even if I tell you, you might not believe me. Oh, fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab. What? Mechanical crab? इसकी बात कर रहा है क्या ये mechanical वाले creatures की बात कर रहा है. What the heck? The Avidya forest has creatures like that? To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be. क्या हो गया? लोड क्यों? आप क्यों लोडिंग का साइन बना रहा है? अभी तो स्ट्रीम सही चल रही है ना? It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. All right. We'll go and... Akras. ये कैसा नाम है Akras? After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. Gather information, okay.
I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. Mechanical crab? You haven't ऐसा कैसे हो tried सकता है? capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. ये मैकेनिकल क्रैब उसकी बात तो नहीं कर रहा है ये? अरनारास की बात तो नहीं कर रहा है ये कहीं? Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. Okay. That mechanical crab is fast, strong, and a pain to deal with. 10 of us might not even be able to take that thing head on. Didn't the academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? भाई मैकेनिकल क्रैब पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ गेम में कब से मैकेनिकल क्रैब आ गया है? पक्का कुछ गड़बड़ है, कुछ तो मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे। How are things? Did you make any progress? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. अरनारा को एडल्ट्स नहीं देख ही नहीं सकते, ये बात भी है। ये बात भी है, नॉर्मल पीपल तो देख ही नहीं सकते अरनारा को। तो कौन क्या लेके जा रहा भाई इतनी जल्दी? If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you? Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and sumpter beast to polish the transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry, we're professional. I think फोटो लगेगी, कैमरा लगेगा मुझे। हाँ, कैमरा इक्विप्ड है, ऑलरेडी इक्विप करके दिया है इन्होंने। थम्स्टर बीस्ट कहाँ है जिसको लेके जाना था हमको? मेरे को भी जानना है भाई, कौन है ये? कौन है ये मैकेनिकल बीस्ट? मेरे को भी जानने को मांगता है। ओ भाई, अभी गिर के मरती मेरी राइडन, पता है? मेरे को देखा ही नहीं मैंने इसको। इसका स्टैमिना खत्म हो गया है। Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter, the goods were likely stolen somewhere around here. Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay.
We'll start from here and have the Sumpter Beast with the components on board lead the way. This Sumpter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. The Sumpter Beast went ahead. Let's keep up with it. Huh? Why'd it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen, so they probably didn't feed their animals as scheduled. Let's give it something to eat. क्या दूं बे? Fish? भाई फीड कैसे करना है? क्या देना है इसको फीड करने के लिए? फ्लावर? फ्लावर खाएगा? Tannery is busy completing quest of gaze from certain god. भाई ये सही है. ये देखो सजी, ये देखो अभी मैं यहाँ पे टैनरी का क्वेस्ट चालू किया तो वापस से मुझे फेंक दिया आर्कॉन क्वेस्ट करने के लिए, और अब यहाँ वापस से बोल रहा है कि जब तक वो नहीं कंप्लीट करोगे तब तक ये कंप्लीट नहीं कर सकते तुम. यू हैव टू कंप्लीट दैट पार्ट, दैट वन. ये सही है वेंचोद, ये कर लो तुम, इधर से उधर जंप करा लो तब से हमको हैं. ये क्या था वेंचोद? अब वेंचोद आराना क्वेस्ट करने के लिए वापस से गंधर्व बेल जाओ इनके लिए. ये क्या चल रहा है? मजाक कर रहे हैं भाई. डेंड्रो मार तो सही उस पे. हाँ वो मेरे को मारने दौड़ेगा, मरवाने के लिए बोल रहा है ना मेरे को. समझ रहा हूँ मैं तेरी सारी टैक्टिक ससी. बट उसने मेरे को वापस यहाँ पे क्या कहते हैं आर्कॉन क्वेस्ट में भेज दिया. अब उसका क्या कहते हैं टाइनारी का क्वेस्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते हम. मेरा मिक्स पूरा पता है वो बन रहा है, हलवा बन रहा है. क्या कहते हैं आर्कॉन क्वेस्ट और टाइनारी के क्वेस्ट का डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा. ये कौन सा किसका है? A blonde-haired traveler and a floating ferry. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Hello Bloxy Strix, welcome to the stream. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. अरे नहीं सीरियस बोल रहा था. The Outcast? An outcast from the Academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! ये मरेंगे मेरे हाथ से, सबके सब मरेंगे. ये बड़े होशियार बन रहे हैं मेरे से. आओ बे तुम्हारा टकला बजाते हैं. आओ तुम्हारा New punching bag. Too easy. Grant us your... I will have order. आओ तुम्हारा टकला बजाते हैं बे, इधर आओ. Going in. कहाँ गए? इधर आओ. वहाँ कहाँ घूम रहे हो? Shine down. आजा इधर 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 इधर. Inazuma shines eternal. It isn't over yet. Here comes reinforcements. मार. Pin them down. Hear my prayer. Too easy. मारना. Take that.
probably won't be long before we see more of them. Yeah, looks like we'll have. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tainari? Going up against smart people is tough. Anyway. Let's keep going. अगर मैं इस साइड से आया हूँ, अगर मैं क्या कहते हैं गंधारवा वेल को दूसरे साइड से अप्रोच करता, क्या मुझे एम्बुस उस साइड मिलता? अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, गेम वालों ने तो मुझे इस साइड से भेजा है चलो अभी के लिए, लेकिन अगर मैं ये वाले टेलीपोर्टर से गंधारवा वेल जाता तो क्या मुझे यहाँ पे अभी ये मिलता है, यहाँ पे एम्बुस मिलता है यहाँ पे? अरे कोले खड़ी है यहाँ पे. Oh, it's the traveler in Paimon. What are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Hello graduate gamer, welcome to the stream. क्या हाल चाल है डाउन गेमर? It seems that curing Irman's soul is our only chance. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? भाई कुछ और भी खेल लिया कर. खेल लेंगे, उसमें क्या है? PUBG जब खेलता था तब तो कुछ नहीं बोलता था तू कि और कुछ और खेल ले. जब होगा कुछ खेलने के लिए तो खेल लेंगे हम उस दिन कुछ और. He was headed to Party's DI. He left? What? Isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia forest? He even turned down the sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I guess he had something urgent to take care of. पक्का यहाँ पे टाइनारी को भी बंदी बना के रख लिया गया अंदर. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis DI is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Party's DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Please take care of yourself, Kole. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. Go to Paradise Dahai. ये कहाँ पे है? ओके यहाँ पे है. ये वाली लोकेशन पहली बार जा रहा हूँ. आई थिंक दूसरी या तीसरी बार जा रहा हूँ. ऐसे घूमते फिरते गया हूँ. बाकी यहाँ पे कभी नहीं आया ऐसे कभी इम्पोर्टेंट काम से. Goodness, you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds.
Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Whew. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ugh. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. यहाँ पे भी काफी अरमाइट्स घूम रहे हैं. ओ बाइजू नहीं, हफीशिया. मेरे को लगा बाइजो है, कहाँ से आ गया यहाँ पे. पीछे से बाल ग्रीन ग्रीन लगे ना, तो बाइजू लगा मेरे को थोड़ी देर के लिए. Traveler? It is you! The voice! It's Hypatia! What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life. Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it? Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. ये क्या कर रही है? कांप क्यों रही है? That sounds incredible! Actually, we are here for Tainari. We are in a hurry. Let's chat about this next time. Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Okay. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये इसका भी माइंड टेक ओवर किया है. Okay. Ready?
It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. Electro symbol? The first to betray me was a god. My creator. My mother. Raiden's Hogan. So this must be... Valuing strength above all. She saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. ओके तो इसके पास इलेक्ट्रो आर्कॉन का नोसिस है और इसको नोसिस चाहिए था. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What? Wait, what? Scaramouche? What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Such a noble will. Such sublime emotion. स्कारामुश के पास तो इलेक्ट्रोजेनोसिस है ना, ये तो बहुत पहले से पता है. हाँ ये बात तो पता है, लेकिन वो हमेशा से वो जेनोसिस चाहता था. एंड नाउ लाइक सजनाया को वो नोसिस चाहिए है इलेक्ट्रो आर्कॉन का, लेकिन आई थिंक दैट्स वाई. लेकिन ये क्या कहते हैं, स्कारामुश देना नहीं चाहता है उनको वो जेनोसिस. तो पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे घपला होने वाला है इनके बीच में, क्या कहते हैं, सजनाया और स्कारामुश के बीच में. ये पक्का है, बट वो यहाँ पे होगा या आगे होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता. एंड ट्रेलर में हमने देखा था कि वो रोबोट के अंदर था स्कारामुश, तो वो भी एक मतलब क्वेश्चनेबल है कि लाइक इज द डॉक्टर इन्वॉल्व इन दैट रोबोट थिंग. तो वो क्वेश्चनेबल है थोड़ा सा यहाँ पे. मुझे सेकंड वाला समझ में नहीं आया. उसने बोला जो उसका फ्रेंड था जो स्वॉर्ड स्मिथ था, उसने उसको कैसे बिट्रे किया था. हाँ नोसिस, हाँ जिनोसिस नहीं होता, नोसिस होता है. तो उसमें उसके मेरे को समझ में नहीं आया. सेकंड कट सीन में उसने बोला कि उसका फ्रेंड जो था जो स्वॉर्ड स्मिथ था उसने कैसे बिट्रे किया उसको. लास्ट वाला तो समझ में आया कि लाइक वो लड़का मर गया और उसके बाद उसने घर जला दिया बिकॉज ही वांटेड टू लाइक गेट रिड ऑफ दोज फीलिंग्स. फर्स्ट वाला भी समझ में आया, सेकंड वाला समझ में नहीं आया मुझे. ब्लेड स्मिथ ने कैसे उसको लाइक बिट्रे किया. Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be.
वो याद नहीं मेरे को, आई थिंक वो राइडन गोकुडन का पार्ट था। वहाँ एक बिट्रेयल का स्टोरी थी, एक गोकुडन मेंबर ने दूसरे को बिट्रे किया था। हाँ लेकिन वो ब्लेड स्मिथ, वो तो ब्लेड स्मिथ ने ब्लेड स्मिथ की फैमिली को बिट्रे, मतलब ब्लेड स्मिथ को बिट्रे किया था। हाउ इज स्कारामुश इन्वॉल्व देयर? स्कारामुश ने जस्ट क्या कहते हैं, स्कारामुश ने तो जस्ट इसके क्या कहते हैं काजुआरा के पापा को मारा था। दैट मीन्स काजुआ के पापा इन्वॉल्व हैं इसमें क्या कहते हैं, इस क्या कहते हैं इस स्टोरी में। काजुआ के पापा इन्वॉल्व हैं ये, वो ब्लेड स्मिथ एक्चुअली काजुआ के पापा ही थे, ग्रैंडफादर थे, सॉरी पापा भी नहीं, ग्रैंडफादर थे, जो कि इस स्टोरी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन हाउ डज ही बिट्रेड ये क्या कहते हैं इसको, स्कारामुश को कैसे बिट्रे किया, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी भी। सेकंड वाला लॉजिक ही नहीं बन रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. They are coming to attack us. ओह कॉम्बैट देख रहे हो कैरेक्टर का। डोंट टेल मी मर गई है। ओके तो कॉन्शियसनेस वो हो गई है, स्वैप हो गई है। एंड वेट, आई सी यू। ओ ये वाला कट सीन था रोबोट के अंदर क्या कहते हैं स्कारामुश का। हाँ ठोक पिटा सकते थे। नहीं अब समझ में आया, पता लॉजिक क्या है? हैं? वेट, टाइनारी भाग रहा है, पाइमन भाग रही है। We finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back. वेट, अब ये वो है आर्कॉन क्वेस्ट चल रहा है राहुल, तुमने अभी आई थिंक पहुंचे नहीं हो यहाँ पे। तो अब समझ में आया पता क्या सीन है शशि। तो बेसिकली जो वहां पे कैप्सूल के अंदर नहीडा थी, वो कैप्सूल बेसिकली जिनोसिस है एंड उसका मतलब उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो नहीडा है। और नहीडा एक्चुअली पता नहीं उस नोशिस, चूंकि वो सिस्टम से कनेक्टेड है, आकाश से कनेक्टेड है, दैट्स वाई क्या कहते हैं नहीडा जो है अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर पा रही थी। एंड उसको पूरे सिस्टम को मतलब मॉनिटर कर रहे हैं फटुइज, एंड फटुइज का साथ दे रहे हैं ये ग्रैंड सेज वगैरह। अब ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है। एंड दैट्स व्हाट क्या कहते हैं ट्रैवलर ने देखा, जब उनकी क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस एक दूसरे से स्वैप हो गई। जैसे ही उन्होंने टच किया ना, कॉन्शियसनेस एक दूसरे से स्वैप हुई, तो ट्रैवलर की कॉन्शियसनेस वहां चली गई, इसकी यहाँ आ गई थी नाइडा की। तो ट्रैवलर ने ये सब देख लिया है, अब आई थिंक बचाने के लिए जाना है वहां पे हमको। हेलो सौरभ, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल है लौंडे? बढ़िया हाल चाल है सौरभ। चुम्मी तो सूजा भाई एंड एवरीवन। नो चुम्मी नॉट टू मी, बाकी एवरीवन को देना हो तो दे दो सौरभ। Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now?
I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. इसको अभी तक आइडिया नहीं कि नहीडा एक्चुअली क्या कहते हैं डेंड्रो आर्कॉन है। भाई इतनी देर तक इस नहीडा के साथ रह लिया टैनारी तूने, तेरे को अभी तक आइडिया नहीं लगा कि वो क्या कहते हैं डेंड्रो आर्कॉन है? हद हो गई है। Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahita's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. In a code that only we know. We can't let doctor figure out what we are up to. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Moon refers to as Nahida herself. Starlight refers to the people of desert. Illusion lies refers to the academia's plan. Oh, that makes a lot of sense. Huh, but she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who is occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? इसको इतनी देर बाद समझ में आया, इतना लंबा बात करने के बाद समझ में आया कि एक्चुअली डेंड्रो आर्कॉन है। Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. I think I know what project is about. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Academia is turning the Balladeer into a god. What? Balladeer को god बना रहे हैं। And मेरे को अभी ये भी समझ में नहीं आया, वैलिडियर के पीछे मतलब जब रोबोट के अंदर था तो वैलिडियर के पीछे भाई वो वायर्स क्यों कनेक्टेड थी? इतनी मोटी मोटी वायर उसके पीठ में जाके कनेक्टेड थी वैलिडियर के। भाई स्विच प्लग ही बना दिया भाई, उसी से पावर चार्ज कर रहे हैं वो पूरे उसको रोबोट को। What? Do you have any evidence? I saw new nascent god under construction. You described what you saw when you exchanged consciousness with Nahida. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Doomed to a life of exile at Aru Now that village. you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. But who is may have fanned flames? The doctor and the
Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Let's head to desert for now. We must stop them no matter what. अच्छा ये बताओ अभी स्टोरी का आर्कॉन क्वेस्ट पूरा खत्म हो गया है या फिर स्टिल अभी बाकी है कि अभी 3.3 में या 3.2 में अगला आर्कॉन क्वेस्ट का बाकी का पार्ट आएगा, ऐसा कुछ है क्या अभी सीन? We must stop them no matter what. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tighnari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tighnari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. God gazes back. Finally, अब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ यहाँ से. आर्कॉन क्वेस्ट तो आगे और आएगा, खत्म थोड़ी ना हुआ है. सुमेरु का स्टोरी अर्मनसोल को फिक्स करने से होना चाहिए. नहीं वही बोल रहा हूँ, ये क्या कहते हैं डेंड्रो आर्कॉन से रिलेटेड पूरा मतलब स्टोरी क्वेस्ट खत्म हो गया है या अभी बचा है मुझे ये जानना है सिर्फ ऐसा हो सकता है कि अभी चूंकि मैंने सुना वीकली बॉस नहीं आया है, that means there are chances. Finally made it to Caravan Rabat. It's pretty lively here. There are chances कि 3.2 या 3.3 में वीकली बॉस आ सकता है नया. सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, इसलिए उस हिसाब से नेक्स्ट वर्जन में आएगा पक्के से. हाँ मुझे भी लग रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ अभी खत्म वीकली बॉस आया नहीं है, दैट मीन्स स्टोरी खत्म नहीं हुई. वीकली बॉस तभी आएगा जब स्टोरी क्या कहते हैं खत्म होगी या स्टोरी का एंड होगा, और अभी तक दिया नहीं है इन्होंने किसी के लिए, दैट मीन्स मुझे लगता है अभी आया नहीं होगा. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? स्कारामुश का रिडेम्पशन आर्क लग रहा है मुझे आएगा. कोई भी प्लेबल यूनिट प्योर इवल नहीं होता. अलहाइतम आ गया. वेट व्हाट? स्कारामुश का रिडेम्पशन आर्क का मुझे लगेगा कोई भी प्लेबल यूनिट इतना प्योर इवल नहीं होता है. कैसे नहीं हो सकता है बे ससे? दे कैन डू एनीथिंग, यू नो. आफ्टर ऑल क्या कहते हैं फटुइज अस्कारामुश तो हमेशा से इविल था ससी. तो अगर ढंग से देखे तो जब मतलब वो पिछले बार जब मोना के साथ जो इवेंट हुआ था उसमें भी स्कारामुश इविल था, इसमें भी स्कारामुश इविल है. तो मुझे लगता है और पहले भी था इविल, तो हो सकता है. और लोग चूंकि फटुइज को खेलना चाहते हैं, चाइल्ड फिर भी नहीं था उतना, लेकिन आई थिंक ये स्कारामुश और बाकी फटुइज जो आने वाले हैं फिर भी काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट में है. सो पीपल वांट टू एक्चुअली want to play these characters, so they can do anything about that because people spend करेंगे money उस चीज पे. Huh? Over here. Oh, Haytham went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. अलहाइतम देख, तेरे से तेज भाग सकता है ट्रैवलर. कितना स्लो भागता है ये देख, तेरे से तेजी से भागता है ये ट्रैवलर मेरा. ये देख. मैं तो बस स्पेक्यूलेट कर रहा. नहीं हो सकता है इविल कर सकते हैं. What the? Where did she go? भाई अरमाइट्स मुझे ही मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई? How did we lose them? They were just here a second ago.
More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last Alhaitham time we met Dendro at hai. Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. Did you participate in Sage's big project? I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? It must be because I was so shocked to hear those words again. World, forget me. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like... It's always better to travel with someone you know. Let's go! मैं तो यहाँ से टेलीपोर्ट करके पहुँच जाऊँगा। इसके साथ जाना क्यों है मेरे को? मैं टेलीपोर्ट करके जाएगा इसके साथ क्यों जाएगा? ओ लोडिंग स्क्रीन चेंज की है, मैंने नोटिस नहीं किया। लोडिंग स्क्रीन चेंज हुई है थोड़ी सी। Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Something was there. Whoa, 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 whoa. भाई ऐसी फाइटिंग स्टाइल क्यों नहीं रहती लोगों की? भाई जब हम लेते हैं अमर। Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath?
भाई भाई इतना ज्यादा एक्शन कभी हमको क्यों नहीं मिलता? हम कैरेक्टर जब निकालते हैं तो इसके लिए इतनी टट्टी टट्टी क्यों निकलती हैं उनकी? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. मैं बता रहा है, अगर ये मेरे से लड़ने आया ना, कसम से मैं राइडन सोगन इसके ऊपर छोड़ देगा। फिर कर लेना, तेरे को बोलना कि मेरे रैत से तू बच नहीं सकता है, बच नहीं सकते हो बोल रहा है जो। मैं इसके ऊपर राइडन सोगन छोड़ देगा, फिर बाद में रोएगा बैठ के ये साइनो। Seemed to me more like your own personal touch. अच्छा, साइनो का क्वेस्ट स्टार्ट, साइनो का क्वेस्ट नहीं, आर्कॉन क्वेस्ट ही चल रहा है ना अभी तो। ये भी साइनो का क्वेस्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. I don't trust him as much as you seems to think. That doesn't mean I'm going to stand by and do nothing. Has Alhaitham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. देखना क्वेस्ट में क्या देखना है? Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Yes, I know quest है या नहीडा का आर्कॉन क्वेस्ट ही चल रहा है या नहीं? ये अभी आर्कॉन क्वेस्ट ही चल रहा है। शशि क्या बात कर रहा है? नहीडा कहाँ, उसका कहाँ से आ जाएगा साइनो का क्वेस्ट? मैं तो आर्कॉन क्वेस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two! Ugh. What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? हर एक कोई ना कोई आते ही जा रहा है। क्या चल रहा है? Finally, someone that we can trust. You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again. Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Neither of them can afford to
A photo distracted by Dia. Hey, did either of you hear a word I just said? वेट विंड कहाँ से आ गई? ये क्या हो रहा है? विंड भाई रेत कहाँ से उड़ने लगी? क्यों उड़ रही है? What's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. दिया एक 4 स्टार होके 2 5 स्टार को धमका रही है. I mean, कौन सी बड़ी बात है शशि? कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? भाई 4 स्टार ही लीडर निकलते हैं हर जगह के. चिंता क्यों कर रहे हो? 4 स्टार लीडर निकलते हैं हर जगह के. बिडो को देखो, बिडो अपनी सिप की लीडर है. ये क्या कहते हैं, उसको देख ले, क्या कहते हैं, सिंगशो अपने क्या कहते हैं गिल्ड की लीडर है. बैनेट खुद के क्या कहते हैं एडवेंचर टीम का लीडर है. निकलते हैं भाई 4 स्टार लीडर निकलते हैं खुद के. That sounded like Candice. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. बिडो काजुआ को धमका के रखती है. हाँ. ओ, ऐसा ही है भाई, यही जिंदगी है. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candice, protector of Aru village. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candice. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. अभी ये कैंडिस ही भी धमका देती है इन दोनों को. और क्या भाई, कैंडिस भी धमका देती है 4 स्टार होके. देखना कैंडिस तो खुद लीडर है भाई विलेज की, आरू विलेज की. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candice's character. अबे तीनों को धमका दिया वे ससी उसने. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candice. That's what I like to hear. देखना तीनों को धमका दिया बैठ Which of you will के. begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. चारों को ट्रैवलर को नहीं धमकाया, ऐसा नहीं बोल सकते ससी. चारों को नहीं धमकाया. While all Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather,
I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." What? So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the Academia of today. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I कल will याद है ना? administer judgment by my own name. कल किस चीज़ का याद है स्प्रैगर? मैं भूल गया। किस चीज़ की बात कर रहा है? Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. अच्छा माइनक्राफ्ट देखेंगे फ्रैगर, हम बता देंगे। मैं तुमको बता दूंगा क्या सीन है कल का। मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, तो इसी वजह से ऐसा गेम खेल रहा हूँ कि जो थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरा को एक बंदे को बोला कि वो वैलोरेंट खेलना है, लेकिन खेल नहीं पा रहा बिकॉज इंटरनेट तीन चार दिन से सही से चल नहीं रहा है। मेरा बीच बीच में कट ऑफ हो जा रही है स्ट्रीम, मेरी कर ही नहीं पा रहा ढंग से स्ट्रीम। माइनक्राफ्ट में ही परेशान करेगा, वो तुरंत बाहर फेंक देगा मुझे, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा, फिर बता दूंगा मैं तेरे को। From the very beginning, Alhaitham was. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Alhaitham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the और lead बताओ of the कैसी चल रही है divine जिंदगी? knowledge बढ़िया चल रही है? capsule. तुम बताओ In the स्ट्राइकर, end, तुम्हारी I कैसे चल रही realized है? my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ainul Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane?
I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormuz for you to appear so they wouldn't suspect anything. हाँ खुश है, बहुत खुश है, क्या बात है फ्रैगर, इतना खुश क्यों है तू? So it came as quite a Doubt हो रहा है? surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. कुछ नहीं है, ऐसा ही. और अभी क्या चल रहा है? लाइक कुछ न्यूज़ है BGMI की कि BGMI कब आ रहा है, कब मतलब रिलीज कर रहे हैं? मैंने सुना BGMI 2 आ रहा है करके कुछ, और क्या कहते हैं सर्वर बंद हो गए हैं गेम के, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है. कल नहीं खेलोगे तो चलेगा माइनक्राफ्ट, देखते हैं फ्रैगर, मैं बता दूंगा तुमको, चिंता मत करो, मैं तुमको बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Mm-hmm. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. पता नहीं, देखते हैं, दिसंबर के बाद आएगा ऐसा बोल रहे हैं, देवता नहीं, देखते हैं. चलो कोई नहीं. Oh, sorry. और मैंने सुना है बहुत सारे स्ट्रीमर लाइक पबजी, so कोरियन boring that पबजी I क्या कहते spaced हैं, out. पबजी ग्लोबल चालू करें खेलना, मैंने सुना है, स्विच कर लिया उन्होंने गेम अभी के लिए. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here, but then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case... हाँ काफी लोग welcome गए back, हैं कि dear. यार पबजी खेलने. ऐसा क्यों? पबजी ग्लोबल तो है ना, अभी भी सर्वर चल रहे हैं, तो पबजी केयर खेलने क्यों गए हैं? That's more like it. I missed you all so much, Candice. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Because of new update. New update? अभी अच्छा कोई नया अपडेट आया है क्या? तो तूने ट्राई किया, तूने फ्रैगर खेल के? Yeah, just leave him to Candice. बोर हो गए एक ही अपडेट खेल खेल के. The winds died down. I mean, The sandstorm's over, right? सर्वर अपडेट नहीं, सर्वर अपडेट कर सकते हैं वो लोग, गेम अपडेट नहीं आ पाएगा, बस यही प्रॉब्लम रहेगी. सर्वर अपडेट वो लोग कर सकते हैं, लाइक इंटरनल गेम फाइल डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हैं, भले ही ऐप स्टोर पे ऐप का अपडेट का ऑप्शन आते हैं तो. Candice still isn't back क्योंकि yet. सर्वर ऑन है ना अभी भी तो. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go.
We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. भाई घर तो सही है, ओल्ड स्टाइल का घर है भाई, फुल ब्रिक्स के साथ बनाया हुआ है। घर तो सही है, छोटा सा घर है, सोने रहने हर तरफ जगह है, हर चीज की जगह है यहाँ पे इतने से घर में। मैंने ट्राई नहीं किया है, एक बार देख तो कौन सा क्वेस्ट चल रहा है। अच्छा देखता हूँ, एक सेकंड रुको। आर्कॉन क्वेस्ट चल रहा है। सी तेरे को कंफर्म ही नहीं है कि आर्कॉन क्वेस्ट चल रहा है। ऐसे ही आर्कॉन क्वेस्ट पे ही देख, आर्कॉन क्वेस्ट पे ही मार के अभी भी वो यहाँ पे है, बैलेड एंड ब्रू वाला, ये वाला वो है, इवेंट का है। एंड मैंने अभी इसका स्टोरी क्वेस्ट अनलॉक नहीं किया है। सी अभी भी ये कंप्लीटेड नहीं है, क्योंकि प्री रिक्वेस्टेड कंप्लीट करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। सो आई कैन नॉट अनलॉक दिस गाय साइनोज स्टोरी क्वेस्ट। साइनो का स्टोरी क्वेस्ट कैसे हो सकता है? मैं तो बीजीएमआई पे रैंक पुश करके कर रहा, इसलिए केआर में नहीं गया। टॉप 100 लीडर वोट्स में हूँ। सही है रैगर, सही है, टॉप 100 में घूम रहा है। तो अभी भी टाइटल वगैरह मिलते हैं कि लाइक बंद कर दिया उन्होंने टाइटल देना? वेट, साइनो का स्टोरी क्वेस्ट का नाम पढ़ ना जरा। नहीं है ना, साइनो का स्टोरी क्वेस्ट है ही नहीं। साइनो का स्टोरी क्वेस्ट यहाँ पे है। तो पागल हो रखा है क्या? क्या बोल रहा है? इसमें लिखा है कंप्लीट प्री रिक्विजिट क्वेस्ट चैप्टर 3 एक्ट 5 एक्ट 4 आई थिंक, नहीं एक्ट 6, हाँ एक्ट 4 होगा। किंग दशरथ एंड 3 मैगी। ये कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक ये खुलेगा नहीं। लूपस ऑरस चैप्टर एक्ट 1 होगा, उसका टाइटल नहीं है। नहीं मिलता ऐसा कुछ। अच्छा, आई थॉट लीडर बोर्ड में टॉप 100 आने में मिलता है। एक्ट 4 है साइनो का क्वेस्ट, अभी एक्ट 3 चल रहा है। देखा तुम्हें? ल्यूपस ऑरस चैप्टर 1 है लिखा उसमें। एंड आई थिंक हैंगआउट इवेंट भी होगा यहाँ पे। सी मैंने बहुत सारे अभी हैंगआउट इवेंट कंप्लीट नहीं किए हैं। हाइजो का नहीं किया है अभी, निंगवांग का नहीं है मेरा कंप्लीट, इसका नहीं हुआ है, चोंगयुन का अभी तक नहीं किया है। एंड आई एम नॉट श्योर उसका क्यों नहीं आया है। आई थॉट कि इसका हैंगआउट इवेंट आना चाहिए था कैंडिस का। एंड व्हाई द फक देयर आर डॉग्स हियर? यारकॉन क्वेस्ट के बाद स्टार्ट हो गया था अपने आप, मुझे भी पता भी नहीं लगा ये कंप्लीट हो गया। लीडर बोर्ड में 98 हैकर है सिर्फ, मेरे को और मेरे टीममेट को छोड़ के। तुमको ऐसा कैसे पता हैकर की लीडर बोर्ड में लाइक? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. भाई हमको डिया खेलने मिलेगी क्या? I'll be sure to put on a good show. Let's go. ओ अच्छा, इसका नाम लूपस ऑरस चैप्टर 1 है। सबकी आईडी देखो, सारे हैकर हैं। सबकी आईडी देखी, सारे हैकर हैं। हो सकता है, क्या पता, मुझे आइडिया नहीं है भाई। Solidify. They are supposed to give us. We shall prevail. Teamwork is strength. भाई इसने तो अकेले खा लिया। साला गायब कर हो गया। Here comes another wave. When are they ever gonna let up? They are supposed to give us a trial characters for that. Pin them down. Illusion shattered. भाई मैंने तो
कोकोमी निकाली नहीं बेंचो, खा जाएंगे तो सबको। हील तो कोई कर ही नहीं रहा है। भाई कितना टैंकी है ये। The creature stopped appearing. Was that the last of it? I thought this would give like ये पहली बार है कि लाइक कट सीन में कोई कैरेक्टर जा रहा है फाइट करने और हमारा ट्रैवलर भी फाइट कर रहा है और उन्हें वो क्या कहते हैं कैरेक्टर ट्रायल के लिए नहीं दिया है। पहली बार है। आई थिंक ये नहीं देंगे जब तक क्या कहते हैं डीआ रिलीज नहीं हो जाएगी और तब कोई खेलेगा ये कट सीन तो उस टाइम डीआ ये मिलेगी उनको खेलने के लिए। What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. पहली बार नहीं है कैसे किस वाले ऐसे और कौन सा कट सीन है जिसमें नहीं आया है? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Uncle what? Uncle Anpu? याद नहीं but हाँ ऐसा कट सीन। It's pleasure to meet you. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. याद नहीं बड़ा है ऐसा कट सीन। Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candice? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace, but no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. That's why this is a great opportunity to watch him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Wait, what? अभी उन्होंने बोला कि आरू विलेज में एक भी गार्ड नहीं है. Why can't I see any guards around here? And यहाँ पे देखो आरू विलेज गार्ड आ गया है. ये सही है बहनचोद.
ये मजाक चल रहा है यहाँ तो गेम में। मेरी एचपी देख, सबकी खाली है बेंचो दिनों ने, सबकी गांड मान ली है एक लाइन से, सबकी एचपी लो हो रखी है। रुक भाई, कहाँ गया कोकोमी, कहाँ गई? अरे मैं भूल ही गया, बाजू में ही तो है पिलर, मेरे दिमाग से निकल गया कि पिलर तो बाजू में है। स्टैचू ऑफ ज़मन बाजू में, मैं फालतू वो निकाल रहा हूँ। और मेरे को कटसीन में फ्रूट दिखे थे, कहाँ पे थे ये फ्रूट? फ्रूट तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, आसपास नहीं दिख रहा है, एक भी फ्रूट नहीं दिख रहा है। हाँ कटसीन में फ्रूट थे, कटसीन अब यहाँ पे फ्रूट नहीं है एक भी। व्हाट द हेक? नीचे हैं दो, ये वाले फ्रूट तो नहीं थे आई थिंक, कटसीन वाले, ये ऊपर कहीं थे फ्रूट। ऐसा कैसे हो गया, कटसीन में फ्रूट थे और इसमें फ्रूट नहीं है? मैं वो ले रहा हूँ, हीलर ले रहा हूँ, बहन गान मार लेंगे ये अगर वापस से ये कुत्ते आए तो। कहाँ चली गई? तेरी तो जरूरत है नहीं तो तू अंदर जा, अभी तू यहाँ आके बाहर निकल। भूल ही जाता हूँ कि डिप्लॉय करना होता है। A chest hidden in cart. So many raw materials. अब नहीं आएंगे ये डॉग्स, स्टिल वे पे सेफ्टी के लिए तो रखूंगा ना भाई, कतर चला गांड मार के चलेगा वापस से, सेफ्टी के लिए रखना पड़ेगा किसी ना किसी को तो, जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाए। बाकी वो कहाँ गई, कैंडिस कहाँ गई? कैंडिस को बाहर निकालेंगे अपने टीम में। कैंडिस का पता है, थोड़ा सा मेरे को यही लगा है कि कैंडिस का नॉर्मल अटैक का पता है स्पीड बहुत स्लो है। ये देख, फोर्थ अटैक कितना स्लो जाता है। काश ये फोर्थ अटैक की स्पीड थोड़ी तेज होती, ये इसको पकड़ के फेंकने की। आई विश, ये बहुत स्लो है, यही चीज बस इसकी थोड़ी बेकार है मेरे को लगी है कैंडिस की। Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The Academia has long exiled mad scholars to Aru Village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru Village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. फोर्थ अटैक का कितना परसेंटेज है? देख के तो लग रहा है ज़्यादा होगा। हाँ शायद परसेंटेज ज़्यादा है, बट आई थिंक उतना ज़्यादा भी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा भी नहीं है। देखते हैं अभी कटसीन होने के बाद। Aru Village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. Okay, so after reaching that stage, people get mad, but उनके अंदर अर्मन सोल की पावर आ जाती है। So that's why उसने कहा कि उसके मैड स्कॉलर्स के हाथ से कुछ पावर आई है, एंड उसकी वजह से वो रूट्स वगैरह कुछ बने, और उसकी वजह से बिल्डिंग्स मतलब जो कोलैप्स होने वाली थी कोलैप्स हुई नहीं। तो आई थिंक अर्मन सोल ने यहाँ पे हेल्प की है। After that, the people of Aru Village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting Aru Village?
Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru Village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? That mad scholars' power likely came from Lesser Lord Kushnali. Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. We saved Sumeru City together in not so distant past. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. But You easier betcha. said than done. Especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Hazen wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candice. All right. But first, let's confirm the facts with Candice. ओके तो बोल रहा था ना कि उसके फोर्थ नॉर्मल स्किल का क्या है अटैक का देखते हैं स्केलिंग सो पहला वाला हिट 77 है सेकंड वाला 78% है थर्ड वाला 45 प्लस 55% है आई एम नॉट श्योर व्हाट डज दिस मीन्स फोर्थ वाला 121% है तो इट्स जस्ट डबल ऑफ लाइक डबल ऑलमोस्ट डबल है एंड चार्ज अटैक एक्चुअली 158% है and plunge attack 204% है high and low plunge 164 to 224% and charge attack cost 25 है as a stamina wait what एक सेकंड रुको मेरे को एक चीज़ देखनी है आई थिंक मेरे को लगता है कैंडिस का चार्ज अटैक की कॉस्ट लेस है
देन हुताओ की चार्ज अटैक की कॉस्ट से नहीं 25 ही है इसका भी, बट समहाउ किसी ने शोकेस किया था हुताओ के साथ उसका सनफायर टीम का कैंडिस के साथ, उसमें एक्चुअली हुताओ कम स्टेमिना ले रही थी एंड ज़्यादा चार्ज अटैक मार पा रही थी फॉर सम रीज़न, दैट्स वियर्ड। Every journey has its थर्ड final पे day. 2 हिट करती है Don't होगी rush. ना, तो उसमें 2% होंगे, हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि 2 हिट हैं ये, ऐसे ही लगता है। देखो 1 2 3, अच्छा ये 2 हैं, अच्छा 2 हैं ये, 1 2 3, ओके 3 हैं, 1 2 3 4, उछाल के फिर पकड़ के फिर ऐसा थ्रो करती है मुंह पे। इसकी ये वाली अच्छी लगती है, सेकंड वाली देख ऐसा ऐसा सील्ड सा मारती है आगे की साइड, वो मुंह में धक्का एनिमीज को। मेरे को एक्चुअली ट्राई करना था कि मेरे को देखना था कि लाइक अगर मेरे को टेस्ट करना है लाइक अगर मैं इसकी कैंडिस की अल्ट खोलूं तो क्या मतलब जब यालान अपने स्किल इस्तेमाल नॉर्मली बो से मारेगी तो क्या उसकी बो पे हाइड्रो एलिमेंट्स का इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, वो मुझे देखना है। अभी मैं भूल गया था एक्चुअली, वो टेस्ट करना था मुझे। Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. वो थोड़ी ना इन्फ्यूज होगा, मिले वेपन्स इन्फ्यूज होते हैं, कैटलिस्ट एंड वो इन्फ्यूज नहीं होते हैं। लेट्स चेक ना, एक बार चेक करते हैं इसके बाद। मेरे को याद दिलाना। मेरे पास वैसे अल्ट नहीं है अभी, तो अल्ट आने के बाद करेंगे rarely टेस्ट। returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace, and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Lucid grandpa was probably Nahida. She must have soothed the other mad scholar as well. From the looks I know face, he probably connected the dots as well. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino?
इस गेम में कितना सैड स्टोरीज हैं, डालना पड़ता है ना, रुलाना तो पड़ेगा ना। देख इंडियन मूवीज में जब तक क्या कहते हैं इंडियन फैमिली को रुलाएगा नहीं, इंडियंस को, तो तब तक वो क्या कहते हैं स्टोरी जो रहेगी, मूवी जो रहेगी वो हिट नहीं होगी ना। पैसे कैसे कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे? वैसे ही गेम के साथ है, वो जब तक रुलाएंगे नहीं अपने व्यूअर्स को, 2-3 बार सैड स्टोरी सुना के सैड नहीं करेंगे, तब तक पैसे कैसे कमाएंगे? वो करना पड़ता है, बिजनेस है, बिजनेस, सब बिजनेस के लिए करना पड़ता है। No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. सबसे सैड स्टोरी स्टिल अक्नोमिया का सन चिल्ड्रन थे लमाओ। मेरे को तो आई मीन समझ में तो आई स्टोरी, लेकिन उतना खास नहीं लगी है। सैड स्टोरी अगर मैं बात करूँ तो इसकी थी, क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो ये इनाजुमा वाली थी। Oh, it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow. Thank you so much. Your grandpa will be found safe and sound. All right. Let's ask the local residents some questions first. वो बच्चों को जिंदा जला देते थे, ऐसा कहाँ बोला बे उन्होंने कि जिंदा जला देते थे? एक्ट 3 कंप्लीट हुआ, अब एक्ट 4 चालू होगा हमारा। अभी एक्ट 3 कंप्लीट हुआ हमारा अभी तक। Excuse me. Did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. वेट, 3.2 के सेकंड हाफ के बैनर का नाम क्या था? अल्बेडो था ना? अल्बेडो के साथ कौन था और कौन आने वाला था अल्बेडो के साथ 3.1 के सेकंड हाफ में? When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? मैं भूल गया अल्बेडो के साथ कौन था अगले बैनर पे? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever... Gotcha! Thank you! नीलू आ रही है। देखो क्या लगता है शशि में 50-50 जीतेगा? क्या लगता है शशि 50-50 जीतेगा मैं? नीला स्कूप करना कितना डिफिकल्ट होगा? हाँ डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि बहुत है मेरे पास हाइड्रो, तो हाइड्रो नहीं चाहिए मुझे और। बट नीलू क्यूट है, मैं ये बोलूँगा, नीलू बहुत क्यूट है देखने में। आई मीन सिंप करने के हिसाब से ले सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। लेट्स सी तेरी ब्लेसिंग मिली है कि नहीं मिली है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है।
लेट्स गो। वेंटी निकल गया, वेंटी निकल गया है शशि। लेट्स गो भाई, तेरी ब्लेसिंग सच में मिल गई बे शशि। सुन लिया ऊपर वाले ने, मेरे को 50-50 जिता दी पहली बार। पहली बार जिंदगी में मुझे 50-50 जीता हूं मैं, पहली बार जिंदगी में। एंड कुकी भी दे दी। कुकी भी नहीं है, पहली कॉपी कुकी की आ रही है, पहली कॉपी कुकी की आई है। अर्ली भी है ना? नहीं अर्ली नहीं है, सेम पिटी पे गई है, पिटी पे है। 70 अप है आई थिंक ये। लेट्स सी, देख लेते ना हिस्ट्री पे। आओ देखें, हिस्ट्री पे देखते हैं। सो हमने कितने 10 पुल अभी किए हैं, ठीक है 10 पुल किए हैं। एक सेकंड रुको रुको रुको, यहाँ पे आई थिंक आज का काउंट नहीं हुआ है। लायंस रोर लास्ट दिखा रहा है, जबकि लायंस रोर लास्ट नहीं होना चाहिए था आई थिंक। मेरे को देखने दो परमानेंट बेसिस में कौन दिखा रहा है लास्ट। नहीं, आज की अपडेटेड नहीं हुई है बेसिस। आई थिंक मैंने आज कितनी की हैं, 30 पुल्स किए हैं आई थिंक, 30 पुल्स किए हैं। दस एक दिखा रहा है, नहीं तो लायंस रोड कहाँ मिला है मुझे? लायंस रोड मेरा कहाँ मिला मेरे को 4 स्टार में? आज लायंस रोड मिला ही नहीं है, कल मिला था लायंस रोड तो। आज 2 तारीख, आज ये कैसे हो सकता है? आई थिंक इनका अपडेट आज हुआ होगा, बट आई थिंक लायंस रोड कब मिली थी? आज तो मुझे वो मिला है ना, आई ऑफ परसेप्शन मिला है, और एक सायु मिली थी, और अभी ये मिली है, क्या कहते हैं, कुकी मिली है, और वेंटी मिला है। सो 30 हुआ है। हाँ एक है, लेकिन वो अपडेट लेट हुआ होगा प्रॉब्ली इस पे। ये लेट अपडेट हुआ है आई थिंक। लायंस रॉर कल मिली है मुझे, एक सेकंड रुको मुझे देखने दो। कल या परसों मिली है लायंस रॉर। आई नीड टू चेक माई बिस काउंटर राइट नाउ क्विकली। वियर्ड, या फिर ये लेट अभी भी अपडेट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। ऐसा कैसे हो गया? तो सायु मिली थी मुझे 39/2022 को, एंड 30 के बाद मैंने आई थिंक कितने पुल थे ये, कितनी की पीढ़ी थी पहले मेरी? 48 की पीढ़ी थी उस टाइम पे, एंड आज 30 पुल्स किए हैं, 30 या 40 पुल्स किए हैं मैंने तो। हाँ ये देखो, नहीं बे लायंस रॉड दिया है क्या? ऐसा कैसे हो गया? सायु है, आई ऑफ परसेप्शन है, एंड सायु लास्ट थी 39, 44 को था। ओके सो लास्ट टाइम हमारी 40 थी है सायु पे। हाँ 70 अप पे ही दिया है मुझे वापस से। 39 2022 159 को मिला था मुझे लास्ट। हाँ ये सायु वाला है। तो 4 पेजेस हैं यहाँ पे, 4 पेजेस हैं, एंड 4 और 1 5, नहीं 4 पेजेस है, 4 पंचे 20 होता है, 20 एंड 30 हो जाएगा, विच मीन 70 पे मिला है। 70, हाँ 70 समथिंग पे मिला है, 68 या 70 पे मिला है मुझे आई थिंक। ये सही है, पहली बार 50-50 जीता मैं अपनी ज़िंदगी में, पता है ससी? वही 20 पे जीता। आई मीन मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फिर बाद में सोचा यार अभी 20 है, 20 अगर हाथ में मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता राइडन को C2 करने के लिए विशेष हो पाएंगी मेरी। और डेंड्रो आर्कॉन भी अच्छा लग रहा है, तो डेंड्रो आर्कॉन के लिए भी जाना ही है मुझे, तो टाइम भी है मेरे पास, तो आराम से कलेक्ट किया जा सकती है विशेष, इसलिए मैंने कर ली इस पर पुल। हाँ एलगी भी है मेरे पास ऑलरेडी बट एलगी मैं उसे छीनना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली, यलान से छीनना नहीं चाहता हूँ, क्या करूँ? यलान पे लगी है वो एलगी अभी, सी यलान पे लगी है वो एलगी फॉर द एंड वेपन। हाँ वही बोले ना 50 ये वेपन भी था इसलिए मैंने पुल कर लिया, लेकिन क्वेश्चनेबल है, मैं एलान से छीनना नहीं चाहता एक्चुअली ये वेपन। ये एलान मेरे पास उसका वो फ्री टू प्ले वाला भी है वैसे, ये वाला फेडिंग ट्वेलाइट वाला जो मैं दे सकता हूँ इसको, तो वो सोचना पड़ेगा। और ये भी है मेरे पास, वेरी डेसेंट हंड भी है मेरे पास,
ब्रेडेसेंट हंट भी पड़ा है यहाँ पे क्रिट रेट के साथ। बैटल पास का वेपन है। R2 रिफाइन ऐसा ही कर सकता हूँ मैं इसको। वरना रहने देना। हाँ देखते हैं बिल्ड करने के बाद। ब्रेडेसेंट हंट भी पड़ा है मेरे पास एक्चुअली इसका, तो देखना पड़ेगा मुझे। तेरे पास वीवी के 2 वेपन है ना? है। वीवी के 2 वेपन कहाँ है? ये भी ये वीवी का वेपन थोड़ी ना है, ये तो मतलब रेंडमली लगा सकते हैं किसी को भी। क्रिट रेट जिसको चाहिए है आई थिंक वही करता है ना। क्या करता है ये ब्रेडेसेंट हंट? Upon hitting normal and charge attack, have 50% chance of cyclone, which will continuously attract surrounding enemies. 40% of attack as a damage, and upon tap 0.5 second for 4 second. ये है अभी ब्रेडेसेंट हंट पड़ा है, ये भी पड़ा है, फेडिंग ट्विलाइट भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। आई मीन ब्रेडेसेंट हंट पड़ा है। हाँ ब्रेडेसेंट हंट के 2 पड़े हैं मेरे पास यहाँ पे, बट इनका ये मेरे को समझ में नहीं आता क्योंकि बेंटी से मैं नॉर्मल और चार्ज अटैक मारने वाला नहीं हूँ। येलान से ज़रूर मारूंगा मैं ये नॉर्मल एंड चार्ज अटैक, ये है। लेकिन येलान को फिर एनर्जी रिचार्ज चाहिए, तो एनर्जी रिचार्ज के लिए ये बेटर रहेगा फेडिंग ट्विलाइट। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्या दूँ मेरे को समझ में नहीं आएगा। मैं पहले गान्यू पे यूज़ करता था ये वर्डेसेंट वो। लेट्स सी, अभी तो वेंटी तो बिल्ड होने सरा। वेंटी के लिए आई थिंक आर्टिफैक्ट भी नहीं होंगे मेरे पास। फार्म वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा मुझे। इसका वेपन स्विच कर देते हैं हम। बेचारे को ये क्यों थमाए, ये ले लो तुम, ब्रेडेसेंट हंट ले लो तुम। इज्जत से रहो थोड़ा सा, सस्ते वाले काम मत किया करो वेंटी। Holding skyward sonnet creates an up current that will last for 20 seconds. इसका फ्री टू प्ले वेपन तो स्ट्रिंगलेस है। स्ट्रिंगलेस है क्या? मेरे पास स्ट्रिंगलेस भी पड़ा है। स्ट्रिंगलेस भी पड़ा है वेपन में, तो देखना पड़ेगा लेकिन कौन सा है। स्ट्रिंगलेस भी पड़ा है मेरे पास। वो भी एक नहीं, दो पड़े हैं मेरे पास। एक इस फिशल के पास है, एक इसके पास है। मेरे पास जितने मतलब स्वॉर्ड नहीं है ना, उससे ज़्यादा मेरे पास बोज हैं, कसम से बता रहा हूँ। जितनी मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है ना, उससे ज़्यादा मेरे पास बोज हो रखी हैं ना। मेरे पास पोलार उतने ज़्यादा हैं जितने मतलब बोज हैं मेरे पास। R3 रस्ट पड़ी है, एक यहाँ पे भी पड़ी है रस्ट एक्स्ट्रा। इसकी भी 2 पड़ी हैं, मून्स वाली की। ये वाली वो भी पड़ी हैं। स्ट्रिंगलेस बेटर रहेगा क्या इसके लिए? तो बेरेडेसेंट हंट से बेटर है क्या ये स्ट्रिंगलेस फिर वेंटी के लिए? लेट मी सी इसका बेस्ट वेपन क्या है वेंटी का। मेरे को लगा नहीं था 50-50 जीतूंगा मैं एक्चुअली। EM बिल्ड ही बोला है लोगों ने। एलगी फॉर द एंड के बाद स्ट्रिंगलेस है, एंड उसके बाद विंड ब्लूम ऑड है, पता नहीं है, आई डोंट नो ये कौन सा वेपन है। एली हंटर है, फिर उसके बाद फेवोनियस वॉरबो है, एंड रेवन्स बो है। वो भी 3 स्टार वाली रेवन बो को बोल रहा है बेटर एले हंटर से, यानी स्काईवर्ड हाफ से भी बेटर है रेवन बो 4 स्टार वाली। ओके सो स्ट्रिंगलेस बेटर रहेगी। हाँ ये बात भी है, क्रिट का क्या करूंगा ही क्या। ओके आई विल बिल्ड माई वेंटी, मे बी आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, बिकॉज मैं कैंडिस 70 तक करनी थी, 70 तक हो गई है, एंड सी इज एनफ आई गेस। उसको बेचारे को वेपन पता है किसका छीन कर दिया हूँ मैंने? जांगलिंग का दिया है। जांगलिंग को ब्लैक टेसल पकड़ा के रखा है मैंने। मेरे को बुरा लग रहा है जांगलिंग के लिए, पता है अभी जांगलिंग के लिए बुरा फील हो रहा है कि उसको ब्लैक टेसल पकड़ रखी है उसने हाथ में।
ऑलराइट, थोड़ा सा स्पाइरल अभी थोड़ा सा इजी होगा मेरे लिए आई गेस। स्पाइरल थोड़ा सा तो इजी पड़ेगा अभी। आई थिंक अब थोड़ा सा एनिमीज जो दूर दूर रहते हैं उनसे थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी, बट वेंटी मेरे को नहीं लगता है अभी इतनी जल्दी बिल्ड हो पाएगा, टाइम लगेगा वेंटी को बिल्ड होने में, तो वो भी है एक। ज़ांगलिंग का वेस्टर्न स्लॉट ड्रैगन्स बेन है ना? नहीं है, ड्रैगन बेन्स नहीं है, डेथ मैच है वेस्टर्न स्लॉट, डेथ मैच है उसका ज़ांगलिंग का। अभी देख लेते हैं ना ज़ांगलिंग का। ऑफ फील्ड डीपीएस का चाहिए, देखना है हमको बिल्ड उसका ज़ांगलिंग का। रुको, ऑफ फील्ड डीपीएस, यप। सबसे पहला स्टाफ ऑफ होमा है, फिर उसका इनगल्फिंग लाइटनिंग है, फिर कैच है, फिर प्रिमोडियल जेड बिंग डिस्पियर है, फिर स्काईवर्ड स्पाइन है, कैलामिटी क्वेलर है, डेथ मैच है, उसके बाद वोर्टेक्स बैंक्वेसर है, बेब ब्रेकर फिन है, फिर ड्रैगन्स बेन है, एंड फिर कैटन क्रॉस स्पीयर है, फिर लिथिक स्पीयर है, फिर फेबोनियस लेंस एंड प्रोटोटाइप स्टार ग्लिटर है सबसे लास्ट। फ्री टू प्ले वेपन, अबे तो ये फ्री टू प्ले नहीं है ना, ड्रैगन्स बेन फ्री टू प्ले कैसे होगा? ड्रैगन्स बेन फ्री टू प्ले नहीं है, किटाना क्रॉस स्पीयर फ्री टू प्ले होगा बिकॉज इट्स क्राफ्टेबल वेपन। आई डोंट थिंक सो ड्रैगन बेन काउंट होगा फ्री टू प्ले में, मेरे को नहीं लगता काउंट होना चाहिए। Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. Hey, you're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. Oh, that's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. ड्रैगन्स बेन फ्री टू प्ले में काउंट होगा क्योंकि इवेंचुअली मिल ही जाएगा फ्री में, कलेक्ट की है प्रीमोस तो। वेल, that argument is actually good. I won't deny that though. But I don't think so people count करते हैं ड्रैगन्स बेन को फ्री टू प्ले में। फ्री टू प्ले वेपन्स आर दोज विच आर क्राफ्टेबल, आई वुड से। ऐसे तो इवेंचुअली तो कोई भी वेपन मिल जाएगा फ्री टू प्ले में जो बैनर पे आता है, ऑब्वियसली। इवन सेक्रीफिशियल सॉर्ड फ्री टू प्ले में काउंट होगी, लेकिन मिलती नहीं है ना इजिली, बात तो यही है। बट आई थिंक लोग काउंट नहीं करते हैं उसको। Okay. Thank you, sir. Huh? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. एक्ट 4 स्टार्ट हो गया। द किंग दशरथ एंड 3 मैगीज स्टार्ट हो चुका है। Hello Abhishek Bhairba, welcome to the stream. See if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? कैंडिस को बिल्ड भी कर लिया क्या? हाँ मैंने मतलब उंगा बुंगा बिल्ड कर लिया, मतलब लाइक काम चलाओ बिल्ड है, ऐसा नहीं है बहुत ओपी बिल्ड है मेरा, काम चलाओ बिल्ड है अभी करंटली। The village has been getting more deranged scholars than ever. मैं तो मजे कर रहा हूँ कैंडिस लेके, मेरे को तो मजे आ रहे हैं कैंडिस के साथ खेलने में, मजा आता है उसकी अटैक स्टाइल और लाइक उसकी सील्ड से अटैक जो है मस्त लगता है मुझे, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ अभी ऐसे ही
स्पायरल अबिस में यूज़ नहीं करूँगा भले ही कैंडिस को, बाकी ओवरवर्ल्ड में मज़ा आ रहा है उसके साथ, कैंडिस के साथ। एटलीस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज, यू नो, स्टैंडर्ड टीम से कुछ डिफरेंट है। Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. मेरे पास तो मोरा ही ख़त्म हो गए, 557 ही रह गए। किसको अपग्रेड कर रहे थे तुम जो मोरा ख़त्म कर दिए? स्पायरल के रिसेट हुआ क्या? अब कब का हो चुका है ससी वो रिसेट? तो साइनो तो पुल किया क्या आपने? साइनो पुल नहीं किया मैंने, अभी अभी जस्ट बेंटी निकाला है। आई वॉज इन कन्फ्यूज़न कि लाइक क्या करूँ, सेव करूँ या राइडन को C2 करने के लिए, या फिर निकाल लूँ मैं। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि निकाल लेते हैं, क्योंकि लाइक बेंटी बेटर रहेगा एंड देर इज़ नो गारंटी कि मैं राइडन C2 निकाल पाऊँ, बिकॉज मेरे को मोस्ट ऑफ द केस में पिटी के पास ही जाना पड़ता है, हार्ड पिटी तक जाना ही पड़ता है। सो इसलिए मैंने बेंटी निकाल लिया अभी, और निकल भी गया है मेरा। तो 50-50 था जो कि मेरा तो निकल गया है, तो अच्छी बात है मेरे लिए। थोड़ी सी अब स्पायरल इसमें प्रॉब्लम कम जाएगी मुझे। इस बार क्या बफ है? अब इसमें सेम बफ है, चेंज नहीं है। आई डोंट थिंक सो चेंज है कुछ भी। Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are गान्यू finally को बिल्ड going to करना take था a ना, turn for the इसलिए better? सारे यूज़ कर लिया। अबे तो तुम इतनी जल्दी मोरा ख़त्म हो गया तुम्हारा? मेरा तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट लाइक मेरा अभी भी ऑलमोस्ट लाइक 15 मिलियन समथिंग कुछ मोरा बचा होगा। आई थिंक सो। उस दिन मैंने कुछ 10 या 12 मिलियन किया था गान्यू को क्राउन करने के लिए। मेरा अभी भी मोरा बचे हैं बहुत सारे। तुम्हारा ख़त्म हो गया इतनी जल्दी मोरा? और जबकि मैंने ले लाइन भी फार्म नहीं की इस बार। तो इस बार ले लाइन वाला जो इवेंट आया था उसमें भी फार्म नहीं की मैंने, ले लाइन से एक भी बार नहीं फार्म की। Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? स्पायरल अवेस में मैं खेलता ही नहीं, बहुत बोरिंग है वो। बोरिंग नहीं कहेंगे, हार्ड कहेंगे हम। बोरिंग नहीं है, इट्स हार्ड एक्चुअली व्हेन यू डोंट हैव कैरेक्टर्स एंड लाइक स्पायरल अवेस नीड्स लाइक specific character to clear, and either character has to be too OP to clear the spiral abyss, or either it has to match the specific requirement of the spiral abyss to clear the spiral abyss. So I won't say it's boring, but it's kinda like क्या कहेंगे, टेंस कर देता थोड़ा सिचुएशन को। लाइक माइंड फकअप हो जाता है जब तुम क्लियर करने जाते हो, एक स्टार से रह जाते हो ना, एक स्टार से रह जाते हो प्रीमोस के लिए, तो माइंड फकअप हो जाता है। फिर उसको करने के चक्कर में बार बार करते रहो तो और मतलब माइंड फकअप होता रहता है। तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं उस हिसाब से। मेरे पास तो 8 ही मिलियन, 8 मेरे पास तो 8 मिलियन है। मुझे नहीं पता तुमने किस पे लगाया है ऐसा से, तुमने कुछ बिल्ड किया होगा तो उस पे लगा दिया होगा। My patience is running thin. You heard what I asked. Yeah, bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. मैंने लास्ट काजुआ बिल्ड किया था। ऐसा कैसे तेरे पास ऐसे है नहीं मोरा? Madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall.
They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. आर्टिफैक्ट्स में लग जाते हैं बहुत आर्टिफैक्ट्स में मैंने लोगों का टैलेंट भी अप किए थे। हो सकता है तुमने क्राउन आउन किया होगा तो लग गए होंगे। मैंने तो पता नहीं, लास्ट तो गान्यू क्राउन की थी, उसके पहले क्राउन आई थिंक किसको किया था मैंने, शायद राइडन को किया था क्राउन, याद नहीं मुझे लास्ट क्राउन किसको किया था गान्यू के पहले। एंड अगला किसको करूँगा आई हैव नो आइडिया। आई थिंक वाइंटी को कर दूंगा मे बी। Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Where is this radical person you talked about? गान्यू के साथ बेनेट और नोएल भी लेवल अप किया हूँ, दोनों ही लेवल 80 पर हैं, लेकिन गान्यू 90 है। हाँ तो बेनेट और नोएल चल जाता है 80 पे। बेनेट को लाइक 90 कर सकते हो जस्ट टू क्राउन हिज लाइक अल्ट बेनेट की, बट 80 पे भी चल जाएगा क्या कहते हैं। बाकी डीपीएस को 90 होना ज़रूरी है। आई वुड से डीपीएस को 80 नहीं रखना चाहिए कभी, 90 अगर जा सकते हो तो जाना चाहिए तुमको। कितने क्राउन है आपके पास अभी देखना पड़ेंगे, मुझे याद नहीं है। आई थिंक लास्ट टाइम जब चेक किया था 18 या 18 के आसपास थे समथिंग, मेरे को याद नहीं कितने हैं, देखना पड़ेगा अभी। So he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candice won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. इतने क्राउन कहाँ से मिले? इवेंट कर करके, ट्रीज से मिले हैं, इवेंट से मिले हैं। There are many ways to get crowns, so मिल जाते हैं। और मैंने लाइक बेयरली किसी को क्राउन किया है, 8 और 9 तक टैलेंट तो लेके गया हूँ, 10 पे मुश्किल से किसी को लेके गया हूँ। सो क्योंकि मोरा बहुत ज़्यादा लगता है और लाइक सोचा भी नहीं कभी क्राउन करने का, तो मेरे पास पड़े रहते हैं क्राउन, और काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ तो इसलिए इकट्ठा हो गए उतने सारे क्राउन। जो गेम जब रिलीज़ हुआ था उस टाइम से जो खेल रहा है, उसके क्राउन देखोगे तो मुझसे डबल होंगे साइज में। He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? Oh, I can take you there. Just follow me. मेरे पास 6 ही हैं अभी। तूने सारे क्राउन कर दिए क्या? भाई गेम स्टार्ट हुआ था तब से गेम खेल रहा हूँ। हाँ तो तुमने क्राउन इस्तेमाल किए होंगे ना अभिषेक? मैंने क्राउन नहीं इस्तेमाल किए हैं अभी तक। आई एम जस्ट कीपिंग माई क्राउन्स राइट नाउ। देखना पड़ेगा कितने क्राउन्स हैं। लेट मी सी। आई थिंक यहीं दिखेगा ना क्राउन्स। हाँ 12 पड़े हैं अभी मेरे पास, 12 पड़े हैं यहाँ पे। एंड लास्ट टाइम मैंने किसको क्राउन किया था? आई थिंक गान्यू के टैलेंट क्राउन होंगे, नॉर्मल एंड अल्ट। कोकोमी का नहीं है, जोंगली का स्किल है क्राउंड, उसके अलावा राइडन का स्किल क्राउंड है। शिंगशो का नहीं है आई थिंक क्राउंड मेरे हिसाब से। हाँ नहीं है क्राउंड। आई कैन क्राउन दो राइट नाउ। उसके अलावा जांगलिंग का क्राउन नहीं है।
विडो का नहीं है, जाओ का क्राउन नहीं है, इसका भी क्राउन नहीं है, हुताओ क्राउन नहीं है, बेनेट कार्ल्ट क्राउन है। आई थिंक यहीं लगाया है मैंने, बाकी पे किसी पे नहीं खर्च किया है क्राउन। If I can provide everyone with a life such as this, लेकिन अया का भी लास्ट बैनर आया था ना, उसका निकाल कर मैं गेम बंद कर दिया, फिर अभी जाओ आया तब से वापस डाउनलोड किया था। हो सकता है बीच में इवेंट मिस किया होगा, उसकी वजह से तुम्हारे पास क्राउन नहीं होंगे। दैट्स वाई तुम्हारे पास क्राउन थोड़े कम है, पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग रेगुलरली, सो मेरे पास पड़े हैं। मैं रेयरली किसी को क्राउन करता हूँ। और sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs. So नहीं, बट तेरे कैरेक्टर बहुत सारे क्राउन होंगे ना अभिषेक, इसी वजह से तेरे पास क्राउन कम भी हैं। तूने मेरे कैरेक्टर मेरे से फिर भी डबल ही होंगे अगर तू, मतलब उनके जो क्राउन कैरेक्टर के क्राउन हैं और जो क्राउन तुम्हारे पास बैग में पड़े हैं, उन दोनों को मिला के काउंट करेगा तो मेरे से डबल निकलेंगे तेरे क्राउन्स। मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्राउन हर इवेंट में ऑलमोस्ट क्राउन मिलते रहते हैं आजकल तो। Well, this is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. No. Incense? Please don't say it's the same, but are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? मेरी हुताओ डबल क्राउन है, गान्यू डबल क्राउन है, काजुआ डबल एंड राइडन क्राउन है, जोंगली क्राउन है, बेनेट क्राउन है एंड मोना क्राउन है। हुताओ डबल क्राउन है तेरी। तो 2 2 4 2 6 और 1 7 8 9 10 और 10 और तेरे पास कितने बचे थे क्राउन? 6। तो 16 क्राउन थे तेरे पास टोटल, मतलब ससी। हाँ तो हो गया ना, हम दोनों का बराबर ही हो गया क्राउन। मेरे कितने कैरेक्टर क्राउन है? गान्यू डबल क्राउन है, बेनेट क्राउन है, और ये क्या कहते हैं राइडन सोगन क्राउन है, उसके अलावा जोंगली का ई क्राउन है, गान्यू अकेले जिस पे डबल क्राउन है, बाकी सब पे सिंगल क्राउन है। हाँ तो 15-16 के आसपास ही हुआ ना मेरा भी तो काउंट भी तो। ऑलमोस्ट 8 मंथ के बाद डाउनलोड किया ये गेम, जब जाओ का गेम प्ले देखा मैं, बट ना जाओ मिला ना काजुआ मिली, यालान बट इत्तो मिल गया। वेट, जाओ मिला ना काजुआ, वेट दोनों ही नहीं मिला तुमको? जाओ और काजुआ दोनों ही नहीं मिला? ना यालान ना बट इत्तो मिल गया। ऐसा कैसे हो गया अभिषेक? और तुम बोल रहे हो तुम गेम स्टार्टिंग से खेल रहे हो, विच मीन्स लाइक 1.0 से खेल रहे हो जब गेम रिलीज हुआ था ग्लोबली सबके लिए। दैट मीन्स इट शुड बी लाइक 3 years, ऑलमोस्ट 3 years ago, मे बी 2.5 years ago प्रॉब्ली। तो तुम तब से खेल रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास तुमने क्राउन नहीं किया किसी को, और क्राउन भी कौन में ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे पास? मेरे से ज्यादा होने चाहिए तुम्हारे क्राउन्स। कैलकुलेशन सही बैठने नहीं रही है। There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. पता नहीं यार। तो तुमने फिर अभिषेक तुम सही बता नहीं रहे हो, तुमने गेम कब चालू किया ढंग से खेलना? तुम मे भी लेट चालू किए हो गेम खेलना। मैं बता रहा हूँ, मैं तो खुद क्या कहते हैं योइमिया या आयाका का बैनर सबसे पहले जब आया था ना प्रीवियस ईयर्स में, जब मतलब इनाजुमा जस्ट लॉन्च ही हुआ था, उसके जस्ट पहले मैंने खेलना चालू किया था, और तब से खेल रहा हूँ। तब भी मेरे मतलब 12-13 क्राउन है। लेकिन तुम्हारी क्या कहते हैं, मेरे को आईडी का डेट नहीं पता चलता है अभिषेक, उससे देख के वो तुमको ही पता चलेगा कि कब से खेल रहे हो, क्योंकि तुमको वो समरी में आता है, लाइक वो नहीं रहता है लेटर कहलाता है। अभी जो होयोवर्स निकाला है लेटर करके, जिसमें हिस्ट्री रहती है हमारी, उसमें लिखा रहता है कि कब से खेलना चालू किया हो तुमने गेम को, उसमें देखो पता चल जाएगा तुमको। So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense.
भाई 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है मुझे। तो तुमने एग्जैक्टली खेलना कब चालू किया था अभिषेक? उसके अकॉर्डिंग तो, बट तुमने खेलना कब चालू किया था एग्जैक्टली अभिषेक? Wait, surely Tainari didn't lecture you too. फिर से देख लो एम्बर ने कब पार्टी ज्वाइन किया था, तब से स्टार्ट है गेम। हाँ हो सकता है एम्बर जब से पार्टी चालू की होगी उसके जस्ट एक दिन पहले मान लो कि गेम चालू किया तुमने। जाओ आया था तब से। जाओ पहली बार आया था या जाओ सेकंड बार रीरन में आया था? क्या बोलना चाहते हो तुम अभिषेक? हाँ तुम ये देख लो ना अपनी, तुम्हारी एम्बर ने कब पार्टी ज्वाइन की थी, उसमें लिखा रहता है एम्बर की डिटेल्स में जाओगे ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो उसमें दिखाता है कि एम्बर कब पार्टी ज्वाइन किया है, उससे पता चल जाएगा कि कब खेलना चालू किया हो। जाओ फर्स्ट टाइम आया था। जाओ कब आया था ससी पहली बार? लीवे रिलीज हुआ था उस टाइम आया था क्या? ये लीवे के बहुत बाद में आया है, बिकॉज मैंने तो लेट चालू किया, मुझे आइडिया भी नहीं है। एम्बर क्योंकि सबसे पहला कैरेक्टर मिलती है। No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a scholar. हाँ एम्बर देखो, मैं अपनी एम्बर देखता हूँ। देखो एम्बर कब से ज्वाइन किया पार्टी, लेट मी चेक। प्रोफाइल में जाते हैं। सो प्रोफाइल में आई थिंक कहाँ दिखाएगा, कहाँ दिखाता है? यहीं दिखाता है ना कहीं पे एम्बर का? तो कैसे देखते हैं? आई थिंक डिटेल्स में रहता है कहीं। तो कहाँ रहता है एग्जैक्टली? कहाँ रहता है ऐसा सी? पता नहीं, जब मैं चालू किया था तब योइमी का बैनर था। हाँ तो हमने दोनों ने एक ही टाइम पे चालू किया ऐसा से खेलना। योइमिया और अयाका का साथ में बैनर आया, मतलब अल्टरनेट में बैनर आया था। योइमिया पहले थी एंड फिर अयाका, अयाका नहीं, अयाका पहला बैनर था, फिर योइमिया का बैनर था। तो मैंने जस्ट इनाजुमा के जस्ट पहले ही चालू किया था, इनाजुमा रिलीज होने के। ल्यूए के मिड में आया था आई थिंक, यहीं कहीं रहता है, मैं भूल गया। उसमें दिखाता है कि पार्टी ज्वाइन कब की है तुम्हारे कैरेक्टर ने। तुम्हारी बेचारे देख, एलॉय का वॉइस एक्टर ही नहीं है यहाँ पे। नो वंडर की एलॉय का कॉन्स्टलेशन नहीं आ रहा है हमको अभी तक। एलॉय किसी को मिल नहीं रही है बिकॉज एलॉय का वॉइस एक्टर ही नहीं है यहाँ पे। व्हाट अ सेम। एलॉय कुड बी ना, बहुत एलॉय कुड बी अ लाइक वेरी गुड कैरेक्टर फॉर द टीम, बट जस्ट बिकॉज उसके कॉन्स्टलेशन रिलीज नहीं हुए एंड होयोवर्स डिसाइडेड नॉट टू वर्क ऑन एलॉय, दैट्स वाई एलॉय है हमारे पास, लेकिन एलॉय का कॉन्स्टलेशन नहीं है। एलॉय कितनी सही थी। इनके तो ये बर्थडे हैं बे, बर्थडे थोड़ी ना इनके वो होंगे पार्टी ज्वाइन का टाइम। आई थिंक इट शुड बी समथिंग एल्स, आई बिलीव सो। कहीं और दिखेगा ये, यहाँ दिखाएगा क्या ड्रेस में? विंड ग्लाइडर में भी नहीं दिखाता है। देखना पड़ेगा कहाँ मिलता है। आई हैव नो आइडिया। व्हाट्स दैट? स्टार सुम। मैंने अयाका और याइमी को दोनों निकाल लिया था, 50-50 लूज भी नहीं किया था मैं। सही है अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोनों ही अच्छे कैरेक्टर हैं एक्चुअली। What are you looking for, Sino? Here it is.
Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the तो हम भी size देख के and गए थे. shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. पाइमोन के आइकन पे जा, फिर कैरेक्टर आर्काइव में वहाँ एम्बर सिलेक्ट कर, उधर दिखाएगा आपके. The चलो देखता scent हूँ मैं. is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. एजुकेशन के चक्कर में इस गेम को बंद कर दिया था. मैं अब फ्री हो गया, फिर से शुरू कर दिया. ओके. We'd have to ask Makes whoever sense. lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, देखते हैं अभी रुको से since the करके smell देखता हूँ मैं. supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So someone's taking advantage of their मैं जब गेम स्टार्ट किया था तो मैं नोटिस पीरियड में पे चल रहा था, तो ज़्यादा काम नहीं था. मुझे तो पता भी नहीं था कि तू गेम खेलता भी है सच्ची उस टाइम. ये वाला. Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru village and inform Candice and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. तो तू बोल रहा था पाइमोन में जाना है, कैरेक्टर आर्काइव में जाना है. ओके ओके, यहाँ पे एम्बर सिलेक्ट करूँगा. तो ज्वाइंड माय पार्टी ऑन 8/18/2021. ऑल राइट. है डिफरेंस तो है थोड़ा सा इसमें पिक्चर में. काया 8/18/2021 को ही है, सेम ही है. लीजा अगले दिन ज्वाइन की है, बारबरा उसके अगले दिन ज्वाइन की है. I wonder when I'll be as tall as my big. एंड रेजर 25/2022 को ज्वाइन किया है. जांगलिंग कब की है? 28/8/2021 को की है. विच मीन्स ऑलमोस्ट 8 दिन बाद जांगलिंग ने मेरे को ज्वाइन कर लिया था पार्टी में. विच मीन्स आई वॉज एबल टू क्लियर अबिस फ्लोर 4 एट आफ्टर 8 दिन बाद. शिंगशो ने मुझे सेम डे ज्वाइन किया था आई थिंक. हाँ, शिंगशो ने मुझे काया और एम्बर के साथ ज्वाइन किया था, याद है मुझे. उसके क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं. कहाँ गई? नोएल के बैनर पे निकली थी ये. नोएल का भी सेम डे है. जेंसन का आइडिया मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था. मैं तो पबजी लाइट खेलता था, और जब से तुम्हारी लत लगी गई है तुमको. अच्छा ये बताओ, तुम गर्लफ्रेंड के लिए खेलते हो जेंसन इम्पैक्ट, या लाइक मतलब खुद से पसंद है इसलिए खेलते हो जेंसन इम्पैक्ट? क्या रीज़न था, तुमने क्यों स्टार्ट किया था उस टाइम जेंसन इम्पैक्ट, और क्यों कंटिन्यू किया जेंसन इम्पैक्ट? एम्बर, काया, निंगवांग, रेजर, बारबरा ये सब 5 स्टार होने वाले थे, मुझे याद है इनका लीक. निंगवांग हो सकती रही 5 स्टार प्रोबेबली, लेकिन मुझे नहीं लगता काया और रेजर को बनाते. ऑलरेडी ये बारबरा तो फिर भी रेयर नहीं है. काया, एम्बर ये और लीजा ये तो बहुत रेयर कैरेक्टर हैं जो निकालना बहुत मुश्किल होता है. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice too. We're back, Candice. We've got a lot to tell you. Ah, welcome back.
Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? निंगवांग का डैमेज 5 स्टार लायक नहीं है। नहीं बट चाहते तो बना सकते रहे। तूने देखा है कट सीन में क्या कर सकती है वो ससी? मेरे को जेंसिन मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। पता नहीं उसको खेलना था तो मुझे जबरदस्ती डाउनलोड करवा दी, खेलती थी। आज भी आदत है। आज भी उसकी वजह से आदत है या लाइक तुम्हारी खुद की आदत लग गई है खेलने की? निंगवांग का वो चाहते तो बना सकते रहे। तुमने देखा नहीं जेट चेंबर का टाइम क्या कर सकती है निंगवांग खुद से? अकेले उतना सब कुछ कर सकती है वो। चाहते तो बना सकते रहे 5 स्टार निंगवांग को, लेकिन बनाया नहीं इन्होंने, 4 स्टार पर ही रखा बेचारी। जोंगली का कुत्ता बना दिया उसको, निंगवांग को इन्होंने। The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. मेरी भी आदत हो गई है अब, लेकिन उस पर ब्लेम करना पसंद है। ब्लेम करना पसंद है बोल रहा है। तो अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? Labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. भाई रेजर को भी 5 स्टार बनाना था लेकिन 4 स्टार बना दिया। रेजर को बना दिया ना 5 स्टार। क्या बात कर रहे हो अभिषेक? ये है तो साइन हो तुम्हारे रेजर 2.0 5 स्टार बना दिया ना रेजर को 5 स्टार। रेजर तो 5 स्टार हो गया अभी, लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं है। अभी मेरी गर्लफ्रेंड वो ही है, उसका लक बहुत खतरनाक है। अच्छा तुमसे ज्यादा खतरनाक है उसका लक? Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known in these parts. I feel like I've heard these names somewhere These guys below. have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the Academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. भाई मेरे फ्रेंड का रेजर कुत्ता बना देता है एनिमी को। आर्टिफैक्ट लगा, अच्छे आर्टिफैक्ट लगे होंगे फिजिकल के, इसलिए कुत्ता बना देता होगा। बाकी रेजर तो 5 स्टार हो गया है अभी। Tia, you're amazing! You really... No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every more I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me.
Fine. Good. Then we've got a plan. The traveler मेरी and गर्लफ्रेंड Paimon डीपीएस will go to बारबरा है Caravan विद Rebot with C6 me. है, We'll try our मेरी भी best to C6 figure है, out where the बट mad बहुत scholars ज़्यादा have been पावरफुल taken. नहीं है, सिर्फ Sino, 10k you'll तक have to stay मारती in है the विद village and क्रिट. continue investigating on your own. डीपीएस बारबरा, ओ माय गॉड. भाई सही है भाई. कमीनी ने आर्टिफैक्ट शानदार लगा रखे हैं, फिजिकल डैमेज वाले. वही बोल रहा ना, आर्टिफैक्ट अच्छे मिल गए तो तुम्हारी मारेगा कैरेक्टर. उसका मे बी उसके पास C6 होगा उसका रेजर, क्योंकि 4 स्टार है वैसे भी रेजर, तो C6 रेजर होगा तो कुत्ता ही बनाएगा रेजर. तो कोई 4 स्टार अच्छा बन सकता है, ऐसा नहीं है कोई भी 4 स्टार अच्छा नहीं बन सकता. बनने के लिए बन सकते हैं, बट बहुत मेहनत लगती है उसके लिए. वहीं शिंगशो और बेनेट हैं जिनको कुछ मेहनत नहीं लगती है अच्छा बनने के लिए. Alright, sounds like a plan. उसने डिया ने आई थिंक उसको देख लिया है फॉलो करते हुए. आई थिंक डिया ने उसको देख लिया है फॉलो करते हुए. Sino, please don't take offense. I'm sure Dia just wants to help everyone solve their problem as quickly as possible. That's why she can be so straightforward at times. नहीं, रेजर C4 है उसका, मेरा C1 है. हैं? ऐसा कैसे? रेजर इतना फेवरेट है तुम दोनों का, तो रेजर C6 क्यों नहीं किए तुम लोगों ने? I don't mind. Ah, I see. Well, from the way you were staring out into the distance, I thought you might have been mulling over Dia's words. No, I'm used to being treated that way. It's natural to fear strength. I take no objection to it. अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी बारबरा C6 कैसे कर ली बे? मतलब बारबरा, काया और ये बारबरा तो फिर भी ठीक है, करा जा सकता है, बैनर पे आती है. हाँ मैं भूल ही गया था, बारबरा तो बैनर पे आती है और शॉप पे भी अवेलेबल रहती है. काया लीजा और ये नहीं आते हैं, एम्बर नहीं आते हैं बैनर पे कभी. इनको निकालना मुश्किल रहता है, सबसे कम रेट इन्हीं के हैं आने के. बट तुमने डीपीएस बारबरा बनाया है. Well, here we are again. तुम लोगों ने. सही है. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. 4 स्टार में मेरे डीपीएस निंगवांग ही है. बैनेट और शिंगशो तो अभी जो बैनर आया था उसमें मिले हैं मुझे. क्या हैं? ऐसा कैसे हो गया बे? बैनेट और शिंगशो तुमको नहीं मिला है? ऐसा कैसे हो गया कि तुमको मतलब बारबरा मिल गई, तुमको निंगवांग मिल गई, तुमको शिंगशो और बैनेट नहीं मिला जो सबसे मतलब पहले मिलते हैं, मिलना चाहिए. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. 4 स्टार है वे वो तो बैनर के. मिलने चाहिए एटलीस्ट. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all.
This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. कितने एक्ट हैं टोटल इसमें इस स्टोरी में? किसी को पता है कि कितने एक्ट्स हैं इस टोटल मतलब सेकंड पार्ट की स्टोरी में? मुझे नहीं लगता मैं आज खत्म कर पाऊंगा इसको. Just our luck. None of them are here today. यान पे को C6 करूंगा मैं. अच्छा यान पे बिल्ड कर रहे हो तुम? सही है. इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है एक्चुअली कैरेक्टर बिल्ड करने में, तो डिसाइड करना पड़ता है कि किसको बिल्ड करे किसको नहीं करे. बस यही बात रहती है. तो इसलिए मैंने ज़्यादा 4 स्टार बिल्ड नहीं किए हैं. You mean you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? मैं अनफे और नोएल को बिल्ड करूंगा, फिर गोरो, फिर रेजर. तुम 5 स्टार पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक 5 स्टार बिल्ड्स पे. लाइक बिल्ड करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. मतलब तुम्हारा लक बहुत इंसेन होगा तभी तुम मतलब इतनी जल्दी बिल्ड कर रहे हो सबको. We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? 5 स्टार में अभी जीन और कचिंग बची हैं, उनको बाद में करूँगा. क्यों? जीन को तो पहले करना चाहिए ना. दोनों ही C1 है. हाँ तो C1 जीन क्या कहते हैं, बेकार है. जीन C0 पे भी अच्छी है, उनको तो पहले बिल्ड करना चाहिए ना. Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. Go to the place where Zaki mentioned. Okay. फाइट आइट होगी मेरे को लगता है. यहाँ तो कुछ सीन होने वाला है. हीलिंग के लिए बारबरा है ना मेरे पास, तो इलेक्ट्रो कलेक्टर में यामी को है, तो अभी सोचा नहीं बट करूँगा जरूर. अबे तो तुम सिंक्शो पे कर सकते हो ना, सिंक्शो पे स्विच कर सकते हो, पता है अपने टीम में सिंक्शो भी अच्छा है यामिको के साथ. भाई ग्रास कितनी टॉल है भाई. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. Wait. It's an ambush. Ambush? Wait. I thought he's a friend.
Why is he like attacking us here right now? What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't ya? Who do you think you are? You really thought we'd अभी fall for तक your little कोई एक्स और business deal हैमर यूजर nonsense? कैरेक्टर आया नहीं जिसके साथ अपन खेल सकें. आएगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता ये लोग आएंगे. मेरे को लगता है ये लोग they are going to stick to the like claymore, polearm and these kinds of weapon only. Catalyst. इन पे ही ये लोग फोकस करने वाले हैं. I don't think so they are ever going to be like एक्स और हैमर कैरेक्टर. ओनली एक्स और हैमर कैरेक्टर ये क्या कहते हैं एनिमीज हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो हमारे कैरेक्टर कभी वैसे होंगे. So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. फ्यूचर में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. आएगा तो लोग तो पुल करेंगे, जरूर पुल करेंगे उनको. फुल फीलिंग लेंगे थॉर वाली, थॉर की तरह फीलिंग लेंगे वो लोग. चाइल्ड कब आएगा? आई थिंक 3.4 या 3.3 में ये लोग बोल रहे हैं. आई एम नॉट श्योर. 3.3 या 3.4 में आएगा चाइल्ड. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger. You're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. AR और वर्ल्ड लेवल कितना है आपका? मेरा AR 58 है और वर्ल्ड लेवल 8 है. ऑब्वियसली 55 के ऊपर 80 रहता है. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! ये पिटेंगे मेरे हाथ से. ये पिटने वाले हैं सारे. Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Solidify! Rest and rebuild! Born of ice and frost. Flee! We shall prevail! Ha! 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 पता है अभी तक किसी भी कैरेक्टर के लिए बेस्ट आर्टिफैक्ट नहीं मिले. तुम्हारे तो तुम लोग के तुमने DPS बारबरा और क्या कहते हैं रेजर बिल्ड कर लिया और तुम बोल रहे हो परफेक्ट बेस्ट आर्टिफैक्ट नहीं मिले. मतलब तुमको क्या 50+ CV के आर्टिफैक्ट चाहिए क्या? 40+ CV के आर्टिफैक्ट्स मिले तो होंगे तुम लोगों को. So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it?
It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candice was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Main is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. नहीं रेजर बिल्ड नहीं है मेरा, बस बारबरा है, वो 80 लेवल पर है, बट क्रिट रेट हद से ज़्यादा कम है। हद से ज़्यादा कम क्या होता है? 30-20% रखे हो क्या क्रिट रेट? That's what you thought, right? I mean DPS बारबरा कैसे हुई? अगर 30-20% क्रिट रेट हुआ तो हद से ज़्यादा कम तो फिर वो उतना ही होगा। You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. With one swift kick, it knocks the Zaki That unconsciousness. should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, शायद 15k के आसपास है मेरा क्रिट रेट। क्या 15k? वेट व्हाट? 15k क्रिट रेट कैसे हो सकता है? अच्छा 15% के आसपास क्रिट रेट है, बट क्रिट डैमेज 100 से ज़्यादा है। तो डीपीएस बारबरा कैसे हो गई भाई? डीपीएस बारबरा तो हुई नहीं। डीपीएस बारबरा तो तब होगी ना जब 50 के ऊपर क्रिट रेट रहेगा तो। That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how the Scarlet King is a superior deity. हाँ बट डैमेज वैसा ही है, वैसा ही है। डैमेज वैसा ही है मतलब? अबे तो तुम्हारे ओनली 15% चांस है कि वो क्रिट करेगी, क्या कहते हैं बारबरा। इट्स लाइक 5 आउट ऑफ लाइक 1 चांस कि वो बारबरा क्रिट कर जाए। जब क्रिट नहीं करेगी तो वो नॉर्मली कितना डैमेज करेगी, करती है। What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? नॉर्मली 2k 3k, और जब अल्ट क्रिट करती है तब कितना जाता है? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for you. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? What makes you so sure? Because even without an employer, you're still helping us out. Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. 10k तक आता है बस। Okay, 10k is not bad actually. 10k is not bad
for especially like Barbara जो कि heal करती है. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the Academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dear. ये लोग इन तीनों को कैरी करके वहां ले जाने वाले हैं क्या? आरू विलेज लेके जाएंगे क्या? क्या कर रहे हैं उसमें? फिर उसके बाद कुर्सी में बैठा के पीछे हाथ बांध के रखेंगे, इंटरोगेशन करेंगे इनका. ऐसा कुछ करेंगे क्या ये लोग? Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. मेरे को लगा ही था ये लोग ये करेंगे. वो बोला ना, पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये लोग करेंगे. डिया के मसल्स भाई, इनको तीनों को, दो बंदों को अकेले कैरी कर जाएगा और एक बंदे को पाइमॉन और हमारे ट्रैवलर कैरी करके लाएगा. नोएल C4 है, मेरी C6 करना है यार. उसके लिए डिफेंस आर्टिफैक्ट बहुत जॉड है मेरे पास. अच्छा, तुमको मिल गए होंगे उस टाइम, क्या कहते हैं, इत्तो के जब फार्मिंग कर रहे होंगे. आई थिंक इत्तो के टाइम जब फार्म किए होगे उसी टाइम मिल गए होंगे तुमको डिफेंस आर्टिफैक्ट. क्यों अभिषेक? All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candice, do you need any help? Candice will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. I hope कैंडिस से पहले क्या कहते हैं, ये ना पेल दें, क्या कहते हैं, साइनो आके ना पेल के चले जाए उनको. मुझे तो डाउट हो रहा है साइनो आके पेल के जाएगा इनको. मौका भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे उनसे क्वेश्चन करने का. वेट, there is a dendroculus on the top. बिना C6 बेकार है नोएल. नहीं, बिना C6 ठीक है. C6 क्यों करना है तुमको नोएल को? बिना C6 नोएल है तो ठीक ठाक है. मैं तो यूज करता था पहले, जब पहले जॉन्गली नहीं था नोएल ही से काम चलाता था. बिकॉज बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक सील्ड रखना अपनी टीम में. पहले तो मैं बिना सील्ड के घूमता था. आरू विलेज गार्ड यहाँ पे नाम. भाई ये कैसा गार्ड है बे? बुढ़ाऊ गार्ड कर रहा है आरू विलेज को, वो भी स्वॉर्ड रख के. भाई तुम चल नहीं सकते, पीठ में दर्द है तुम्हारे, तुम गार्ड करोगे बे आरू विलेज को? जाओ बे, रिटायर हो लो. लेट मी चेंज द टाइम टू 6 o'clock मॉर्निंग. Talk to Dia. Hey, Dia. Right on time. Did we learn anything from criminals? We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candice pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. कौन से कैरेक्टर आपका C1 से ज़्यादा है? कौन से कैरेक्टर आपके C1 से ज़्यादा हैं? 5 स्टार में कोई भी नहीं है. 4 स्टार में है बहुत सारे जो C1 से एटलीस्ट ज़्यादा हैं. I will show you. मेरे को कट सीन से बाहर निकलना पड़ेगा लेकिन. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here, and
and he's pretty early too. Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candice some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. देखते हैं कैसे बांध के रखे हैं इनको. उल्टा तो नहीं लटका दिए इन्होंने बांध के. आई होप उल्टा ना लटकाए हो. मेरे को नहीं लगता गेम इतना ज्यादा करेगा. अच्छा मैं भूल ही गया, मेरे को कैरेक्टर दिखाने थे, दिमाग से निकल गया मेरे. Candice, where? Whoa, you look furious. Do I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. लगता पेल ही है इनको. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. वो क्या डर रहे हैं ये लोग. Looks like Sino taught her well. She mastered it really quickly. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. 2013 में जेनसिन का एनिमे आएगा. कल लीक आई थी ऑफिशियल. सही है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसके. मेरे को लगता है एनिमे के पहले टीसीजी भी आने वाला है. नेक्स्ट अपडेट में टीसीजी आएगा, जेनसिन टीसीजी मोड आ जाएगा. सो आई थिंक दैट वुड बी सम काइंड ऑफ पीवीपी मोड इन द गेम. सो इट वुड बी फन टू सी हाउ दैट गोज. आई होप इट्स नॉट बैनर रिलेटेड और समथिंग. ऐसा ना हो कि लाइक आधे लोग डिसएडवांटेज में है जिनके पास पैसे नहीं है. तो The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. And war serves no one. गेम में माइक और स्पीकर का ऑप्शन होना चाहिए तो यार मजा ही आ जाता. आई मीन टोटली वो एमएमओ नहीं है ना ये गेम. लाइक पार्शियल एमएमओ कह सकते हो. लाइक 4 बंदे एक वर्ल्ड में रह सकते हैं. एमएमओ गेम्स थोड़े से और बड़े हो जाते हैं. लाइक लार्ज स्केल में हो जाएंगे जिसमें लाइक 15-20 लोग एक वर्ल्ड में आ सकें, कम से कम आने चाहिए, तब वो एमएमओ कहलाएगा. तो थोड़ा सा एमएमओ मैं कहूँगा पार्शियल एमएमओ है. कैसे कहूँ मैं, एमएमओ भी कहा नहीं जा सकता. मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी डाउट होता है. लाइक टावर ऑफ फैंटेसी जैसे एमएमओ है प्योरली, वैसे ये नहीं है गेम. सो दैट्स वाई इसमें माइक का ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने. The people of Aru village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I don't think so. अगर गेम में माइक वगैरह होता तो लोग आई थिंक ये क्या कहते हैं चैट फीचर यूज़ नहीं करते और लाइक ये स्टिकर्स वगैरह यूज़ नहीं करते मोस्टली. मेरे को लगता है एटलीस्ट people can use these stickers to display their emotion and their like words. So at least that's the good part here. टावर ऑफ फैंटेसी में माइक और स्पीकर है. हाँ है ना, क्यों नहीं है अभिषेक, सब कुछ है. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. Some
Mystery Man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that Mystery Man's doing. He told us to spread word फिर तो about the डाउनलोड Scarlet करना King's पड़ेगा resurrection and talk to us into बट helping वो him. In return, देखना he said he'll कॉम्प्लिकेटेड है help थोड़ा सा facilitate जेंसन the से गेम थोड़ा सा resurrection कॉम्प्लिकेटेड है process. उसमें मैकेनिक्स ही डिफरेंट है सब कुछ और लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं करने की लर्न करने की तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गेम है मैं कहूँगा तो देख सुन के डाउनलोड करना बाकी इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा लेकिन एपीके तुमको मिल जाएगी कहीं ना कहीं उससे डाउनलोड करोगे तो चल जाएगा तुम्हारा गेम हाँ ओपन वर्ल्ड है वो भी लेकिन बहुत टायरिंग है लाइक जेंसन में जैसे एक टाइम के बाद थोड़ा कंटेंट खत्म हो जाता है ना उसमें कंटेंट खत्म ही नहीं होता आते जाता है मतलब तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा खेलने का कुछ और इतना कंटेंट रहेगा उसमें करने के लिए I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. Do you have any idea who is the mysterious person might You be? have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? Smooth. Okay, speak. If my suspicions are उसने पेल correct, दिया तीनों को this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the academia again. In Sumeru City, Sataria also mentioned King Desert Resurrection is just a academia's misinformation campaign. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? मैं सोच रहा हूँ क्रायो और पायरो आर्कॉन का वेपन कौन सा होगा शायद क्लेमोर या सॉर्ड मे बी मेरे को लगता है ये लोग मोस्टली अब लाइक ऑल रेंजेस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओनली आई थिंक क्लेमोर ऐसा सेक्शन रह गया है जो किसी आर्कॉन के पास नहीं रहेगा लाइक अभी नहीडा आ रही है उसके पास ये है नहीडा के पास ये कैटलिस्ट है जोंगली और राइडन के पास ऑलरेडी स्पीयर है एंड हमारे क्या कहते हैं ये बेंटी के पास वो है क्या कहते हैं बो है तो क्लेमोर एक ऐसा रह गया जो बचा है तो मे बी मेरे को लगता है अगले वर्जन में क्लेमोर या बो यूज़र आना चाहिए आर्कॉन अगर आता है तो नेक्स्ट वर्जन में क्योंकि क्लेमोर ही रह गया है आई थिंक हाँ स्वॉर्ड भी आ सकता है स्वॉर्ड भी रह गया आई थिंक स्वॉर्ड नहीं यूज़ करता है कोई भी आर्कॉन आई थिंक स्वॉर्ड भी हो सकता है बट मेरे हिसाब से पता है अगर क्लेमोर यूज़र हुआ ना क्लेमोर अगर आर्कॉन हुआ तो देन इट्स गोइंग टू बी लाइक it will be less likely for people to pull for that Archon until unless that Archon is really good at C0
सो एक वो चीज़ भी हो जाएगी यहाँ पे, तो होयोवर्स को थोड़ा सा वहाँ पे नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता वो क्लेमोर पे कभी आर्कॉन बनाएंगे तो स्वॉर्ड पे बना सकते हैं, या तो बो पे बना सकते हैं, या स्पीयर पे बना सकते हैं। कैटलिस्ट आने वाला है, कैटलिस्ट का भी हो सकता है वापस से आर्कॉन सुमेरु के बाद, तो पॉसिबिलिटी ये है। 4 स्टार और ट्रैवलर को बूस्ट मिलना चाहिए डैमेज में। 4 स्टार तो नहीं, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट को बूस्ट मिल सकता है, ऐसे नहीं कि ट्रैवलर को बूस्ट मिले या फिर 4 स्टार को बूस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वो करेंगे, वो एलिमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candice, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. भाई कैंडिस की अलग अलग आंखों में देखने में पता अजीब सा लगता है। मोर जितना तुम इसकी कैंडिस की दोनों अलग अलग कलर की आंखों में देखोगे ना एक साथ, उतना ज्यादा हेल्यूसिनेशन होता है। सी बहुत हेल्यूसिनेटिंग है ये कैंडिस, लेकिन क्यूट है। अच्छा तुमको कॉन्स्टेलेशन दिखाने थे 4 स्टार के, तो ये C0 पे है, इसका मेरे को नहीं मिली इसकी एक और कॉपी। उसके अलावा सिंगशो C6 है, जांगलिंग C6 हो चुकी है, ये क्या कहते हैं सायू C6 है, एंड बिडो C4 है, उसके अलावा बैनेट C2 है, ये C6 हो चुका है सुक्रोश। उसके अलावा C3 है मेरी रोजारिया, एंड C5 है डियोना, इसको C6 करना है मुझे। उसके बाद चीची C1 है, ये C2 है साइजो, और इसके अलावा ये C4 है चोंगयुन। होमा C5 है, निंगवांग C4 है, काया C2 है, C5 है कुजो सारा, C1 है एम्बर, एंड ये C4 है मेरी युंजिन। उसके अलावा C0 गोरू है, C2 है डोरी, C2 है फिशल, एंड C2 हो चुकी है लीजा मेरी, एंड C1 है मेरी कोले फ्री में मिली है दोनों बार, एंड C1 है मेरी बारबरा। उसके अलावा C3 है यानफे, एंड C1 है जिनियान, एंड अभी मिली है कुकी से वो आज अभी मुझे वेंटी के साथ, तो वो C0 पे है। बाकी ये C1 है मेरा रेजर, यही है अभी मेरे पास पोस्टर में। वो आर्कॉन DPS ही होगा जो क्लेमोर यूज करेगा, ऑब्वियसली DPS होगा, बट यू नो द ओनली थिंग अबाउट क्लेमोर्स इज लाइक क्लेमोर को स्विंग करने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू यूजिंग अ बो और लाइक स्वॉर्ड और एनी लाइक स्पीयर्स। सो वही एक चीज़ हो जाती है, इसी वजह से क्लेमोर प्रेफर नहीं करते लोग यूज़ करना स्पाइरल अबिस में। तो लोग क्या अभी स्पाइरल अबिस के हिसाब से मोस्टली पिक करते हैं कैरेक्टर को, तो मुझे नहीं लगता है क्लेमोर कैरेक्टर उतने पॉपुलर होंगे अनटिल अनलेस फास्ट स्पीड ना देते क्लेमोर को, या फिर यूला जैसे बिल्कुल पावरफुल ना बना दें। Let's get some food in us and then we'll... ठर गई पाइमॉन। Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? काश आर्कॉन का मास्टर ही आकाश डिलुक का मास्टर ही आर्कॉन निकल जाए, जिसका स्वॉर्ड डिलुक यूज करता है, जो रेजर को भी मास्टर है। डिलुक का मास्टर? डिलुक का कौन मास्टर है? डिलुक का कोई मास्टर थोड़ी ना है।
नोएल दिखाना। अच्छा हाँ, नोएल भूल ही गया मैं दिखाना। Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. डिलुक का जो वेपन है वो डिलुक का मास्टर का ही है। डिलुक का मास्टर कौन है बे? डिलुक का वेपन मतलब तुम वुल्फ ग्रेव स्टोन की बात कर रहे हो क्या? डिलुक का प्राइमरी वेपन तो वही है, वुल्फ ग्रेव स्टोन। वो कौन सा मास्टर का है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि डिलुक का कोई मास्टर भी है। Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk. While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Really? Paimon doesn't believe you. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अल हाइतम ही वो बंदा है जो बेसिकली इसको पूरा वो कर रहा है, पूरा ऑपरेट कर रहा है। To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. मुझे नहीं पता वुल्फ ग्रेवस्टोन का मास्टर कौन है। I have no idea about that. मैं पहली बार सुना कि डिलुक का मास्टर भी है। Remember what Candice said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village. So you are saying we can find new info from someone we already spoken Glad you're to? following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. मुझे वेपन चाहिए था लेकिन जाओ का वेपन मिल गया, साथ में स्काईवर्ड स्पाइन भी मिल गया। कौन सा वेपन चाहिए था? अच्छा वुल्फ ग्रेव स्टोन चाहिए था और जाओ का वेपन मिल गया तुमको, स्काईवर्ड स्पाइन भी मिल गया। सही है। मेरे को तो अभी तक वुल्फ ग्रेव स्टोन नहीं मिला, जाओ का वेपन नहीं मिला है, ना स्काईवर्ड स्पाइन मिली है। चल रहा है बट लेकिन स्टिल मेरा जाओ का काम तो। Those eyes, those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly,
I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them... After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it. सोचो डिलुक का अल्टीमेट अटैक एक फिनिक्स बर्ड है, लेकिन वेपन वुल्फ ग्रेफ स्टोन और रेजर का अल्टीमेट एक वुल्फ है। हाँ तो मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? I mean, वुल्फ ग्रेफ स्टोन इज अ नेम, जस्ट अ वेपन नेम। मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा कहना क्या चाहते हो। तुम पूछ रहे थे उसका ना, नोएल का कॉन्स्टलेशन। नोएल C5 है मेरी, नोएल C5 पे है। आई हैव बीन यूजिंग नोएल सिंस C3। अब मेरे को तो सही लगी नोएल, बस थोड़ा सा ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है उसकी स्किल की, इसलिए थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा। बाकी तो ठीक है, नोएल बुरी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा, डिलुक का वेपन वुल्फ ग्रेव स्टोन है, लेकिन क्या कहते हैं वो उसका वुल्फ है, फिनिक्स है, लेकिन उसका वुल्फ ग्रेवस्टोन वेपन है और रेजर वुल्फ है। समझ नहीं पा रहा कहना क्या चाहते हो इसमें तुम, कॉन्टेक्स्ट क्या है? नहीं, वुल्फ ग्रेव स्टोन में कुछ अटैक के बाद वुल्फ का फेस बनता है। हाँ वो देखा हूँ मैंने, वो सिर के ऊपर बन के आता है वुल्फ का सिंबल, जैसे ही उसकी पैसिव एबिलिटी वो होती है, एक्टिवेट होती है, देखा हूँ मैं वो। बट मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा। Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? मतलब रेजर को ये वेपन मिलना चाहिए था, उसको अल्टीमेट वुल्फ के जैसा तो वेपन सूट करेगा। अब इस हिसाब से तो भाई वुल्फ ग्रेवस्टोन तो क्या कहते हैं साइनो पे भी चल जाएगा। साइनो का भी अटैक क्या कहते हैं वुल्फ का है, वुल्फ के क्लॉज आ जाते हैं। और वुल्फ के भी क्या वो क्या कहते हैं एनुबिस जो होता है, एनुबिस बेसिकली वुल्फ ही है। एनुबिस जो क्या कहते हैं इजिप्शियन गॉड है एनुबिस, वो बेसिकली वुल्फ ही है एक्चुअली में, और वही एक प्रकार से फॉर्म होता है इसके ऊपर, साइनो के ऊपर। तो साइनो लेकिन पोलार में यूजर है, तो ऐसा तो ये भी सेंस नहीं बनता है ऐसा तो। Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Why is that? Because it will only result in conflict. That's very similar to what Miss Candice says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. नहीं, अनुबिस डॉग वुल्फ नहीं है। अनुबिस डॉग है, वुल्फ नहीं है। नहीं तो अनुबिस तो पार्शियल वुल्फ और पार्शियल डॉग है। आई वुड से टोटली वुल्फ भी नहीं है, टोटली डॉग भी नहीं है। पार्शियल वुल्फ पार्शियल डॉग है, तो इसलिए स्टिल वो काउंट होगा वुल्फ में ही, आई वुड से। Traveler, do you believe our lives will get better? I can't promise anything, but I will do best I can. Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while.
बहुत लेट हो गया भाई। हाँ मैं सोने ही वाला हूँ, 3 बज गए हैं, सोऊंगा मैं। इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकता मैं। ये कट सीन के बाद मैं सोऊंगा ही। गुड नाइट अभिषेक। हैव अ गुड स्लीप फॉर यू एंड हैव अ गुड वीकेंड फॉर यू। My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Oh, Haytham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert हेलो folk. अर्स। I don't really fit in anywhere in Sumeru. बढ़िया हाल चाल है, तुम सुनाओ। बस अभी पता है सोया पड़ा था, नींद खुली, मैंने कहा फटाफट से अब टाइम मिला थोड़ा, अभी ऑफ हो गया है ना थोड़ी देर पहले, मतलब मैंने ऑफलाइन कहा गए हो तुम काम से? काम अभी फिनिश हुआ तुम्हारा? मैं अभी ऑफ होते हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट 2:30 बजे, 2:30 के थोड़ा लेट करना होता है ऑफ। तो तुम सो क्यों रहते? तुमको कभी भी कॉल आ जाता तो? कॉल तो कुछ नहीं आना, कंटेंट का कॉल नहीं आना। ना भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। अरे कॉल कुछ नहीं आता उसमें, कुछ नहीं आता ना, मैसेज ऐसे आते हैं पर वो कोई और देखता है, मेरा कुछ काम नहीं होता, बस ऑन करने का काम होता है। Okay. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different मैं तो from them कितनी is a बार सोया हूँ traitor? ऐसे तो, Yeah. किसी को इनको घंटा फर्क Some नहीं people पड़ता। can be so narrow-minded when नहीं it लेकिन comes to bloodline and रिस्क beliefs. बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा It देख सुन makes के कर no difference what सोने I का say काम। or अभी how I अरे behave. अभी तो घर पे हूँ, अभी I'll तो कोई always be दिक्कत नहीं है, suspected बस of having ऑफिस में ulterior पड़े क्योंकि हुए तेरे को हैं दिन बस। भर सोने का टाइम मिलता ही मिलता है, रात में तो रह सकता है, जग सकता है। Slowly, और जगने के I लिए just stopped talking तूने to अभी काम people. चालू ही किया है, I इसलिए थोड़ा pretended not to ट्रस्ट hear गेन or कर ले, see उसके बाद जैसे उनको anything. लगेगा All I कि want is to live my life in like peace. there would not be any issues, then वो तुम तब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। ऐसा स्टार्टर में बहुत दिक्कतें रहती हैं। And then it they happened. keep track on The you, you know? village keepers who had helped me disappeared with ऐसा no है explanation, मेरे and I इसमें ना didn't dare breathe a word about it to टीम होती anyone है, तो जिसके टीम until में मैं now. वो भाई जो टीम लीडर है वो मेरे जान पहचान के ही है। लेकिन मैनेजर तो नहीं होगा? मैनेजर है वो। You can tell them. वाह। I'm sure she'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Al-Haytham. I actually have a sharper sense of hearing than most. ये भी उठ Sometimes गए। I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. And when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. Could you make out where the sound comes from? There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. आज तो हमारे सोसाइटी में जगराता है यहाँ पे। हाँ तो तुमको सोने नहीं मिलेगा। हेलो प्रैगर, रात में नींद नहीं आ रही तुमको? हैं? नींद नहीं आ रही तुमको? सो जाओ बे प्रैगर, सो जाओ, इतनी जगते नहीं है, गलत बात है इतना जगना। आज इतनी देर तक स्ट्रीम कर रहे हो? नहीं मैं जा रहा हूँ सोने भाई, पागल है क्या? मैं बहुत लंबी स्टोरी क्वेस्ट है, मैं इतना लंबा थोड़ी ना खेल सकता हूँ। ये तो मैं कल बाद में कर लूँगा, इसके चक्कर में ना मैं सो ना पाएगा, रह जाएगा मेरा नींद। दोपहर में मेरे को प्रॉमिस किसी को किया हो तो वो खेलना है कुछ, तो वो करना है मुझे अभी दोपहर में। तो मैं तो अपना सुबह घूमने के लिए जा रहा हूँ,
अपना ये आराम से अभी तो सोमो में सुबह तक आराम से, फिर उसके बाद अपना जाएंगे अपना घूमने फिरने, फिर शाम को आके जगराते में। कहाँ घूमने फिरने जा रहा है? प्लान है बस क्या कहीं ऐसे। आसपास के लोकेशन का? फ्रेंड्स के साथ? हाँ, स्टारबक्स जा रहे हैं। और सैलरी आना चालू हो गई तुम्हारी? अरे अभी कहाँ हो, अभी तो आएगी। आ तो गई होगी ना, 1 तारीख हो गई ना? अरे अभी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है, अभी तो ट्रेनिंग है ना, अभी तो उसमें बस 2500 रुपये बना है मेरे ख्याल। ट्रेनिंग का मतलब ऐसे होता है 500 हर एक दिन का 500 है। वाह। और अभी तो स्टार्ट हुई है ट्रेनिंग। जब मैं मेरे ख्याल से जब 11-12 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब मेरी अपना उसके बाद नवंबर में आएगी मेरी सैलरी को। ओके। बट स्टिल बहुत टाइम है वो तो। मेरे को लगता है ट्रेनिंग के टाइम भी देते हैं पैसे ये लोग, ऐसा नहीं रहता है? देना चाहिए। वो तो अपना 500 है ना, सिर्फ 500 है जितने जितने दिन ऑन कर रहा हूँ उसका 500 मिल रहा है मेरे को। सीधा सीधा सैलरी के साथ आ जाएगा अकाउंट में। ओके। ये क्या है? अयाका। ये तो एलॉय है। योइमिया है। ये क्या है मीम में? Me who don't bring correct team learn optimal combo rotation or even familiar with enemies get fail to clear spiral abyss. It's my artifact fault. क्या कर रहे हो इतनी रात को जग के बाय द वे फ्रैगर? क्या कर रहे हो? When you feel guilty about not studying but you still don't study. How long have you been programming? 4 years. So you have a lot of knowledge in this field. ये भी अच्छा था. When you try to shut down and miss by 0.00 mm. Remember, September ends, Green Day. Um, your roles. Can't hear, can't talk, can't touch you, can't go to Japan. Maybe the real Jensen anniversary reward was the friend we made along the way. Enjoy it, they are best years of your life. Me, this is my best. They grow up so fast. अबे ये तो एक्चुअली सेम दिख रहा है फेसेस इनका. सही है. तो अभी क्या करने वाले हो रात में? सो वापस से सोने जा रहे हो? अभी सो के उठे तो वापस सो गए? बस थोड़ी देर तक आ ही जाएगी नींद, अभी मैं सो जाऊंगा वापस। भाई कितनी देर से सो रहा है तू? और मैं मेरे ख्याल से सो गया था अपना 1 बजे सो गया था। ओके. अरे वो मेन 1 ये बजे है ना दोपहर मेन। को सोया था? 1 बजे दोपहर या 1 बजे अभी सोया है? अरे अभी 1 बजे अभी। हाँ, मैं सोचा दोपहर से सो रहा है वेंचर वापस से सोने जा रहा है. ये क्या चल रहा है? दोपहर को कौन सो गया यार, मेरे को दोपहर को घंटा नींद नहीं आती। मेरे को तो बहुत आती है खाना खाने के बाद. मन करता सो जाऊं लेकिन सो नहीं सकता हूँ. लगता है भाई नहीं, क्या करेंगे सो के, बाद में देख लेंगे सोने का काम. मैं तो बल्कि ये होता है, मेरे तो होता है कि हाँ सुबह उठे आराम से, पूरी दोपहर तक शाम तक मस्ती की आराम से,
लॉगिन जैसे कि होता है कि लॉगिन के बाद कोई जब कोई काम नहीं होता मैं नीचे चला जाता हूँ बैडमिंटन खेलने। ओके जब काम होता है तो वो अपना बोल देता है कि काम है तो आज तो नीचे नहीं जाएगा, और मेरे को खुद बोल देते हैं कि आज तेरे को नहीं, आज नहीं जाना। कौन बोल देता है? जो आज सिखा मेरे को, जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हाँ ओके। अरे बातचीत है, कोई टेंशन नहीं। एक टेस्टिंग करने में हेल्प करोगे स्ट्रीम पे थोड़ी सी? मुझे कुछ टेस्ट करना क्या? है। मेरे को वो देखना है कि क्या वो स्ट्रीम लैब्स के थ्रू मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मेरे को वो देखना है स्ट्रीम लैब्स के थ्रू, लाइक कहाँ गया, लाइक रैंडम सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्लाउड बॉट गिव अवे वगैरह के लिए गिव अवेज यहाँ पे हैं। करंट गिव अवे हिस्ट्री गिव अवे सेटिंग। एंटर गिव अवे कस्टम बनते हैं। क्रिएट न्यू गिव अवे टू स्टार्ट। क्रिएट अ नेम ऑफ फॉर दिस गिव अवे। टाइमर परमिशन एवरीवन सब्सक्राइबर ओनली। कस्टम लीग ऑफ लेजेंड कैरेक्टर एंटरप्राइज ओके। एडवांस टिकट कॉस्ट क्या होती है? अमाउंट ऑफ क्लाउड वर्ड लॉयल्टी पॉइंट that is required in order to purchase a single ticket. Okay. वही होंगे स्ट्रीम पॉइंट्स होंगे, जो स्ट्रीम पॉइंट हाँ मिलते हैं वो लॉयल्टी पॉइंट्स जो एक्टिव किया था मैंने वही हम्म। है। ओके। हार्दिक का तो भाई 735 है, उसने अपने मेंबरशिप रिन्यू कराई है तो उसको 735 है। ऑल राइट, सो दिस शुड बी द लॉयल्टी पॉइंट आई गेस। तो ये सब काफी सबके हैं, ज्यादा ऑलमोस्ट ज्यादा ही पड़े हैं मेंबर्स के। और क्या, जो मतलब देख रहा है स्ट्रीम उनके हैं अच्छे खासे पॉइंट। सो लेट्स ट्राई। तेरा कितना था? तेरे पास है ना लॉयल्टी पॉइंट? देखने दे मुझे, मेरे को टेस्ट करना है क्योंकि अब मैं बैठा हूँ तो टेस्ट ही कर ही लेता हूँ। तू भी है यहाँ पे। कितना था तेरा? अर्स का 463 है, ठीक है तो तू कर सकता है। लेट मी डू गिव अवे, ऐड गिव अवे कस्टम। क्रिएट अ नेम फॉर दिस गिव अवे। एडवांस करते हैं पहले। टिकट कॉस्ट कर देते हैं 200। लॉयल्टी पॉइंट। लक सब्सक्राइबर का gives subscriber of extra tickets when entering for the first time। ना, सबको एक एक टिकट रखते हैं मैक्सिमम। मैं ऐड कर दूंगा, चिंता मत करते रहे उसमें वापस से। मस्ट बी फॉलोअर टू विन। ओके आई एम नॉट श्योर फॉलोअर है कि नहीं। मस्ट बी फॉलोअर यू है ना मेरे ख्याल से, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो ही। फील्ड नेम वेलकिन गिव अवे ओके। 5 मिनट्स देते हैं एंड वेलकिन मून गिव अवे। लेट्स ट्राई दिस। परमिशन एवरीवन एडवांस। परमिशन में वो कर दो ना, सब्सक्राइबर्स ओनली कर ऐड दो। ऐड 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 रुक जा। प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली ओके। स्टार्ट गिव अवे। वो कर क्या कहते हैं, चैट में जा एक्सक्लेमेशन। एक सेकंड रुक, मुझे देखने दे क्या है इसका। लेट मी सी इसकी कमांड सेट की है कि नहीं की है मैंने। लेट्स मी सी
अच्छा मैं बुक करना ही भूल गया। अच्छा रेफर लिखना है क्या? नहीं रेफल नहीं लिखना है, एक्सक्लेमेशन रेफल रेफल नहीं रखेंगे, एक्सक्लेमेशन लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन रेफल लिखते हैं, LOL लिखते हैं, या नहीं LOL भी नहीं लिखते हैं, समथिंग मोर सेंसफुल लाइक वेलकिन लिखते हैं यहाँ पे, वेलकिन ठीक है। सेव करते हैं एंड स्टार्ट गिव अवे करते हैं। जाओ तुम 5 मिनट का टाइम है, एक्सक्लेमेशन गिव वो लिखो, वहाँ पे आ गया होगा क्या लिखना है तुमको, एक्सक्लेमेशन वेलकिन लिखो, एक ही बार लिखना है, 2 बार मत लिखना। चैट में जाके जाओ करो, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैं देखता हूँ। स्पेलिंग सही लिखना। आ गई तेरी एंट्री आ गई है। तूने क्या 2 बार लिख दिया? नहीं नहीं यू हैव रिसीव 2 टिकट्स लिखा है। ओके 5 मिनट टाइमर है। पिक विनर नहीं कर सकते क्या? नहीं 5 मिनट ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा टाइमर। कैंसिल करते हैं, कंफर्म, गिव अवे कैंसल्ड। ओके आई नीड टू चेक मोर आई गेस गिव अवे सेटिंग का। लेट मी चेक, एंटर गिव अवे, स्टार्ट गिव अवे, क्लोज गिव अवे, रिपीट गिव अवे नहीं करना है, विनर, कैंसल गिव अवे। अमाउंट 3 डबल, ग्रुप हो रहे। एक सेकेंड, डबल डबल नहीं कटना चाहिए ना, डबल नहीं कटना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सेकंड को तुम्हारे लॉयल्टी पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, कट तो नहीं गए हैं वापस से तुम्हारे। लेट मी चेक कहाँ है। अर्स अर्स 460 तेरे कितने थे पहले? 463 थे ना पहले भी? ओके यू आर फाइन आई गेस। आई थॉट तुम्हारे पॉइंट कटेंगे यहाँ पे। पॉइंट कटने चाहिए थे वैसे, कटा नहीं, पता नहीं क्यों। यूवर सेटिंग, कैंसल, कस्टम, एडिट, एडवांस, मैक्सिमम tickets per user, maximum amount of ticket a user can purchase using cloudbot loyalty points 1। अच्छा सब्सक्राइबर बोनस टिकट्स मिली होंगी, ओके तो एक और एक्स्ट्रा मिली होगी तुमको टिकट्स। ओके एक ही रखना है मेरे को। एंड टाइम कम कर देते हैं 5 मिनट की ड्यूरेशन से 1 मिनट की ड्यूरेशन करते हैं, तुम लिख दोगे तब तक आई थिंक। चलो करो, जाओ करो, एक्सक्लेमेशन वेलकम लिखो, आया होगा। हाँ तुम्हारी एंट्री आ गई है 1 टिकट की। 40 सेकंड बाद विनर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। आई कैन गो एक्सक्लेमेशन वेलकिन एज वेल, तो मेरी भी एंट्री आ जाएगी आई गेस। मेरी एंट्री नहीं आई, व्हाट, हाउ, व्हाट द फक, मेरी एंट्री नहीं दी है इसने बेंचोद ने। तो आपके पॉइंट ही नहीं है भाई इतने। कैसे है, कैसे नहीं होगा भाई, मैं अपनी स्ट्रीम खुद की देखता रहता हूँ, होगा कि नहीं। पता नहीं। बिग विनर, अर्स यू इज योर विनर, अर्स हैज वॉन वेलकिन मून गिव अवे। ऑलराइट एंड तुम चैट करो, कुछ भी लिखो वहाँ पे। हेलो लिख दिया। लिखो यहाँ आती कि नहीं चैट, हाँ आई तुम्हारी चैट, हेलो कुछ भी लिखो आगे, और ऐसा लिखो कब कब दे रहे हो करके। क्या लिखूं और? लिखो ना आगे कुछ, कब दे रहे हो करके, ऐसा कुछ लिखो ना, कुछ भी लिखो ताकि मुझे दिखे यहाँ पे चैट।
लेट्स होप किसी और के चढ़ ना आए। हाँ तुम्हारा कब दे रहे हो भी आ गया यहाँ पे। ऑल राइट, इट्स वर्किंग एक्चुअली। ओके ओके, ये सेव ही रहता है। ओके ये भी बढ़िया है, ये भी सही है। लेट मी चेक योर लॉयल्टी पॉइंट नाउ। आई थिंक कैंसिल हुआ था इसी वजह से कटे नहीं होंगे। हाँ तुम्हारे कट गए। कितने थे तुम्हारे पॉइंट? 463 थे ना? 464 थे। 404 आवर हो चुके हैं नहीं 404। कितना हो गया तुम्हारे आवर? एक सेकंड को देखने दो। पॉइंट्स हैं ये तो। हाँ पॉइंट्स। एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ मैं? कितना हो गया? 464 हो गया। 6.73 आवर्स वॉच हैं। मेरा कहाँ है वेंचोद? मेरा नाम क्यों नहीं है यहाँ पे? हाउ कम? सब्सक्राइब्ड हूँ अपने आप में, मेरा क्यों नेम नहीं है? एमिली का 27 है, सूझा प्लेस 24 है, हर्सल ऐसे फ्रैगर नोब। तो मेरे क्यों नहीं है पॉइंट्स टेस्टिंग के लिए? शशि के 504 हैं। ऑलमोस्ट 50 आवर्स की वॉचिंग हो चुकी है उसकी। उसने देख देख के बस कर लिया है। मेरा सिर्फ 8 पॉइंट है। व्हाट? मेरी वॉचिंग काउंट नहीं हो रही है? ऐसा कैसे हो गया? 0.73 क्यों दिखा रहा है? ये कैसे हो गया? ये गलत बता रहा है। मे बी इंटरेक्शन ही किया होगा उसकी वजह से पॉइंट्स ऐड नहीं हुए हैं। ऑल राइट, हाँ आई थिंक उसी की वजह से ऐड नहीं हुआ है। इंटरवल्स इन मिनट। ऑल राइट, समझा कैसा वर्क है। आई थिंक कितने बंदे रहेंगे गिव अवे में उस दिन? 175 है, एस्ट्रॉक्स 199 पे हैं, केवी नहीं, गेम चेंजर आ सकता है, सिक गॉड आ सकता है, सौरभ आ सकता है, कूल बॉय आ सकता है, हार्दिक आ अरे सकता जिनका है। मतलब ये होंगे 200 से प्लस होंगे, सिर्फ वही अपना 200 हाँ का वही ना, 200 प्लस होंगे, वही आ सकते 100 हैं। रख सकता रहा मैं, लेकिन फिर वो भी है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब 100 उनके पॉइंट्स काउंट हुए होंगे प्रॉब्ली। 100 वाले भी कर सकता हूँ, 100 भी रख सकता हूँ पॉइंट्स में वैसे, ताकि बाकी लोगों को चांस मिले। 200 रखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं जो 100 हैं, तो प्रॉब्ली रिड्यूस कर देंगे पॉइंट्स को। ऑल राइट, गिव अवे का बन गया है, करेंगे अभी। कब से? मैं नेक्स्ट सैटरडे रखूँगा, मैं नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे रखूँगा, ताकि उस दिन फ्री रहें सब लोग। आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, सैटरडे संडे ही है। नहीं, आराम से करेंगे बेस। 2 वेल्किन मून गिव अवे होंगे तो 2 विनर्स निकलेंगे एक्चुअली। मेरा कितना चांस है मिलने का? आई मीन लगा लो जो 100 प्लस 100 जिनके पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से लगा लो कितने कितने परसेंट चांस है तुम्हारे निकलने के। 100 प्लस कितने लोगों के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लोगों के नाम हैं यहाँ पे। 13 नाम इंक्लूड करके मान लो उसमें से 12 लोग भी आते हैं, तो कितने परसेंट चांस होंगे निकाल लो, वो तो बॉट डिसाइड करेगा। वही है, इसमें तो पिक भी रैंड अपना वही होगा ना, रैंड जे। हाँ रैंडम होगा। हाँ। बट मैं तो यही बोलूँगा फिर जिनके पास है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनको नहीं लेना चाहिए गिव अवे में पार्ट, सिंस दे कैन अफोर्ड बाय देमसेल्फ। जिनके पास जिन नहीं कर सकते उनके लिए है ये बेस्ट। अरे मैं एक जीत लूंगा, क्या हो जाएगा? साले तेरे को दिया ना उसने, हार्दिक ने। अरे वो तो खत्म होने वाला है, वो तो खत्म होने वाला है। देख लेना तू, होगा सैटरडे संडे को तो देख लेना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे ज़्यादा आई थिंक टाइम हाँ शशि का ही है, 50.40 पॉइंट आवर्स हैं।
504 पॉइंट उसने सिर्फ स्ट्रीम देख देख के कलेक्ट कर लिए हैं। गेम चेंजर 23.95 पे है, सिक गॉड 21 पे है। तुम्हारे सिर्फ 6 आवर्स की है वॉचिंग टोटल। वही है ना दिक्कत, वही है ना, बीच में नहीं देख पाता ना, आपको पता ही सिर्फ है, तेरे ऑन नहीं कर पाता। 465 पॉइंट्स इसी वजह से कि तूने मेंबरशिप ली थी उस दिन। मेंबरशिप वालों को डायरेक्ट 300 पॉइंट्स मिलते हैं। फ्रैगर के कितना 5 घंटे की वॉचिंग है, इसने 5 घंटे भी कब देख लिए वे फ्रैगर ने, मेरे को डाउट होता है। फ्रैगर तो रहता ही नहीं है स्ट्रीम पे, 5 घंटे कहाँ से देख लिया इसने। आता है हाय बोलता है निकल लेता है, थोड़ी देर चैट करता है बाकी निकल लेता है। कब देख लिया 5 घंटे इसने। 21 अरे है ऐसा सिक होता है गॉड ना, की। कभी ऐसा होता है कि अगर बंदा अपना स्ट्रीम होता है ना ऑन करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके भी पॉइंट लग जाते हैं। ठीक है, कभी अब कभार मेरे ऐसा को होता है, क्या है, मैं मेरे भी को अपनी वॉचिंग आ रही है, मेरे को वॉच आवर्स मिल रहे हैं तो चलता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कभी कभार मैं भी ऐसे ही करता हूँ, किसी के अपना मान लो जैसे आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ तो कई बार ऑन रह जाती है, अपना ऑन ऑन करता हूँ पर वो चैट नहीं कर रहा होता आपसे बिल्कुल भी। ऑलराइट, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीक का देखते हैं अभी गिव अवे का। चलो चलते हैं सोने के लिए। थैंक्स चेक कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। चलो guys, that's it for today. Thank you guys for joining in. I will see you guys tomorrow. Maybe more Genshin activity or might be we play Minecraft अगर मेरा नेटवर्क सही से चलता है तो। तो thank you guys for joining in. I will see you guys tomorrow. Bye bye guys. Good night everyone. Have a great sleep and have a good night everyone. So good night everyone. जो भी बंदे अभी तक स्ट्रीम पे थे, thank you so much guys. Bye bye guys everyone.